Nucleus, Nucleus University of Medical and Health Sciences. It is From in Welcome. it is in from it is in which place? Ottawa, Canada. Canada. Oh, very nice, very nice, very nice. Yeah, I'm from Chicago. Yeah, Welcome, I Professor can. Dilip. Welcome, Professor Dilip. Good morning. As per Good morning, Indian timing. good morning, sir. Everybody, good morning to everybody. So, which part of Canada you are, Dr. Dilip? Toronto. Toronto. Okay. Yeah, I'm in Chicago. Oh, it is very close. We are just only 2.5 hours flight. Yes, agree. Yeah, Very been nice, to very Toronto nice. a few times for Niagara Falls visit and all that. Long time ago. Yes, sir. Yes, Oh, yes. Niagara Falls is beautiful from the USA side or Canada side. Canada side is Yeah, better. it's beautiful. It's beautiful. Yes, Yes. yes, yes. It's very thrilling experience to see that half of the river is in Canada and half of the river is in USA. Correct. So we are ready to start our second day of this international conference. And let me introduce myself. This is Professor S. Lal, Dean Faculty of Education and Methodology, Rector Jyoti Vidyapeeth Women's University, and a convener of this 2 days international conference that is going to be hosted by University Harvind Khurana Chair under the Faculty of Education and Methodology in collaboration with Northern Illinois University, Chicago, USA. And we know that the topic of our conference is NEP 2020, Catalysing Quality Academic Multidisciplinary Research and New National Research Foundation. And uh, before going to the technical session, I request technical team for our national song Bande Matram. Please. We have connected Professor K.K. Chaudhary, who is the organizing secretary of this conference. Welcome, sir. Professor Chaudhary, welcome. Prof. Chaudhary, good morning. Technical team. Good morning, Professor Chaudhary. Ashwani Kumar here. Is audible? Please unmute your mic. Technical team, please. The Bande Matram. Everyone, please stand up. I request everyone, please stand up.
Technical team, please. Technical team, sound is not coming. Technical team. Due to some technical issue, we did not listen the sound of Vande Mataram. Thank you very much for your respect to the nation, respect to our flag, respect to our Indian culture. So basically, in this session, the session is going to be chaired by Professor Parmeshwar Bhatt, who is the professor of Hindi. But I am using English because of the fact some experts from abroad in Canada or USA, they are also connected, so they may not be comfortable in Hindi. And in technical session, we will be coming with as per the nature of the disciplines or subjects. So let me introduce Professor Pramod K. Raghav, who is the president in charge of Jyoti Vidyapeeth, who is connected with us. And I hope we should request our organizing secretary, because already we are late and we are going to Chicago. I hope it is more than 11 p.m. So I request Professor K.K. Chaudhary ji, who is the professor of zoology and coordinator of Faculty of Education and Methodology, as well as organizing secretary of this conference, for his brief welcoming comment on our second day conference. Professor K.K. Chaudhary. Thank you, sir. Good morning, everyone. Respected advisor, sir, Registrar Ma'am, President, Convener of this conference, Professor Sovala, Co-Convener, Professor Manju Sharma, distinguished guests, speakers, and the participants. It's my great pleasure to welcome you all to this conference on the National Education Policy. As the organizing secretary, I am honored to have the opportunity to bring together such a knowledgeable and accomplished group of individuals to discuss one of the most important policies for the future of education in India. The NEP 2020 is a visionary document that aims to transform the education system in India. It is a comprehensive policy that has been designed to provide quality education to all, from early childhood to higher education, with the goal of creating a modern and
dynamic education system that meet the need of the 21st century. As we all know, India is a country of over 1.3 billion people with diverse culture, language, and socio-economic backgrounds. Education play a vital role in providing equal opportunity for all, and the NEP 2020 aim to bridge the gap between the different sections of society by providing quality education to everyone. The policy aimed to achieve several goals, including universal access to education, promoting multidisciplinary learning, creating a flexible and student-centric education system, promoting innovation and research, and fostering internationalization. The policy also emphasizes the need to promote mother tongue based education, which has been proven to enhance children's learning outcomes and help them retain their cultural identity. The policy encourages the use of technology in education, which can help enhance learning outcomes, promote creativity, and provide access to education to remote and marginalized ideas. In conclusion, the NEP 2020 is a comprehensive policy that seeks to transform the education system in India. It aims to provide quality education to all, promote multidisciplinary learning, create a flexible and student-centric education system, promote innovation and research, and foster internationalization. The policy has been developed through a consultative process and reflects the aspiration of the people of the India. It is a visionary document that has the potential to shape the future of education in the country and contribute to the development of a more equitable and prosperous society. I would like to thank all the distinguished speakers and participants who have taken the time to join us today and share their insight and experience on this conference. I am confident that the discussion and deliberation in this conference will provide valuable insights and ideas that can help guide the implementation of policy and contribute to the development of a more vibrant and dynamic education system in India. I urge all the participants to actively engage in the discussion, share their ideas, and ask questions. Let us use this platform to build a collective understanding of the NEP 2020 and work towards its successful implementation. I wish you all a productive and enriching conference. Thank you. Thank you very much. Thank you, Professor Chaudhary. Now I request Professor Manju Sharma ji, who is the co-convener of this conference and Director, Faculty of Education and Methodology, for in brief welcoming words to all the participants. Please. Everyone, please mute yourself. Everyone, please mute yourself. Yes, madam, your voice is not coming. Yes, sir. Thank you, sir. Namaste. Honorable Chairperson Shri Bislesh Garg Ma'am, Honorable Advisor and CEO Sir Shri Vedanji Garg Sir, Chief Guest, Guest of Honor and Special Guest, respected President Sir, respected Registrar Ma'am, respected Proctor, Dean and Convener of this conference, these director, coordinators, faculty members, and प्यारी बिटियाओं शान of JPW. I am Professor Manju Sharma, Director, Faculty of Education and Methodology. First of all, I would like to extend by expressing gratitude and appreciation to each and every one of you for organizing this two-day international conference with such happiness and enthusiasm.
Introduction of the conference. The University Hargobind Khurana Chair at the Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapit Women's University is conducting this two-day international conference in collaboration with Northern Illinois University and IU Chicago, USA. The conference have taken place on May 15 and 16, 2023. The title NEP 2020, Catalyzing Quality Academic Multidisciplinary Research and New National Research Foundation, ICQARM NRF 2023. The conference, including extraordinary and eminent speakers from across the globe, will highlight numerous perspectives and aspects. In addition to being optimistic, I also express great confidence. I sincerely hope that faculty members, scholars, and students from various faculties and schools will be enlightened and thought-provoking by the thoughts and perspective of eminent speakers. Highlight some perspective of education. The new education policy 2020 is an active plan that will transition of the in the 21st century. India needs and hopes in its ability to represent at the world level. Only qualitative education can enhance the skills. According to the Honorable Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, the National Education Policy 2020 focuses on the education and skills needed for the youth of 21st century India. We have to equip our students with the skills of the 21st century. What will these 21st century skills be? These will be critical thinking, creativity, collaboration, curiosity, and communication. The most influential component of life is education. Learning enables us to make sense of the world outside of us, the world within us, and our place in it. Our exposure to new ideas and concepts via education enables us to better understand and appreciate the external and internal environments in which we live. We may create new connections, expand our range of abilities, and acquire a deeper understanding of others when we extend our education by continuing learning. Education is the passport of future. Education, according Swami Vivekananda, a nation is advanced in the proportion to education and intelligence spread among the masses. I would like to once again convey my best wishes for this two-day international conference. I am hoping the entire educational community will gain from the international conference and that it will be thought-provoking. Jai Hind, Jai Nari Shakti. Thank you, madam. Thank you. Manju Sharma ma'am was greeting all the participants on the auspicious occasion of second day of this conference. Now it's time to start our technical session, and we are very much delighted to have our one of the eminent guests who has been, or you can say who is also right now, he is also Professor Emeritus under the Faculty of Education and Methodology, and he is a very big name in the world. My indication is toward Professor Manu K. Bora, who is connected with us from USA Chicago, and I would like to request Professor Manu K. Bora for his
keynotes, and we are very much hopeful that Dr. Bora will give something specific to this conference. Let me say something about Dr. Bora. He is the chairman and president of Business Excellence Inc. USA since 2000. He has 46 years leadership experience guiding Fortune 500 companies. Also 28 years as adjunct faculty globally in operation management. He has contributed at 680 educational institutions worldwide and delivered 1075 presentations and published 70 scholarly articles, wrote 50 blogs posts on quality management, gave 2 TEDx talks in 2013 in India and USA, designed and delivered soft skill programs to around 9 lakh people, appointed Fulbright specialist USA Department of State in between 2016 to 2023. And the important fact that is mentionable here that he is invited member of AICT NEP 2020 Implementation Plan Committee, Government of India, President Blind Foundation for India, and he has done his BTech from IIT BHU, Varanasi, MS and PhD in Chemical Engineering from IIT Chicago. He has 53 awards for outstanding professional contributions and 35 awards for lifelong selfless community service. So this is the brief introduction of Professor Manu K. Bora, who is connected with us from USA Chicago and city. As per information to us, it is around 11:30 p.m. 11:07. 11:07 in Yes. US. It is Yes. night. Yes, at night. Without any delay, I would like to request Professor Bora for his keywords. Over to Dr. Bora, please. Okay. So, Namaskar, sir. Bora se One thing namaste. we would like to share again that Professor Parmeshwar Bhakt ji, who is a renowned professor of Hindi and he is from Bihar. और सबसे बड़ी बात हमारे गुरुदेव रहे हैं, तो विशेष परिचय ये है, and he is sharing the session. Namaskar, So, sir. over to Manu K. Bora, sir, please. okay. Namaskar, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, because we have people joining from different part of the world. Thank you, Dr. Lal, for a very kind introduction. Greetings to the Honorable Chairperson, Honorable Advisor, Honorable President, Honorable Registrar, all the distinguished panelists, dear faculty and students who have joined on the second day of the conference. Today, I'm very delighted to share with you a few thoughts on research ecosystem in India for NEP 2020 implementation. So in the interest of time, I'll share the presentation and let's hope the technology works for us. Trying to present the slides. Okay. Yes, sir, it is visible, please. Very good. Thank you. So, brief outline for my short presentation is I'll begin with the importance of research. How can we do the research? So, there are various ways of doing it. Very important thing is we need to create young researchers by teaching them a research methodology module, which I'll share and which is fundamental because without the basics, you cannot expect the researchers to do well. We need to think about how do we build the capacity for those researchers who are working hard on many innovative fronts. Big thing about communicating the research and having a collaboration and outreach with outside world.
How do we recognize the talent for people who do great work in terms of research, publication, patents, including teaching? And then I'll summarize the presentation. And I would request everyone to take at least 2 key takeaways from the brief session. And that's the best way to learn something and then ponder upon it and put it in action when you are back at work. So, in terms of the importance of research, a country's, may I request everyone to go on a mute? I hear the background noise, please. Thank you. The country's sustainable growth and competitiveness depends on research both at the basic and applied level combined. If we look at the Ministry of Education NIRF score ranking, research has a 30% weightage, and it focuses on publication volume, publication quality, and patents granted. The Times Higher Education World University ranking, 30% focus on research, where there is a focus on volume, income, and reputation. And citation, the influence of the research is another 30%, so almost 60% related to research. And not a great sign where not a single university in top 250 rankings with the 2023 results. So we have a long way to go. When you look at the World University Research Rankings, which is about research in a multidisciplinary way, its impact and collaborativeness, out of 240 institutes, India is at the tail end between 218 to 233. Only 3 top institute in India found a place in it: IIT Bombay, Indian Institute of Science, Bangalore, and IIT Delhi. The Science Citation Index and Social Sciences Citation Index, India is behind China and USA. And if you look at the World Intellectual Property patents granted 2021, India is at number 6. Leaders are China, followed by US, Japan, European Union, South Korea, and then India finds the 6th place. So research is extremely important. In India, somehow the research has not been kept up, and we need to wake up and do better in the research area. Now, how do we do research? There are 3 different ways: basic, applied, or experimental. In my both master's and PhD thesis here at Illinois Institute of Tech, I did the experimental research where I used to go, my turn used to come because we had only one equipment shared by number of people. So I had a graveyard shift, 10 o'clock at night to 4 in the morning. So I started changing my habit. During the day, I'll take rest, but at night, I'll finish all my experimentation. And that's how it went on for 5 to 6 years. You learn to have the resiliency and you build the stamina and take care of the situation comes your way. That's part of learning. Now, research could be qualitative or quantitative. Third point is extremely important, that the faculty should take time and engage, excite, empower, and challenge all students at different levels, undergrad, grad, and postgrad, to show them how to do research and get them excited so they will continue to do more for research. And faculty need to spend time with the students to coach them. Now, I keep hearing from some of the places I've been visiting or keeping in touch through online contacts that faculty has no time. Students are frustrated. They want to work on a project, but faculty cannot spend time on it. And that is a sad thing. And faculty must encourage curiosity and innovativeness and creativity to flourish in the classroom. So this is the most important slide in the deck I'm sharing with you.
that we need to have a 20 to 24 hours course duration research methodology course, which should cover the research methods, data management using stats, very important ethical decision making. This day and age, and particularly in India, we are not doing well in terms of ethics. And if the researchers who are just starting out in the field, if they focus on it, the outcome will be much better. Effective writing, proposal and reports, effective presentations to the sponsors, scientific community. Very important to understand the importance of time management, project management. So when you are doing any research, project management should be a backbone, and risk management, because when you work on a project, something unknown, risk is inherent part of it. Now, this teaching research methodology curriculum modules should be done in a collaborative, experiential, and outcome-based teaching learning process. I'm very happy to share that for the last 30 years, I've been using it here in the Western world, in US and other places around the globe. And very honored to have this method adopted by AICTE, Atal Academy, FDPs for 22-23 cycle, where 200 FDPs are funded with 10,000 faculties learning in a very different way, in a team setting, doing research papers, writing summaries, and having a reflection journal at the end of the program. And the modules should encourage doing a team research project, develop the project report, and share the findings in the class. So normally faculty I have been observing through AICTE FDPs over the last several years, they come, open the video, and particularly during the pandemic, and it's a solo learning, hardly any interactions. So faculty needs to learn in a collaborative fashion under the scientific guidance of expert faculty, doing lots of introspection and reflection by leveraging peer learning and class interaction. Can we remove that banner, please? It's coming on the slide, so it's hard to see the slide. Thank you very much. So I started teaching after 18 years of industry experience, and one observation was in industry, success came from teamwork. So my goal was to simulate teamwork in my classes right from the beginning. So I have a collaborative, experiential, and outcome-based learning, teaching learning process. So teams are formed in my classes. They work on a live project. In the experiential part, they do the summary, reading and summary of 8 to 10 state-of-the-art articles and reflection journals. So let me share some template with you. And interestingly, these templates have also been adopted for the AICTE Atal Academy FDPs for 22-23 cycle. So as we read a lot of articles, the retention is low. So in order to have better retention, kindly stay muted. I started hearing some noise coming. Kindly everyone stay muted. Thank you. So articles should be read individually and in the team, focusing on three things. What are the key principles and practices? 3 to 4 bullets for the team. Application of principles and practices. That's the bridging theory with the practice. In the middle, everyone on that team will write down 3 to 4 lines with the name assigned to that. So they're discussing that practical application. And last, 3 to 4 key takeaways from the article. By doing this reflection and introspection, retention will be much better and you get the nugget out of the article. And reflection journal on the last day of the session, they need to write down individually on a single piece of paper, 1 page, in the bullet form, 3 key learnings, outcomes, 3 key lessons, the concepts, and the implementation plan for 3 key lessons. This will begin the implementation of the study they have done.
So in my mind, role of the faculty is to engage the students and the learners through group activities and peer learning, excite them through importance and application of topic, empower them to provide relevant resources, and ultimately challenge them to find the solution to the problems. We as a faculty should not give out the solution, leave it for the student to find their own solution to the problems they'll be facing. A few more slides and I'll be ending. Capacity building for the researchers. We need to have to inculcate both hard skills, subject matter expertise, which is generally done, but there is a lack of focus on the soft skills. And very happy to report that over the last 10 years now, we have reached 1.2 million students, faculty, and professionals throughout India. Last year at IIT BHU, the link is shown, we conducted round 3 of the soft skill program. So technical people generally do the project for the rest of the life. To do project well, they need to have foundation in leadership, decision making, time management, teamwork, including problem solving, and then do a great project, bringing it within budget, on schedule, meeting the performance target, etc. We need to encourage everyone to become lifelong learners. So last October, I completed 77 years. To date, every day I read from Harvard Business Review, MIT Sloan, McKinsey Quarterly, Forbes, Inc., etc., in area of my interest. And if I find something useful, I put it in a digital library and incorporate it in my teachings and keep it fresh and updated. So if I am at a cutting edge, I can give the best to my students. And we need to learn from the global best practices and bring it in India. Last one or two slides, importance of communication and outreach. We need to inculcate the foundation of communication, that's verbal, written, and presentation skills among young researchers. Give them timely feedback. If you are the one supervising their work, give them timely feedbacks for sustained success. जी अभी आया Encourage लेकिन collaboration. आ रहा है जा रहा है लेकिन इंटरनेट में जो आपका वीडियो आ रहा है तो ऑडियो आना चाहिए. Professor Dilip sir, please mute yourself. Yeah, thank you. Encourage collaboration with other successful researchers, both nationally, internationally, by creating meaningful pathways. And this is where you can do collaboration, not on paper only, but make it active and two-way street. Encourage research finding application to benefit the society, because ultimately country is sponsoring this research, putting in the resources, so it should benefit the society as well. Focus on return on investment. Last item, talent recognition. Assign importance of mentorship. One experienced researcher can mentor 3 young upcoming researchers. Provide recognition and reward to high-performing researchers as appropriate by developing a recognition process. Encourage young researchers to make presentation at both national and international level. For that, need to have a budget and monitor the progress, what's the impact. And the impact should be measured through continuous research, not neglecting teaching, focus on quality publications and patents filed and granted, and celebrate breakthrough ideas with great impact to society. For example, COVID-19 vaccine development indigenously in India. So with that, in summary, for India's sustained progress in scientific advances, it is imperative to cultivate young scientists who are capable and proficient in research, teaching, publications, and patents. Policy work done by the Office of Principal Scientific Advisor, Government of India, is an investment in the future of India. And incidentally, on 9th of January 2023,
A panel of experts from around the world were convened, and I had the honor to share some of the things I'm sharing with you today in that conclave. Widely share the principal scientific advisors, Government of India policy work with CSIR and all national lab, including private sector labs, so everybody is on the same page. And we need to encourage and empower our faculty to focus on research, not just teaching only, and engage students and empower them to conduct research in all higher education institutes. So, with that, two key takeaways from the session. Remember to form this habit of taking out two things from new things you are hearing. And with that, I want to thank Dr. Shobhalal for inviting me, and it's an honor to be part of this distinguished group of people on this session today. So I'm going to stop sharing, and back to you, Dr. Shobhalal. Thank you, sir. Thank you for your very nice presentation, very informative presentation. And sir, actually, our patron of this conference, Professor Ashwini Kumar, is trying to say something related to NIRF and NEP 2020. So, in context to your presentation, over to Ashwini Kumar, please. Thank you, sir. Thank you for giving me this opportunity. I'm Professor Ashwini Kumar, Govind Khurana Chair Professor in this university for a long time. I have one comment to make and one seek your guidance. I've been guiding PhD to many students for so many years and also writing research papers and books. What I feel lacking in the student is their writing skill. Any paper in international journal or international book require a specific type of training, how to put the figures, how to label them, how to put the bibliography, and how to arrange their ideas. So new education policy is very good because it lays more emphasis on learning than teaching. The other way around, the students should also participate in their work. But what I find weakness of the system is that number one, it is not writing oriented. The student examinations are now marking 1, 2, 3, 4, and the writing skills are gradually being lost for the student. And when I publish I am editor of 2, 3 journals also, and I find the writing skill are very weak. People are not able to arrange their thoughts coherently. And maybe language is one problem, but we have to be global and we have to learn international. So what is your suggestion regarding in this to develop the writing skill of the student? Thank you very much. Thank you. It Yeah. seems that, yeah. I was Yes, sir. thrown Yes, out sir. several times. No issue. No issue. He was giving a very good and very remarkable comment, and he proved that how your presentation was, how this was, in which way this was very much significant for the NEP and its implementation policy and others. So, Professor Manu K. Bora, you are one of the pillars who, in context to the work that is being taken by NEP 2020 implementation program by AICT Government of India. So, thank you very much for your presentation, and we are expecting for your revisit to our other programs. So thank you very much on behalf of, yes sir, you have anything? Any Can I suggestion, Professor Bora? take about 30 seconds to answer Yes sir. Professor Yes sir. Ashwani Kumar's comment and the Yes question? Yeah. yes. Sorry, I was asked to leave the session and I had to come back 2 more times. No, you are not asked, you are always with us, please continue. Okay, something happened. I was essentially out of the conference. No, Anyway, please. technical glitch. So my focus is, so if you notice probably, Professor Kumar, that the writing and communication is one of the thing in 20 to 24 hours research methodology curriculum, big focus on communication.
that is presentation, writing, and oral presentation, because all of those will be required to become a good researcher at the end of the day. And communication should start right at the beginning when they enter the university. Actually, during the schooling K through 12, it should be focused upon, so that when they graduate, they have a better communication skill and continue that journey through the life. And I can only emphasize from my personal experience that when I graduated, I was very shy and introvert. I would not speak in front of a large number of people. Coming to the US, I realized if I don't speak, they will think I have no ideas and I'm a fool. So one has to come out of that internal shell, and we have to come out of the comfort zone and start making presentations, keep talking to people, do a lot of practice, and we can have a one session on communication alone, including the listening part. And if we provide this foundation, and this is part of the soft skill I was talking about, communication is a foundation, then build with it leadership, decision making, time management, teamwork, problem solving, and project management. These are the things we need to inculcate in all the students, because these are the lifelong things for them to shine. And unfortunately, our curricula doesn't have it. So it's a huge gap. And you ask the right question, we need to change our focus, put the focus where the needs are. And industry is looking for soft skills. And we are just still cranking out hard skills, and people, unfortunately, we use this memorization and vomiting approach. Students cram it at the last minute, throw it in the exam, and then there is no retention. So we need to move away from all this. Collaborative, experiential, and outcome-based learning. Systematically learn how to write what you have done in terms of project. Share it with your teammates. So open communication, and keep building the communication as a foundation as you go forward. So those are my brief comments. I hope that makes sense, Professor Kumar. Excellent. It should be followed in letter and spirit. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Nice presentation. Yes, thank you. And Dr. Shobalal, with your permission, if you allow me, it's approaching 11:32 US time. I would Sir, take leave, sir, and we are very my much health glad is to not see at the you. peak. Thank you very much for your gracious presence, and thank you very much on behalf Thank of the you. whole fraternity of Thank you from on behalf of university, and it is really commendable that you took time out of your personal time at so late, 11 or more than 11, right there in US. Thank you very much. Thanks a lot. Most welcome. Now, by the permission of chair, I would like to invite one of the legendary personality, Professor Dilip Giri, who is connected with us. Professor Dilip Giri, sir, please open your webcam. Dilip Giri. स्वागत दिलीप जी का। Dilip Giri ji, please. Are you listening me, please? Professor. क्या हुआ, दिलीप गिरी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है? हाँ शिवालाल जी, हेलो। Yes, I'm listening. I'm listening to you, sir. I'm getting your voice. Maybe Professor Lal. स्वागत दिलीप साहब।
Sir, you may please continue. You are audible. Please continue. क्या दिलीप साहब का ऑडियो काम नहीं कर रहा है क्या? हेलो हेलो Hello, audio is working. At least I am listening now. Dilip sir. शोभालाल जी, हेलो 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 Hearing हेलो you. I am hearing you. Is Shobhalalji hearing you? आपकी आवाज तो आ रही है। हेलो नमस्ते सर। सर थोड़ा टेक वो बीएसएनएल डाउन हुआ है सर, तो आप 5 मिनट वेट करिए सर बस। ओके ओके सर थैंक यू सर। हेलो हेलो। हेलो हाँ हाँ कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हेलो Am I audible? Yes, sir. I am hearing you. Yes, you are also audible. There are some technical issues on the network. So I think I will be shortly with you. Yes. So somehow I got connected.
आवाज नहीं आ रही है शोभालाल जी। शोभालाल जी, हेलो। 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 Yes, yes. Shortly, we all will be with you. अभी थोड़ी देर में हम सब आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया जी था जी जी नेटवर्क का। जी We जी are working on it. I am connected. Lal sir will also get connected, and all the attendees will be connected in few ओके minutes. ओके। Just yes. Please bear with me. Thank you. शुरू में बताया कि ये मेरे गुरुदेव भी हैं। Yes. मैंने हिंदी का ककारा बिटकारा सीखा है। एक छोटा सा परिचय दे दूं। डॉक्टर परमेश्वर भक्त जी जिन संस्थानों में सेवाएं दी हैं उनमें स्नातकोत्तर हिंदी विभाग MS कॉलेज मोतिहारी में, जो बिहार का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है, 1 जनवरी 1976 से 11 जनवरी 1980 तक ये वहाँ PG डिपार्टमेंट में रहे हैं। फिर PG डिपार्टमेंट MJK कॉलेज बेतिया, जहाँ मैं इनसे शिक्षा लिया जब मैं +2 में पढ़ता था, इंटरमीडिएट में। उस समय इंटरमीडिएट की पढ़ाई UG PG कॉलेज में ही होती थी। तो ये 1980 से 2016 तक वहाँ थे। उसके बाद ये सेवानिवृत्त हो गए। मुझे याद है सर के बायोग्राफी में तो नहीं लिखा है, लेकिन इनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित है। और क्षमा कर मांगते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि मीत हमारे गीत तुम्हारे सर की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। और हिंदी साहित्य में की जितनी विद्याएं हैं सब में इनका बराबर का अधिकार है, चाहे वो गद्य हो, पद्य हो, नाटक हो, संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो। मुझे लगता है कि भक्त सर शायद नेटवर्क इशू के चलते डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आ गए सर। तो शिष्य एक गुरु का क्या परिचय दे सकता है, बस आप पधारे हैं। इसके लिए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आयोजक टीम है उसके तरफ से, विश्वविद्यालय ज्योति विद्यापीठ की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि चूंकि आज के इस सत्र में 15 स्कॉलर्स आपके बीच आ सकते हैं, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, जो यहाँ PhD कर रहे हैं और कुछ PG के स्टूडेंट भी आ सकते हैं। तो आपसे आग्रह है कि कृपया आप इस सत्र के बारे में और जो हमारा जो कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक है NEP-2020 कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड न्यू नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा आप हमारे स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर पार्टिसिपेंट्स को बताएं। ओवर टू प्रोफेसर परमेश्वर भक्त जी। ज्योति विद्यापीठ। हेलो, कैन यू हियर मी सर? कैन यू हियर मी? जी आवाज आ रही है। मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, आवाज आ रही है। दिलीप सर प्लीज वेट। दिलीप सर प्लीज वेट। ओके, देन आई एम कंटिन्यूइंग। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वी आर कमिंग बैक टू वेरी सून। ज्योति विद्यापीठ जी महिला विश्वविद्यालय जयपुर की ओर से आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय ऐतिहासिक सम्मेलन में सबसे पहले मैं इस संस्थान के जो संस्थापक हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और
वहाँ जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सब का मैं एक बार आभार भी प्रकट करता हूं और उनको इस ऐतिहासिक कार्य के लिए बधाई भी देता हूं। तत्पश्चात मैं उन सभी विद्वानों का, उन सभी शोधार्थियों का और इस आभासी पटल से जुड़े हुए सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित हैं। शोभालाल जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको आशीर्वाद भी देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण एकेडमिक कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है। आपका जो विषय है वह है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन NEP 2020 Catalysing Quality Academic Multidisciplinary Research and New National Research Foundation। आज का जो हमारा विषय है, विषय निर्धारित किया गया है शिक्षा और हिंदी। विद्वानों ने, जैसा कि डॉक्टर वोरा साहब ने बहुत सारी महत्व की बातें कही हैं और रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए उन्होंने विशेष जोर दिया है। एक प्रश्न भी उनके अभिभाषण के बाद आया था कि विद्यार्थियों को लिखने में, अभिव्यक्त करने में परेशानी हो रही है। यह जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसने जो सबसे ज्यादा फोकस दिया है वह भाषा पर दिया है। और शिक्षा सबसे पहले उसने, जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, उसको उसने शिक्षा मंत्रालय बनाया है, घोषित किया है। और इतना ही नहीं, भाषा, चाहे वह आंचलिक भाषा हो, चाहे वह मातृभाषा हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, उन सब पर विशेष जोर दिया है। दरअसल ज्ञान की जितनी भी विधाएं हैं, विज्ञान, तकनीक, कला, उन सब के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। वह भाषा भिन्न भिन्न देशों में सबकी अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन भारतवर्ष की जो भाषा नीति होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, इस पर थोड़ी बातें मैं करना चाहूंगा। सबसे पहले 1968 में पहली बार शिक्षा नीति इस देश में आई। उसके बाद 86 में दूसरी बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय आई। और 34 वर्षों के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में 2020 में नई शिक्षा नीति 2020 आई है। इस शिक्षा नीति ने सर्वाधिक महत्व दिया है भाषा पर, और वह भाषा चाहे आंचलिक हो, क्षेत्रीय हो, प्रांतीय हो या राष्ट्रीय हो। अभिव्यक्ति की सबसे बड़ी बाधा भाषा की कमी होती है। आप चाहे विज्ञान और तकनीक की किसी भी विषय में ज्ञान का जो कुछ भी हासिल करते हैं, तो अभिव्यक्ति के समय बाधा होती है, क्योंकि भाषा की बाध्यता आपके सामने है। और प्रायः ऐसा होता है कि मोबाइल और लैपटॉप या जो आभासी दुनिया है, इंटरनेट पर दिन रात काम करने वाले भी बोलते समय वे अपने को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए भाषा की बात हम करें, और शिक्षा और भाषा, हिंदी की बात आज करेंगे। हिंदी को 1949 में संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी और एक परमिशन यह दिया कि 15 वर्षों तक अंग्रेजी उसकी मददगार भाषा के रूप में रहेगी। लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज भी हिंदी वहीं की वहीं रह गई है और अंग्रेजी उसके साथ चल रही है। तो जो नई शिक्षा नीति है, उसने जन भाषा, लोक भाषा पर जोर दिया और कहा कि 5वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे शिक्षा की जो 10+2 की जो अवधारणा थी, उसको इस नई शिक्षा नीति ने 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 करके इसको चिन्हित किया और कहा कि 5वीं कक्षा के बाद भी हो सके तो क्षेत्रीय भाषा अगर जारी रहे, आगे बढ़े, तो संभव है छात्रों में ज्यादा अपनी बात कहने की क्षमता विकसित होगी। जरा ध्यान देने की बात है
कि जर्मनी जैसा छोटा देश, जापान जैसा छोटा देश, कोरिया जैसा छोटा देश, तुर्की जैसा देश अपनी भाषा में भी ज्ञान और तकनीकी की प्रगति कर सकती है। यह हमारी एक तरह की कहे कि नाकामी कहें या हमारी उदासीनता कहें कि आजादी के 75 वर्षों के बावजूद हम हिंदी को उतनी सशक्त नहीं बना पाए या उसको प्राथमिकता नहीं दे पाए। हम कहते हैं कि विज्ञान और तकनीकी शब्दावली की दृष्टि से हिंदी उपयुक्त नहीं है, जबकि हिंदी का जो रिसोर्स है, आकर स्रोत है, वह संस्कृत है और संस्कृत विश्व की सर्वाधिक समृद्ध भाषा है। संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ, पुरानी हिंदी से होते हुए हम नई हिंदी तक आए और यह भी सच है कि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा हिंदी है। हम हिंदी में जो बोलते हैं वही लिखते हैं, यानी फोनेटिकल इंस्क्रिप्शन है, जो हम बोलते हैं उसी को लिखते हैं, उसी को पढ़ते हैं। अंग्रेजी में पीयूटी को पुट पढ़ते हैं, लेकिन बीयूटी को बुट नहीं पढ़ के बट पढ़ते हैं। यह मैंने एक साधारण उदाहरण दिया। दूसरी चीज कि गूगल ने यह स्पष्ट किया है कि भारतवर्ष में इंग्लिश कंटेंट का निर्माण की दृष्टि से सिर्फ 19% का आंकड़ा है, जबकि हिंदी विषय में सामग्री निर्माण की प्रक्रिया में 94% की भागीदारी है। तो कुछ बातें हैं, समय की तो कमी है, मैं जानता हूं। हमारे एक से एक वक्ता हैं, रिसर्च पर्सन्स हैं जो अपनी बात कहेंगे, अपने पेपर्स रखेंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि नई शिक्षा नीति ने भाषा पर इसीलिए जोड़ दिया कि हमारे ज्ञान के जो भी भंडार हैं वे भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होंगे। अभी बोरा साहब जो रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की बात कर रहे थे, तो रिसर्च करने वाले जो फैक्ट महसूस करेंगे या खोजेंगे, उसको व्यक्त करने के लिए उनके पास एक समर्थ भाषा होनी चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली, जिसमें नालंदा, तक्षशिला और भी हमारे शिक्षा के विशेष केंद्र थे, उस समय जो वराह मिहिर थे, आर्यभट्ट थे, पाणिनि, पतंजलि, गार्गी, मैत्रेयी जैसे जो विद्वान आए थे, सबने जिन ग्रंथों की रचना की थी अपने ढंग से की थी और भारतवर्ष का जो विज्ञान था, ज्ञान था, वह विश्व प्रसिद्ध हुआ था। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में सर्वप्रथम केशव चंद्र सेन जो बंगाली थे, उन्होंने इसकी अवधारणा घोषित की और उन्होंने दयानंद सरस्वती से आग्रह किया कि आप अपना सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में ही लिखें। और गुजरात का एक महाकवि नर्मदा लाल दबे हुआ करते थे, जिनको संक्षेप में नर्मद कवि कहा जाता था। उन्होंने 1880 में हिंदी को राजभाषा बनाने की घोषणा की थी और कहा था कि इसको ही राजभाषा होना चाहिए। महात्मा गांधी ने बार बार यही बात कही और विनोबा भावे जी ने तो यहां तक कहा कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब की लिपि एक होनी चाहिए, देवनागरी लिपि होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार को, उसके नीति निर्धारकों को, या कहें कि सरकारी नीति को क्रियान्वित करने वालों की क्या लाचारी है कि जो 10.5% लोगों की भाषा भारतवर्ष में अंग्रेजी है, वह सर्वाधिक समर्थ मानी जा रही है, जबकि रूस, चीन सब अपनी भाषा में विज्ञान और तकनीकी की प्रगति कर रहा है। जर्मनी, जापान, कोरिया, ये सब अपने विज्ञान और तकनीकी के ज्ञान को अपनी भाषा में दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि यह गंभीर चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है और विद्वानों को इस बात की ओर भी ध्यान देना होगा कि आखिर भारत का जो ज्ञान है आज, यानी हमारी युवा पीढ़ी जो दिन रात प्रयोग कर रही है, रिसर्च कर रही है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए सशक्त माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी उनकी सामान्य भाषा नहीं है। मैं कहता हूं कि केशव चंद्र सेन की अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि जब वो इंग्लैंड में भाषण देते थे तो उनके भाषण को सुनने के लिए अंग्रेजों की भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन उस व्यक्ति ने हिंदी को सर्वाधिक समर्थ मानते हुए राजभाषा के रूप में स्वीकृति देने की बात की।
यह एक और आश्चर्यजनक चीज है कि हिंदी को संविधान सभा में राजभाषा के रूप में स्वीकृति दिलाने या उसके पूर्व से उसका संकल्प लेने वाले में जो लोग थे वे अहिंदी भाषी क्षेत्र के थे। इसलिए अहिंदी भाषी क्षेत्र को भी इस बात की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि हिंदी उन पर थोपी जाएगी या हावी हो जाएगी, बल्कि जी जी ये देख लो पूरी ट्राई। जी हेलो। हाँ सर, आप करिए, आप भी रखिए सर। वो कोई जुड़ रहा है, थोड़ा म्यूट कर लीजिए। जो जुड़ रहे हैं अपने को म्यूट करिए प्लीज। यस सर प्लीज। तो हिंदी में इतनी क्षमता और गुणवत्ता है, आज भी कहें कि मात्र 10.5% लोग ही अंग्रेजी बोलने वाले भारतवर्ष में हैं। हिंदी बोलने के माने हिंदी लिखने पढ़ने और बोलने वालों की एक संख्या तो 45% है, लेकिन अगर जिन लोगों की द्वितीय भाषा हिंदी है उसको मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर पूरे देश में 75% के करीब लोग हैं जिनमें हिंदी जानने वाले भी हैं, लिखने वाले भी हैं, बोलने वाले भी हैं। इसीलिए हमारे पूर्व चिंतकों ने, मनीषियों ने या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हिंदी को भारतवर्ष की राजभाषा का संकल्प लिया था। संविधान ने उस संकल्प को घोषित तो किया, लेकिन हमारी क्या व्यवस्था है कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी अभिव्यक्ति के इस सार्वभौमिक माध्यम को हम पूरी तरह लागू नहीं कर पाए, जबकि आज भी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली यह दूसरी भाषा है। मंदारिन के बाद हिंदी ही दूसरी भाषा है। हमें किसी भाषा से एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी माने ज्ञान का जो विविध क्षेत्र है, विविध विषय हैं, उनको हिंदी में आना है। और इसके लिए जो नई शिक्षा नीति है उसने अनुवाद के लिए, तकनीकी शब्दावली गढ़ने के लिए, शोध के लिए अनेक उपाय बताए हैं। लेकिन थोड़ा क्या कहें, संशय इस बात का है कि जिस तरह से हमारा संविधान विश्व का सर्वाधिक सुंदर और उपयुक्त संविधान है, उसके रहते हुए भी भारत में बहुत सारी परेशानियां हैं। उसी तरह हिंदी के प्रति नई शिक्षा नीति या भाषा के प्रति नई शिक्षा नीति ने जो बहुत ही सकारात्मक संकल्प या निर्णय लिए हैं, उनको अगर जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि आंचलिक भाषा में शिक्षण देना है, पाठ्य सामग्री तैयार करनी है, और ऐसा भी है कि एक एक शहरी विद्यालय में कई मातृभाषा के छात्र पढ़ते हैं, तो कई परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। और मैं समझता हूं कि इस सम्मेलन में जितने भी विद्वान आए हैं उनकी भाषा अलग हो सकती है। किन्हीं ने अंग्रेजी में भाषण दिया, किसी कोई और भाषा में दे सकते हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है कि हमारा कल्याण, इस देश का कल्याण, इसके विश्वविद्यालयों का कल्याण तभी हो सकता है जब यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं, स्थानीय भाषाएं और हिंदी इतनी समर्थ हो जाए कि वह विज्ञान, तकनीक और प्रयोगशाला में समझी जाने वाली, बोली जाने वाली और उसके माध्यम से काम की जाने वाली भाषा के स्तर पर आ जाए। मैं आज जो शोधार्थी इस सत्र में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे, मैं उनसे एक ही बात आग्रह करना चाहूंगा कि उनकी भाषा चाहे और भी हो सकती है, लेकिन हिंदी विषय को, हिंदी भाषा को वो केवल साहित्य लेखन और उपन्यास और कथा कहानी लेखन तक की भाषा के रूप में नहीं लें, बल्कि इस भाषा में अनुवाद की क्षमता विकसित करें, शोध की क्षमता विकसित करें, तकनीकी शब्दों को इसमें लावें, दूसरी भाषाओं में जो ज्ञान है उस भाषा को भी हिंदी के माध्यम से अनुदित करने का प्रयास करें, यह कार्य करें, तो भविष्य में निश्चित रूप से हिंदी तकनीकी दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, हमारी प्रयोगशालाओं की दृष्टि से और हमारे ज्ञान को विश्व तक पहुंचाने की दिशा में सक्षम हो पाएगी। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार पुनः अभिवादन भी करता हूं और मैं अपनी बातें समाप्त करना चाहता हूं ताकि और विद्वान और शोधार्थी को मौका मिल सके। बहुत बहुत आभार।
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय का और आप सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद। अच्छा सर, प्रेजेंटेशन आपको था बहुत सर। बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहे हम लोग के साथ, आप सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। In the meantime, there is a request by the chair that Professor Dilip Giri, who is connected with us from Canada, and it is already late night there. So, I hope that Dr. Giri is connected with us. Dr. Giri, Dr. Dilip Giri. डॉक्टर गिरी, आपको सुनाई दे रहा है? डॉक्टर गिरी सर, यू आर हेलो, लिसनिंग? यस, हेलो डॉक्टर दिलीप गिरी, टेक्निकल टीम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सर डॉक्टर दिलीप गिरी, दिलीप सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Technical team, please coordinate with Dr. Dilip Giri. I think he is not able to hear probably. That's why, yes. Not getting our voice. सर आप अपना हेलो जी सर, ओके अब ठीक है सर। हेलो डॉक्टर गिरी, हेलो डॉक्टर गिरी। वो बोल रहे हैं लेकिन अनम्यूट नहीं है। Dr. Giri, are you listening us? Dr. Giri sir, please unmute your mic. Then only we can listen to you, sir. Dr. Giri, please. Dr. Giri. He is not even getting our voices. We are not audible to him. Otherwise, he would have unmuted till now. Technical team. Am I audible to you, Dr. Giri? Can you hear me? No, I think no. Then we will be सर गिरी सर की सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। अच्छा, Please unmute you, sir. वो जुड़ रहे हैं सर अभी 2 मिनट में वापस। Are you trying? Yeah, I can hear you, but you just check over here. मेरा यहाँ पे हो रहा है तो मेरा फोटो मैं Dr. Dilip sir, please unmute yourself. What to do? The problem we are facing. सामने करना नहीं दिखे तो Dilip sir, are you audible? बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, लगता है या तो म्यूट हैं। वो अब वो देखिए ना, यहाँ पर म्यूट है वो। The sign is showing here muted. हो। Yes. So सुन तो रहे होंगे। तो अब सर आप अनुमति दीजिए, हम बुला रहे हैं मिस मनोज शर्मा को पेपर प्रेजेंटेशन के लिए। जी जी, शुरू कराया जाए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। हाँ, शुरू करिए। हाँ, शुरू करिए प्लीज। सर मैं मनोज शर्मा, रिसर्च स्कॉलर एजुकेशन। सर आज ये सामने क्या शेयर कर दिया, पीपीटी है क्या? हाँ सर, जी सर। तो ये सामने क्या है? एक मिनट सर, आप पीपीटी ले आइए। हाँ ये सारा लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपके साइड से अनम्यूट होइए पहले आप। हेलो, अनम्यूट होके मैं म्यूट किया फिर। हेलो कैन यू हियर मी? हाँ, यस दिलीप, यस, अगेन यू आर म्यूटेड। सर मेरी आवाज आ रही है? फिर से इन्होंने म्यूट कर लिया। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर। सर मेरी पीपीटी आपको दिख रही है क्या? नहीं जी। अच्छा पीपीटी, एक मिनट।
सर अब दिख रही है? मनोज, आप प्रेजेंट पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे होंगे, म्यूट, स्टार्ट कैम, सेटिंग्स, उसके बाद प्रेजेंट का ऑप्शन आ रहा है, आप प्रेजेंट पे जाओ, वहां पे क्लिक करो, वहां से आपकी पीपीटी प्रेजेंट होगी। गो टू द प्रेजेंट आइकन एंड क्लिक देयर। मैम उस पर तुमने कर रखा है। मनोज, आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या कर रहे हो आप, बताओ मुझे। मैम वही मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैम, लेकिन मेरे पे प्रेजेंट उसमें ही कर रही हूँ, मेरा हो नहीं पा रहा है, लेकिन उसी पे लग। कैसे कर रहे हो आप, प्रेजेंट पे जा रहे हो? हाँ मैम, अब देखो अब हो गई क्या? हाँ हाँ, हो गई हो गई। हाँ हाँ, उसको स्क्रीन को बड़ा करो आप। अच्छा ठीक मैम। हाँ मैम, मेरा नाम मैं मनोज शर्मा, रिसर्च स्कॉलर एजुकेशन। आज की कॉन्फ्रेंस का मेरा टाइटल है भारत में अनुसंधान को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भूमिका। टेक्निकल टीम एक बार देखिए, परमेश्वर भक्त सर। हाँ सर, रिमूव हो चुके हैं क्या? टेक्निकल टीम प्लीज। हाँ सर, भगत सर नहीं सर अभी अपने साथ। एक बार जुड़वाइए उनको। चलिए आप शुरू करिए। सिर्फ हाँ, जो प्रस्तावना, सबसे पहला प्रस्तावना है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान और मानव सहित सभी क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। NRF में भारत अनुसंधान की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्लाइड बढ़ाते जाइए, स्लाइड को चेंज करते जाइए। जी सर स्वायत्त निकाय। स्लाइड चेंज नहीं हो रही आपकी मनोज, स्लाइड चेंज करो। जी मैम, एक मिनट। प्रस्ताव किया गया जिससे देश में गुणवत्ता और शोध प्रक्रिया विकसित में एवं प्रेरित हो सके। इस संस्थान की स्थापना का व्यापक उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देना। अब दूसरा मेरा वो आता है, इसका उद्देश्य NRF के उद्देश्य है। मनोज, आप अपनी स्लाइड चेंज कीजिए प्लीज। जो टॉपिक आप बोल रही हैं, जो भी कंटेंट आप डिलीवर कर रही हैं, आप उस स्लाइड पे जाइए प्लीज। मैम मेरा ये स्लाइड चल रही है मैम। नहीं, स्क्रीन पे नहीं दिख रही है वो, आप स्लाइड चेंज करो, दूसरी स्लाइड पे जाओ, नीचे। अब नहीं दिख रही मैम? कर्सर को आगे करो, दूसरे वाले पे डालो, तीसरे पे डालो। आगे मैम ये प्रस्तावना अच्छा बोल रही हो, कॉन्फिडेंस रखो और आगे स्लाइड चेंज करते जाओ। आप सभी स्कॉलर का स्लाइड आप लोग लेके रखिए अपने पास और खुद से शेयर करिए। NRF शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी तथा सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। NRF की स्थापना से वर्तमान अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र में अंतराल को संबोधित करके एक नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना और प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं, छात्रों को आकर्षित करने और बनाए रखने से भारत में अनुसंधान गतिविधियों में परिवर्तन करने का प्रभाव डाला गया। आगे जो इस NRF का उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में बहुविषयक और समग्र शिक्षा प्रणाली विकसित करना और पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटर्नशिप को शामिल करना है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव लिया गया, जिससे देश में गुणवत्तापूर्ण शोध प्रक्रिया विकसित की गई। इस संस्थान की स्थापना का व्यापक उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से देश में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा दिया गया। इसके NRF है, उसके उद्देश्य है कि भारत में अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना, यानी जो भी अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र हैं उनको अनुसंधान के स्तर से ही क्या है उसको बड़ा मजबूत करना, जिनका ढांचा है उसकी पूरी तरह से मजबूत करना। चिन्हित क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना, जिन क्षेत्रों में अनुसंधान नहीं हो रहा है उन क्षेत्रों में भी अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, जिससे रिसर्च शोधार्थी उनको एक सुविधा मिले। शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच सहयोग
को सुगम बनाना इसका एक मुख्य उद्देश्य माना गया। अनुसंधान में शीर्ष प्रतिभा को आकर्षित करना और बनाए रखना इसका भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उत्कृष्ट शोध और उसकी प्रगति को मान्यता देना, विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान गतिविधियों को समन्वय करना, अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अनुसंधानकर्ताओं को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना। ये जो एनआरएफ है इसके मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। फिर अगला मेरी स्लाइड है मैडम, एनआरएफ से नियामक संस्थाएं की यूजीसी, जो यूजीसी है उनकी 1953 में स्थापित एवं यूजीसी अधिनियम 1956 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों में से एक अनुसंधान के उच्च मानकों को स्थापित करना और बनाए रखना था। लेकिन आयोग ज्यादातर आपकी स्लाइड चेंज होती ना तो और भी अच्छा लगता है। आप स्लाइड चेंज करने की कोशिश। मैं चेंज कर रही हूँ मैम, मेरा ये जो अगली स्लाइड है मैम, ये नहीं आपकी नहीं आ रही है, पहली वाली आप, हाँ अब हो रहा है बेटा, अब चेंज हो रही है। हाँ जी मैम। फिर अगला है मतलब लेकिन तो आयोग, अच्छा दोबारा से मैम एक मिनट, हाँ जी मैम अब आ रही है, दिख रही मैम? हेलो हेलो, चौथी स्लाइड पे थे आप, पांचवी स्लाइड पे थे, पांचवी वाली। हाँ नियामक संस्थाएं आ रही है। हाँ हाँ मैम, जो अब दूसरे वो है नीति आयोग। मनोज आप F5 प्रेस करिए। नहीं सर मेरा लगा हुआ है। F5 प्रेस करिए आप। चल रहा है सर। कीबोर्ड में F5 होता है, उसको प्रेस करिए, फुल स्क्रीन हो जाएगा आपका। एक मिनट सर। कौन जुड़ने के लिए सर? हाँ अब हो गया सर। हेलो, हाँ नियामक संस्थाएं आ रही है, आप जो बोल रही हो। हाँ, तो सर बोल रहे हैं तो F5, F6, F7 ऐसे कर दो। हाँ जी मैम कर दिया। इसमें जो पहला नियामक पूर्व संस्थाएं हैं ये यूजीसी 1953 में स्थापित एवं यूजीसी अधिनियम 1956 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्यों में से एक अनुसंधान के उच्च मानकों को स्थापित करना और बनाए रखना था। लेकिन आयोग ज्यादातर पीएचडी डिग्री के लिए मानक स्थापित करने में व्यस्त रहा। आगे दूसरा वो दिया है ना नीति आयोग में कि 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की, जिसे सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है। नीति आयोग के मुख्य रूप से टीम हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब नाम से 2 कोर हब हैं। थिंक टैंक का मुख्य कार्य छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पर अनुसंधान परियोजना को प्रोत्साहित करना और देश के भीतर अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना। इसके अगला है तीसरा जो मेरा इसी में नेक। यूजीसी ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से 1994 में एक स्वायत्त निकाय नेक राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना की। नेक के 7 मानदंडों में से तीसरा मानदंड अनुसंधान, नवाचार और विस्तार से संबंधित है, जो उच्च शिक्षा के एक संस्थान द्वारा स्थापित अनुसंधान सुविधाओं और अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने का मूल्यांकन करता है। NIRF भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP पैरामीटर शोध आउटपुट की गुणवत्ता और मात्रा का मूल्यांकन करता है, जैसे प्रकाशन, पेटेंट और अनुसंधान परियोजनाएं। समग्र रैंकिंग में इस पैरामीटर का वेटेज 40% है, जो इसे संस्थान की रैंकिंग निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक बनाता है। मैम दिख रही है हमारी स्लाइड? हेलो हेलो, आपकी स्लाइड का क्या करें? आप एक स्लाइड चला रही हैं, चला दिया और पूरी बातें कह रही हैं। इस तरह का प्रेजेंटेशन आपको कॉन्फ्रेंस में मनोज जी सीखने के लिए पार्टिसिपेट करना रहता है। कॉन्फ्रेंस में हम लोग सीखते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सर मैं चेंज कर रही हूँ, लेकिन नेटवर्क का इशू आ रहा है सर। मैं तो बराबर से चेंज करती जा रही हूँ सर। अभी दिख रही है सर। मैंने हो गया?
आंसर और है भारत में शोध एवं नवाचार में निवेश। भारत तथा अन्य देशों में अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निवेश, यानी जो भारत में इसका निवेश है 59%, चीन में 2.1%, अमेरिका में 2.8% और इजराइल में 4.3% दिखाया गया है। भारत का 59% नहीं, 0.69%। हाँ सॉरी सर, पॉइंट से कोई, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ सर, भारत में बोलो बेटा, गलत बोला आपने। 0.69, सॉरी मैम। भारत का कोई भी शोध केंद्र दुनिया के शीर्ष, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 तथा अन्य देशों में प्रति लाख जनसंख्या पर शोधकर्ताओं की संख्या है। भारत में 15, चीन में 111, अमेरिका में 423 और इजराइल में 825। भारत का कोई भी शोध केंद्र दुनिया के शीर्ष 100 अनुसंधान और नवाचार संस्थाओं में शामिल नहीं है। अब तो दिख रही है मैम भारत में। हाँ, अब अच्छा है। हाँ जी, हाँ सर, भारत में अनुसंधान की कौन कौन सी बाधा है उनको भी बताया गया कि भारत द्वारा उत्पादित किए गए पेटेंट की संख्या 46,582, जबकि चीन द्वारा 13,81,584 तथा अमेरिका द्वारा 60,69,956 पेटेंट आवेदन किए गए। भारत के प्रकाशनों की गुणवत्ता में वैश्विक मानकों से काफी जो कम है। साइटेशन के संदर्भ में भारत 11वें स्थान पर है। एकीकृत योजना और समन्वय का अभाव है। अनुसंधान संस्कृति का भी अभाव है। शैक्षणिक संस्थानों में रचनात्मकता और गहन सोच पर बल देने का भी अभाव पाया गया है। इनकी ये बाधाएं बताई गई है। भारत में अनुसंधान के विकास में एनआरएफ की क्या भूमिका है? एनआरएफ केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, प्रयोगशालाओं, उच्च शिक्षण संस्थानों और तकनीकी संस्थानों के बीच एक सेतु का काम करेगा। एनआरएफ देश भर में एक अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र विकसित करेगा जो निजी, राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बीच की खाई को पाटता है तथा प्रत्येक को समान अनुसंधान अवसर प्रदान भी करता है। एनआरएफ सीमित क्षमता वाले संस्थानों को बहुविषयक अनुसंधान करने के लिए सशक्त बनाने में भी मदद करेगा। एनआरएफ आज की सबसे आधुनिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अन्य उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ बहुविषयक अनुसंधान की गुणवत्ता और परिणामों में उत्कृष्टता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। नहीं, गड़बड़ाया था। हाँ ठीक है, अब जुड़ गए हैं। हाँ, अब जुड़ गए। एनआरएफ देश के औद्योगिक विकास और व्यापार समुदाय की आवाज कहे जाने वाले संगठन फिक्की और CISL के सहयोग से उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करके उद्योगों की जरूरतों का शीघ्र और समय पर समाधान भी करेगा। एनआरएफ निष्पक्ष रूप से लैंगिक समानता का प्रतिनिधित्व करेगा तथा बहुसंस्थागत अनुसंधान परियोजनाओं में महिलाओं की उचित भागीदारी भी सुनिश्चित करेगा। एनआरएफ अनुसंधान परियोजनाओं के चयन में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली मानकीकृत समीक्षा प्रणाली को अपनाने की पहल करेगा। नंबर अगला है 7वां, एनआरएफ जीवन के सभी क्षेत्रों के शोधकर्ताओं को अनुसंधान विषयों क्षेत्रों का चयन करने में मदद करने के लिए एक केंद्रीकृत अनुसंधान डेटाबेस प्रदान करेगा ताकि अनुसंधान विषयों का दोहराव दोबारा नहीं हो पाए। एनआरएफ सभी अनुसंधान क्षेत्रों के शोधकर्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एक खिड़की समाधान प्रदान करेगा। NEP 2020 में 4 साल के डिग्री प्रोग्राम की शुरुआत काफी मददगार साबित होगी क्योंकि फाइनल ईयर के छात्रों में रिसर्च माइंडसेट डेवलप करने के लिए 1 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। इसे एनआरएफ में परिभाषित किया गया है। इसका जो मेरा ये टाइटल है उसका निष्कर्ष है सर कि एनआरएफ भारत के अनुसंधान और नवाचार समुदायों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है।
एनआरएफ के पास भारत की अनुसंधान क्षमता और उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने और देश को आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने की क्षमता रखता है। एनआरएफ से शोध और नवाचार में वैश्विक नेता बनने के भारत के प्रयासों में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। एनआरएफ भारत में अनुसंधान और नवाचार के लिए अधिक अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करेगा और दुनिया भर के शीर्ष शोधकर्ताओं को आकर्षित करने और बनाए रखने में भी मदद करेगा। एनआरएफ अनुसंधान और नवाचार के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। एनआरएफ भारत के अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। एनआरएफ में भारत के अनुसंधान परिदृश्य को बदलने और भारत को आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करने की क्षमता है। थैंक यू सर। हेलो। अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका, टॉपिक भी अच्छा लिया आपने। हाँ थैंक यू मैम, थैंक यू। हो गया आपका प्रेजेंटेशन? हाँ जी सर। चलिए धन्यवाद। ठीक, और ये मनोज शर्मा जी थी। ये हाँ, मनोज जी शर्मा जी चलिए। जी, भारत हाँ में बढ़ावा देने में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की भूमिका, एनआरएफ की क्या रोल सर है? कोई मेरे लिए कोई सजेशन सर फॉर दिस सर? मैं बहुत सुन ही नहीं पाया हूँ, बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन कॉन्फ्रेंस अश्विनी सर ने पूरा सुना है। सर कुछ कहना, अश्विनी सर कुछ कहना चाह रहे हैं। अश्विनी सर जी, जी। आपका जी। हाँ अश्विनी सर आप अनम्यूट करिए प्लीज। इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, एज यूजुअल यहाँ के स्टूडेंट देते हैं। जो Thank इसमें you, sir. दो चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक तो 0.69% जो है जीडीपी का ये भारतवर्ष जी, में सर। और मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैं भी रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च कर भी रहा हूँ कि हमारे को लेटेस्ट लिटरेचर की एक्सेस नहीं होती। हाँ, जो भी जी, सर। इंफॉर्मेशन आती है, जैसे वीकली साइंस और ये नेचर मैगजीन आती है, तो और जो भी विदेशी मैगजीन है उनके इतने ज़्यादा चंदे हैं कि हम उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से एक्सेस नहीं कर पाते, नंबर 1। सेकंड जी। फैसिलिटी है कि हमारे राजस्थान में भी अनाउंसमेंट हुआ था कि एक बायोटेक्नोलॉजी की लैब या बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी खुलेगी। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली आज का जो अनुसंधान है वो इक्विपमेंट बेस्ड अनुसंधान हो गया है। अगर आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो कि मैं कहना चाहूँगा कि विकसित देशों के पास हैं, तो आपके अनुसंधान का कोई महत्व नहीं है। तीसरी जी, बात सर। यह है कि जो हमारा प्रकाशन है, प्रकाशन में हमेशा हम इम्पैक्ट फैक्टर की बात करते हैं, हमारा विदेशी इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। इसकी जगह हमको देशी इम्पैक्ट फैक्टर डेवलप करना चाहिए और अपने को गर्व महसूस करना चाहिए हम भारतीय पत्रिकाओं में भारतीय भाषा में पब्लिश करें। जी, सर। अभी हिंदी का लेक्चर दिया था आपने, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे। और हमने एक जर्नल निकाला था राजस्थान में, उसमें हर एक व्यक्ति को अपने आर्टिकल का हिंदी में एक पैराग्राफ देना आवश्यक था, ताकि उसको हिंदी भाषी लोग भी जाने। हमारे जो ज्ञान का फायदा है वो हिंदी भाषी लोग या रूरल व्यक्तियों को नहीं मिलता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी तरह से हिंदी का भी उपयोग विज्ञान में हो, लेकिन साथ के साथ अच्छी लेबोरेटरी हो। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके जो ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रमोद राघव जी के अंडर में जो रिसर्च होती है बहुत ही उच्च कोटि की रिसर्च है, और मैं राघव जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैंने खुद भी उनकी लेबोरेटरी देखी है और रिसर्च क्षमता है उसमें, और आगे के दिनों में हम इनको भी सुनेंगे। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था मनोज जी, आपको बधाई हो। और आपके जो डायरेक्टर साहब हैं मंजू शर्मा जी, उनको भी बधाई हो। धन्यवाद सर। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा, सर। आप देखिए, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जैसा कि अश्विनी कुमार सर ने बोला कि हिंदी को महत्वता देनी चाहिए, इसके साथ साथ ही अभी यूजीसी ने ये भी गाइडलाइन इशू कर दी है कि लोकल लैंग्वेजेस को भी हम इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ा सकते हैं और स्टूडेंट लोकल लैंग्वेजेस में आंसर दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लोकल लैंग्वेजेस में भी रिसर्च पेपर छपेंगे और रिसर्च उन लैंग्वेजेस में भी होगी। तो ये कहना चाहता था। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हो गया। आपका टाइम ओवर हो गया है। 4 मिनट एक स्कॉलर को दिया जा रहा है, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। कविता भारद्वाज।
कविता भारद्वाज, नेक्स्ट स्कॉलर। कविता भारद्वाज जुड़ी हुई हैं। टेक्निकल टीम प्लीज कंफर्म हु इज कनेक्टेड। कविता भारद्वाज। सर कविता भारद्वाज सर अभी जुड़े भी नहीं है हमसे। अभी ये कौन जुड़े? एजुकेशन मास्टर कौन है? हम लोगों के पास सूचना नहीं आ रही है। आई होप जी सर मनोज कुमार शर्मा। सर मनोज कुमार शर्मा जुड़े हुए हैं सर अपने से। ये मनोज कुमार शर्मा दूसरे हैं? जी सर। चलिए तो आप प्रेजेंटेशन। सर मैं मनोज कुमार शर्मा। हाँ ठीक है, चलिए आप हिंदी स्कॉलर। हाँ ठीक है, शुरू करिए। मनोज। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आ रही है आवाज। आप दिख रहे नहीं हो। मेरे से बोले हैं कि जीमेल पे आपको लिंक खोलो, जीमेल पे खोलो यार उठ गया। मुझे जीमेल पे लिंक नहीं है वहाँ, मैं है आप तो अपना को बोलो नहीं यार, गया कुछ नहीं ये है। अब ये तो है कहीं जाऊँ क्या जाऊँ अभी तो है कहाँ पे वो बोलो ये है कहाँ पे अभी देख रहा हूँ हेलो जी, आपका अगर हो जाए तो लेफ्ट क्लिक करना, मैं इसी से ऐड हो जाऊंगी। सब काम हेलो सर, अब वो नहीं बोलेंगे तो अब आपके पास मैसेज आएगा कि उनका आप कंटिन्यू बोलते रहो। बोलो मैसेज नहीं आएगा, ये नीचे आएगा तो आप हम सुन रहे हैं, आप कंटिन्यू चल रहे आप वाले से ही जो करवा देना। अरे रुक जा, इनका भी हो गया। नेटवर्क का इशू पता नहीं क्या कर रहा है, और the team that is situated there is supposed to do some better work. I don't know why they are not coordinating well. Technical team, please connect to Kavita Bhardwaj and Manoj Sharma. ममता कुमावत, भावना चित्रलांगिया, चंदा कुमावत, दिलीप पारिक, भक्त सर, तब तक आपसे निवेदन है कि कुछ हम लोगों को तब तक ज्ञान दीजिए। बीच में ज्ञान, अरे हम लोग सोच रहे थे कि शोधार्थी लोग जो पढ़ेंगे तो उससे हम लोग का भी ज्ञान कुछ बढ़ेगा। हम लोगों का ज्ञान तो बहुत पुराना हो गया है। वो लोग जुड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं। ममता कुमावत, हाँ, एक ममता। टेक्निकल टीम से निवेदन है कि कम से कम 2 प्रेजेंटेटर को जोड़ के रखिए नेटवर्क से ऑलवेज। ममता कुमावत आ गई स्क्रीन पर। चलिए ममता जी, स्वागत है। जी सर, जी सर। कमला जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अब आप अपना प्रेजेंटेशन दें। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। जी सर। सर मेरा टॉपिक है सर छायावादी कार। ममता जी, आपके पास 4 मिनट का टाइम है, जल्दी बताइए। हेलो हेलो। हाँ ममता जी, आपको 4 मिनट का टाइम दिया गया है।
प्लीज कैसे पता चलेगा? बोल रहे हैं शुरू करिए। बोलो ना। आप पागल हो क्या? बोलो कैसे दूसरा आदमी बोल रहा है? जी सर। प्रेजेंटेशन दीजिए ना। सर बस हो रहा है सर। अरे हेलो। जी हाँ दिख रहा है। ममता कुमार जी आपका स्लाइड स्लाइड दिख रहा है। जी दिख रहा है। चलिए आप प्रेजेंटेशन दे दीजिए प्लीज। जी सर। हाँ जी सर, मेरा टॉपिक है। जी सर, छायावादी काल के प्रमुख कवि व उनका साहित्य क्षेत्र में योगदान। स्टार्ट करो। बोलिए ममता जी प्लीज। ममता कुमार जी आप अपना प्रेजेंट करिए ना। हुई भावात्मक दार्शनिक अनुभूति और आवाज क्लियर कीजिए। विशेष कुछ नहीं आ पा रहा है आवाज। जिसमें आवाज ही नहीं उनकी आ रही है सही। ममता जी आप सुन पा रही हैं? ममता जी की आवाज हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, वो बोल ही पा रही हैं, नहीं आवाज नहीं मिल रही है हम लोग को। छायावादी काल के एवरी लीव पे प्रमुख भी कुछ गलत ही तरीके से लिख रहा है। पासवर्ड मांगते बार स्टार्ट अगेन छायावाद का दिलीप सर यू आर लिसनिंग अस? Yes. Now, yeah. Can I start? Yes, हाँ जी सर। टेक्निकल Should I unmute or mute? टेक्निकल टीम इस प्रेजेंटेशन को हटाइए। कर्नाटक से प्रेजेंटेशन होगा, वो सुबह से जुड़े हुए हैं। यस सर प्लीज। आप थोड़ा देर वेट करिए ममता जी, वेट करिए थोड़ा देर प्लीज। हेलो। यस हेलो। या दिलीप गिरी सर प्लीज। ममता जी थोड़ा देर वेट करिए। Dileep Giri sir, you please unmute yourself. You are muted again. सभी की हेलो। प्रॉब्लम आ रही है। यस मनोज। Yes. नहीं सभी नहीं। Hello, are you getting? Manoj Yes, sir, yes. are you getting me? Yes. Am I audible now? Yes, Yes, now you you are are now. audible. Please Yes. continue. Please continue. Okay. Good morning, sir. Good morning, everybody. Good morning, Chairman sir, and everyone present in this conference. First of all, I should apologize for this in my present. There was I think, some problem in the Wi-Fi that I'm staying in Mumbai now, and in the internet was very poor. Anyway, so can you hear? Am I audible? Yes, yes. Am I audible? Yes, हाँ बोल रहे हैं, Okay. सुनिए आप। Straight going to the topic. Hear you.
the topic is very important for us. That is catalyzing the on the new national education policy. The topic is catalyzing the research in academics, multidisciplinary research, and the research foundation. I should take directly to the multidisciplinary approach to education. Friends, if you go back to our ancient time, ancient India, that the university like Nalanda, Taxila, Ujjain, and Bikramshila, all the universities, they were propagating the multidisciplinary approach. Therefore, the scholars from different countries, even if that time there was communication was a very big problem, but the scholar like Pahin, Huensang, they came to India to study in the universities. So multidisciplinary approach is not a new concept that has been introduced in that NEP document or policy, but exactly it is in the root of our national historical character. So for some time, that the Britishers, they did a lot of problems for our national education system, and they brought the that English education to the grassroots, and which is now to be addressed through the national policy of education, and the policy has therefore very emphatically told about the interdisciplinary approach, right, with other things that everybody has told now. All the speakers have been telling about a lot of things about the national policy of education, its characteristics, its features. So one of the features, as we are discussing, is the interdisciplinary approach, right? How we can introduce this interdisciplinary approach in the curriculum of our university, mainly higher education. I am just talking about the higher education. Now, that now the disciplines are not united. They are compartmentalized. They are, that fall apart. If I talk to a engineering graduate, what you know about psychology, he will not tell about anything. If he asks about to a medical graduate, right, what you know about sociology of human sciences, he may not tell. And in this way, a humanities student cannot tell about the engineering education, about the science education, about mathematics education. So this is the problem of our, our graduates who are graduating from the universities. Their education is not being completed holistically. If we go back to our ancient scholars, our Swami Vivekananda, that Aravinda, these people have told about holistic education, interdisciplinary education. Swami Vivekananda has told, about the holistic education. Swami Aravinda has told about the integral education. So integral education means that to integrate our, our cognitive, affective, and psychomotor domains together, so that we can produce holistic human being for the future society. So I can tell you my experience in the university. I was working in United Arab Emirates before some years. So I was asked by the Dean of Faculty of Medicine, "Sir, can you take some classes in medicine?" I was thinking he was just joking. He told me, "Sir, you are a professor of education. You know how to teach the students, methodology. And in our medicine, there is a paper, there is a course called medical ethics, medical psychology. So can you, sir, and behavioral science. So since you have been teaching psychology, means educational psychology, for a long time, so can you teach it?" I understood this is a kind of multidisciplinary approach to education. I was very afraid to teach the medical students. Friends, can you hear me?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So then I was very upset because I am a humanities student of humanities background. I did my all that PG, PhD, MPhil, everything from the education background. So how can I teach the students of medicine? So I thought to research on this, and there I got to know that there is a integration between the discipline and discipline. The medicine students should know the behavior of the patient, the psychology of the patient, so that they can treat them better. They can do better diagnosis if they can understand the behavior of the patient. So you know that you will not believe, when I went into the class, there are 80 country students sitting in the class, and they are third MBBS students. So I started teaching. I started storytelling method. I told them stories from the human behavior, and it was going so well that I could teach. It was a 1 hour class, but I could teach my friends about 2.5 hours. And similarly, I could take the classes of dentistry, pharmacy, nursing, imaging science, radiology. Since it was a medical university, so all the branches of medicines and pharmacy, dentistry, nursing, physiotherapy, I could teach this paper to every department, every student. I was the director of quality assurance research there. It is a non-academic department. I was looking after the quality of the department of the university, full quality. But when the university leaders, they requested me to teach the students. So I understood that this is one of the very important experience in my life. And this is called multidisciplinary research. That means I am a student of education. I study psychology of education, sociology, comparative education. Dr. Dilip, please come on the Yes, sir. point, because we have very less timing, and there is a very big, long list of. I am going to wind up because only one is important. That is, there is one illustration is important for you, for the student also. So मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है, और इसमें टीचर्स को, आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट के टीचर्स को आपका साथ में होकर पढ़ाना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को यूनाइटेड होना है. जैसे कि स्टेम, आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, राइट, ये सब चीज को ह्यूमैनिटी स्टूडेंट जो है उनको भी जानना जरूरी है. तो क्या होगा ना, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, क्रिएटिव डेवलपमेंट होगा, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये डेवलपमेंट होगा. तो ये सब इंपॉर्टेंट है. ऐसे हम लोग वी स्टार्टेड इंटर डिपार्टमेंटल सेंटर इन द यूनिवर्सिटी, जहां सभी डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम करें. नाउ आई एम वर्किंग इन कनाडा इन ए यूनिवर्सिटी, so there also we started this type of interdisciplinary approach. Means the people of engineering, people of medicine and dentistry and pharmacy, they will know about the sociology, psychology, you know, that all the culture, tradition, our language. So हमारे जो आपका जो NEP जो 2020, ये आपका इसके ऊपर बहुत ही बात किया है, जिसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि आपने जब भी कोई भी डिपार्टमेंट के, यू आर फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, राइट, सो टेक इंटरेस्ट इन अदर डिपार्टमेंट आल्सो. नाउ तो देयर इज यू कैन एग्जिट, यू कैन एंटर इन, यू कैन एग्जिट. A student of MBBS can also study history, right? At the same time, you can take. So this, if it is coming full-fledged implementation of the interdisciplinary approach, interdisciplinary research, right, interdisciplinary education, so it will be giving a very nice outcome to our students, to our society, I am telling. So sir, I am now winding up. As you told that there is less time, is it okay? Or I have little more time to speak? धन्यवाद दिलीप साहब. If you give me 5 minutes, then I can also continue.
No, sir. Sorry, we have some other participants also. They are waiting for their presentation. Thank you very much for your very energetic and very informative presentation. And please stay with us. We can think. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. So, धन्यवाद डॉक्टर दिलीप जी को. Thank you very much. Thank you. Technical team, please. thank you, sir. Thank you very much. To Mamta Kumawat. I must give my Mamta Kumawat, Kavita Bhardwaj. high regards to the management of the university, the chancellor, the chairman, the CEO, all the professors. Thank you very much. Next presentation, please. Next presentation. I hope UG students are planning to give their presentation. इस सेशन में हिंदी का ही प्रेजेंटेशन होना है, ये चीज का ध्यान रखेंगे प्रेजेंट करने वाले प्लीज. आपका पेपर अगर हिंदी से रिलेटेड है तो आप इसमें प्रेजेंटेशन दीजिए. जल्दी प्लीज. ज्यादा समय नहीं लें. 11:30 तक अभी हमारा जो सेशन है उसमें एजुकेशन एंड हिंदी, हाँ एजुकेशन से रिलेटेड भी पेपर आ सकते हैं प्लीज. दिख नहीं रहा है पीपीटी. ये बार बार टाइम ज्यादा समस्या बन रही है उन लोगों की. Please start your presentation. Ananya. अनन्या शर्मा. सर इंग्लिश में प्रेजेंटेशन है मेरी, हिंदी में नहीं है. चलिए आप इंग्लिश में ही दीजिए, नो इशू. बात सर अंग्रेजी में भी बढ़िया से समझते हैं. टॉपिक क्या है इनका? सर ममता कुमावत जुड़े हैं अपने से. ममता कुमावत जुड़ रही है? हाँ जी सर. हाँ तो ममता कुमावत दे दें प्रेजेंटेशन. जी सर. हाँ जी चलिए शुरू करिए. शुरू कीजिए ममता जी. आप पहले अपने पीपीटी में देखिए, पहले अपना फर्स्ट स्लाइड दिखाइए. ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और पूरी दुनिया इसको देख रही है. फर्स्ट स्लाइड पर आइए. आप हिंदी के स्टूडेंट हैं? फर्स्ट स्लाइड. और प्रस्तावना गड़बड़ हो रही है. नहीं, फर्स्ट स्लाइड आइए. फर्स्ट स्लाइड.
छायावादी काल के प्रमुख देखिए कैसे आपने लिखा है, 76 कैसे लिखा है, 76। आप इस तरह से करेंगे तो कैसे चलेगा? आप हिंदी की स्कॉलर हैं। ये हिंदी की शोधार्थी हैं। जी जी जी, ठीक है। हाँ, आपको तो टाइप होगी, लेकिन जो टाइप किया है उसको तो आप बता सकते हैं। नहीं, चलिए आप प्रेजेंटेशन दे दीजिए। हाँ, आप तो स्लाइड हटा के ऐसे ही पढ़ दीजिए, आपको क्या बोलना है बताइए वैसे प्लीज। ही पढ़ दें, अच्छा होगा। हाँ, आप इसको हटा दीजिए और पढ़ दीजिए, क्या कहना है जी बताइए। सर, प्रस्तावना इसको हटा दीजिए स्लाइड को। हाँ, ये सब गलत लिखा हुआ है, प्रस्तावना है। आप आपके पढ़िए। अंदर भी बहुत मिस्टेक है, तुम वैसे ही बता दो। हाँ हाँ, पढ़ देना, अपने टेक्स्ट को पढ़ दें। फिर आवाज गायब हो गई इनकी। सर मैं दे रही हूँ प्रेजेंटेशन। समय बहुत खर्च हो रहा है। 11:30 में ये सेशन ओवर हो जाएगा। उसके बाद कोई हिंदी के शोधार्थी या एजुकेशन के ये नहीं कहेंगे उनका प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, प्लीज। अब मात्र 6-7 मिनट बचे हुए हैं। होगा, उनके एक्सपर्ट्स को जोड़ा जाए प्लीज। टेक्निकल टीम स्टार्ट करिए। चंदा कुमावत जी हमारे यहाँ हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये नेट क्वालिफाइड हैं और ये हिंदी पढ़ाती हैं, और कॉन्फ्रेंस के इस तैयारी में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके साथ सपना मैम, संध्या मैम और बाकी सालवी मैम, ये सारे यहाँ के जितनी मैडम लोग हैं सबका काफ़ी योगदान रहा है। तो अभी ये खुद अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए आई हैं। सर नमस्ते। जी नमस्कार। नमस्कार सर नमस्ते। ऑनरेबल CEO एंड एडवाइजर सर एंड रजिस्ट्रार मैम, डीन सर, डायरेक्टर मैम, ऑल अदर गेस्ट फैकल्टी मेंबर, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा टॉपिक है, मैं ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी से जयपुर से हूँ और मैं यहाँ, मेरा नाम चंदा कुमावत है, मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूँ। और सर मेरा टॉपिक है आज का, बोलते चलिए चंदा जी। सर हाँ जी, स्लाइड हाँ, आप बोलते जाइए। सर मेरा टॉपिक है, बोलते चलिए ना। आप स्लाइड के लिए मत रुकिए, आप बोलते चलिए। सर हिंदी भाषा का क्षेत्रीय भाषाओं में योगदान, जो टॉपिक है आज का मेरा, इसका सार है। भारतीय जो भाषाएं हैं उसकी दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तकनीकी और डिजिटल दोनों माध्यमों को जोड़कर भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयात्मक बनाया ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन के प्रयास भी किए जाएंगे। सर मैं सार को थोड़ा शॉर्टकट में बता देती हूँ। इसमें है मेरा ये सार कि अपनी जो हिंदी भाषा है उसका जो क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर किस प्रकार से उनको अलग अलग डिवाइड किया गया है और स्थानीय भाषाओं का क्यों महत्व है, इसमें ये बताने का मैंने प्रयास किया है। फर्स्ट है सर, इसमें जैसे मातृभाषा होती है अपने बच्चे के लिए, वो एक जिस प्रकार माँ होती है बालक के विकास के लिए आवश्यक होती है, उसी प्रकार उसकी जो भाषा मातृभाषा है वो माँ के मुँह से सुनता है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहकर सुनता है। इससे उसका विकास काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे कि वो अपने आसपास के वातावरण को समझता है और सीखता है। बिना किसी भाषा को रटे हुए वो आराम से बोलता है और आराम से सीखता है। तो अपने जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसकी प्रस्तावना में आधार पर मैं बताना चाहूँगी कि इसमें जो है कक्षा 5 तक में मातृभाषा को एक या स्थानीय भाषाओं को उन्होंने एक अपनी शिक्षा में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहन दिया है कि कहा है कि अगर बच्चे की 5वीं तक की कक्षा के अंदर प्रस्तावना अपनी ये स्कूली शिक्षा में मातृभाषा का विशेष स्थान रहेगा तो वो स्थान बालक के विकास को एक सर्वांगीण रूप से परिपक्व होने में महत्वपूर्ण रहेगा। सर इसमें कक्षा ये क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं अपने अलग अलग हो सकती है अलग अलग क्षेत्र की, लेकिन मातृभाषा अपने परिवार के, अपने माता के मुख से और अपने सदस्यों के रहने वाले आसपास के समाज के द्वारा ही सुनी जाती है और बोली जाती है। NEP 2020 के अंदर उसमें बताया है कि जो भाषा जैसे अब अंग्रेजी भाषा है या अन्य फ्रेंच लैटिन कोई भी भाषा है उनको हम पढ़ते हैं और सुनते हैं तो वो हमें एक रटने के लिए करना पड़ता है या किसी दूसरे को समझाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहकर एक हिंदी भाषा को अगर किसी से इंटरेक्ट होते हैं या कनेक्ट होते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि हिंदी भाषा को समझने के लिए भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। तो मैं इस NEP 2020 का क्षेत्रीय भाषाओं में योगदान के आधार पर बताना चाहूँगी कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें कक्षा 8 के बाद मातृभाषा और स्थानीय भाषा के उपयोग पर जोर दिया गया। साथ ही 8वीं तक की कक्षाओं में भी इसको आगे तक जारी रखने के लिए सिफारिश की गई थी। त्रिभाषा सूत्रों को अभी हमारे NEP 2020 में स्थान दिया गया है, जिसमें अपने संस्कृत है, अंग्रेजी है और हिंदी भाषा है। एक क्षेत्रीय भाषा होने की संभावना सबसे अधिक होती है। ये नियम निजी और सरकारी स्कूल दोनों में लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे केवल इंग्लिश का ही मीडियम रहेगा तो वो बच्चे के लिए एडमिशन के लिए भी और उसको एक कंफर्टेबल होने के दोनों के लिए ही उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोनों माध्यमों को हिंदी में और इंग्लिश दोनों माध्यमों में अपने निजी और सरकारी स्कूलों में ऐड करने के लिए NEP 2020 में सिफारिश की गई थी और उसको लागू करने का प्रयास किया गया है। सर शिक्षा में क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व है। मातृभाषा में परिचित होने के कारण माता पिता की भागीदारी और अध्ययन में समर्थन में सुधार आता है, जैसे कि क्षेत्रीय भाषा बोलियां समृद्धि और विविधता को जोड़ती हैं। स्थानीय भाषा सीखने के बेहतर परिणामों की ओर ले जाती है, सामाजिक एकता को बढ़ावा भी मिलता है। क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल उस भाषा के लिए किया जाता है जो बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में संचार की वास्तविकता की भाषा नहीं है। एक भाषा जो क्षेत्रीय तत्व मानी जाती है ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है। भागीदारी की उचित दर मूल भाषा के अध्ययन करने पर ही छात्रों को उच्च स्तरीय प्रेरणा न बोलने के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। सर किसी भी भाषा को सीखने के लिए या उसका सीखने के लिए जो दुविधाएं होती है या चुनौतियां होती हैं वो इस प्रकार हैं। जैसा कि सर जैसे दुविधा होगी कि जैसे अगर कोई भाषा समझ नहीं पा रहा है, दुविधा होगी उसके आसपास के आवास का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का है, ये सब अपने दुविधाओं को व्यक्त करती है। जैसे किसी स्कूल के अंदर को टीचर है वो किसी अन्य स्थान से है और उसको समझाने के लिए हिंदी है, तो उसके बोलने के टोन में और उसके समझाने के तरीके में दोनों में परेशानी होगी। तो अपने स्तर के आधार पर अपने क्षेत्र के टीचर्स को वो अपने स्कूल में रखें ताकि उनको बच्चों को सीखने में आसानी रहे और उनके भावों को समझने में आसानी रहे। सेकंड है कि उनके जैसे है कि ना महंगी शिक्षा की कुछ शिक्षा जैसे महंगी ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं अभी इसमें RTE ने 25% का डिस्काउंट दिया है, 25% डिस्काउंट दिया ताकि जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। अंग्रेजी शिक्षा सर अधिक ज़्यादा खर्चीली होने के कारण लोगों को सभी तक की प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं उनके पेरेंट्स। इस वजह से सभी स्कूलों में जैसे महात्मा गांधी स्कूल वगैरह स्टार्ट किए गए हैं उनमें भी अंग्रेजी शिक्षा को और हिंदी माध्यम दोनों को ही स्थान दिया गया है।
सर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य तथ्य होंगे, इसमें 1968 में बनाई गई थी नीति, उसके बाद 86 में, और समय के आधार पर इसमें संशोधन किया गया है। वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति की रिपोर्ट पर आधारित की गई है। 2020 के तहत 2030 तक सकल इसका जो अनुपात है 100% लाने तक का लक्ष्य रखा गया है। ये नीति जो सर है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। पहले मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय इसका रखा गया है। सर, इसका निष्कर्ष है कि अपनी क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उसके आधार पर माता पिता जो हैं उनके बीच में एक अच्छा उनका संबंध स्थापित होता है। बोलने से समाज में एक दूसरे के प्रति समन्वयता बढ़ती है और साथ ही देश के लोगों में आपसे अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। इस प्रकार जो अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं और मातृभाषाएं हैं, वो अपने संस्कारों के साथ साथ हमारी एक संस्कृति जो विलुप्त हो जाती है, कोई भी भाषा है उस संस्कृति को एक स्थान से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए भी विशेष महत्वपूर्ण होती है। सर, मेरा टॉपिक आज का यही था। धन्यवाद। बढ़िया ममता जी, आपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया और क्षेत्रीय भाषा हिंदी दोनों के विषय में आपने बढ़िया अपनी बातें रखी हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अच्छा प्रेजेंटेशन था। धन्यवाद सर। मैं अपनी फैकल्टी की तरफ से भी और सारे शिक्षकों की तरफ से भी नंदा जी, कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये जो सत्र है जो अब समाप्ति की ओर है, आपने जितने भी टेक्निकल पेपर्स का प्रेजेंटेशन सुने, इसके बारे में आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स हमें चाहिए। तो आपसे निवेदन है, कृपया इस सत्र के बारे में आप अपना विचार व्यक्त करें। ओवर टू परमेश्वर भक्त जी। जी, मुझको बोलना है। जी। सबसे पहले मैं इस सत्र में जुड़े हुए डॉक्टर वोहरा साहब, डॉक्टर दिलीप साहब और अन्य जो वक्ता आए, जो बीच में इंटरेक्शन में भी आए, उनका मैं धन्यवाद भी करूंगा कि आपने इस सत्र को ज़्यादा ही सार्थक और परिणाम तक पहुंचाने वाला सिद्ध किया है। दरअसल यह जो आभासी पटल है, इसमें तकनीकी बाधा कई बार आती है, जिसके कारण बातों का वह आनंद नहीं हो पाता, मिल पाता, या सारी बातें उस रूप में पहुंच नहीं पाती जिस रूप में आमने सामने की बात होती है। बावजूद इसके आज के समय में न्यूयॉर्क, शिकागो या मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में बैठे हुए लोगों से एक मंच पर जुड़ने का यह जो अंदाज है, जिसका आयोजन ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय ने किया है, उसके लिए इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, वह कम है। दरअसल आज का जो हमारा विषय था वह शिक्षा और हिंदी से संबंधित था। अभी ममता जी ने अपना पत्र पढ़ा है और उसमें बतलाया है कि किस तरह से माँ की गोद से जिस भाषा का हम अनुशीलन करते हैं, सीखते हैं, उसमें हम जल्दी अपने को अभिव्यक्त कर पाते हैं। दरअसल ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसका पूरा का पूरा संकल्प भाषाई अस्मिता और उसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों के विकास से संबंधित है। यह जो नई शिक्षा नीति है, उसमें इस बात की चिंता की गई कि विगत 50 वर्षों में देश की 220 भाषाएं लुप्त हो गईं और यूनेस्को ने जो एक आंकड़ा दिया, उसके अनुसार 197 भारतीय भाषाएं लुप्त प्राय घोषित हो चुकी हैं।
सुनने में यह सामान्य बात है कि भाषा लुप्त हो गई, लेकिन सच्चाई यह है कि भाषा हमारी संस्कृति, हमारा जीवन, हमारे समाज और हमारे मानसिक नैतिक विकास के मानदंड को घोषित करती है। अभी चर्चा हुई थी और अब भी हो रही है कि अंग्रेजी अनिवार्य क्यों या अनिवार्य रहे या नहीं रहे। वास्तविकता यह है कि हमारे साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी रहना चाहिए, फ्रेंच का ज्ञान होना चाहिए, जो चीन की भाषा है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमारे जो अपने घर की भाषा है, जो हमारी हिंदी है, और कुमावत जी ने इस बात की ओर संकेत किया है, जैसे मैथिली है, बज्जिका है, भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी है, राजस्थानी है, ये सारी भाषाएं ठीक है, बोलियां अलग अलग लगती हैं, लेकिन इन सबके शब्द जो हैं हिंदी के ज्ञान कोश को ही समृद्ध करते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा भी है। देश के अधिकांश लोग इसको बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। लिखने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन बोलने वाले उससे ज्यादा हैं, समझने वाले उससे ज्यादा हैं। तो हमारे घर में एक अतिथिशाला भी हो, हम उसका सम्मान भरपूर करें, लेकिन अपने घर की जो माँ है, हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो अपनी राष्ट्रीय भाषा है, उसका हम सबसे पहले, यानी अपने घर में दिया पहले जलाएंगे, फिर दूसरे के घर को भी हम रोशन करेंगे। तो आज का जो यह शिक्षा और हिंदी संबंधित जो कॉन्फ्रेंस का थीम था, विषय था, इसके माध्यम से हमको यह जानने सीखने का मौका मिला है कि अगर अपनी भाषा में शोध हो, अपनी भाषा में पुस्तकें लिखी जाएं, तो हमारा भी सम्मान बढ़ता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, क्योंकि भाषा हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और हमारी पहचान से जुड़ी वस्तु है। यह सिर्फ लिपि और अक्षर नहीं है, यह सिर्फ वाक्य और ये नहीं है, बल्कि ये इसमें हमारे हृदय के उद्गार अभिव्यक्त होते हैं। इसलिए हमको अपनी राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी और उसके साथ साथ जितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे जुड़ना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए। उनकी शब्दावली है, उनका जो ज्ञान है, उसका हमको अनुवाद करना चाहिए, और इस रूप में हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को भी समृद्ध करें, जीवित करें, और हमारी जो राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सबल करें। विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से हम इसको ज़्यादा दूर तक ले जाएं। हमारी पुस्तकें, हमारा विज्ञान, हमारा चिकित्सा शास्त्र सब हिंदी के माध्यम से आ जाए तो हमारे लिए, देश के लिए यह ज़्यादा कल्याणकारी होगा। एक बार मैं पुनः ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के फाउंडर, ऑनरेबल फाउंडर से लेकर जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, और इस कार्यक्रम में देश विदेश से जुड़े हुए जितने भी विद्वान आए हैं, जितने भी शोधार्थियों ने अपना पेपर प्रेजेंटेशन किया है, उन सब का मैं एक बार आभार भी व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातें, जिसमें राष्ट्रीयता की बात आती हो, अपनी पहचान की बात आती हो, ज्योति विद्यापीठ जो ज्योति को जगाने के लिए, जलाने के लिए, दूर दूर तक प्रकाश फैलाने के लिए एक तरह से कृत संकल्प है, और कहें कि देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने महिलाओं के सशक्त विकास के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो एक बार मैं आभार भी व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। और डॉक्टर शोभा लाल जी जो मेरे शिष्य भी रहे हैं और आज ज्योति महिला विद्यापीठ के एक शीर्ष और इंटरनेशनल लेवल पर जाने वाले एक विद्वान हैं,
उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, उनको आशीर्वाद देता हूं कि वे इस तरह के कार्यक्रमों का निरंतर अपने विश्वविद्यालय में आयोजन करते रहें, ताकि विश्वविद्यालय पूरे विश्व को अपनी ज्योति प्रदान कर सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। शिष्य तो हमेशा शिष्य ही रहेगा और आप आशीर्वाद देते रहिए। हम लोग विश्वविद्यालय के सशक्त सिपाही हैं और उस भूमिका में हम अपनी सेवाएं देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सत्र को इतने अच्छे दिशा दिए और निश्चित रूप से आप प्रेरणा देते रहिए, विश्वविद्यालय को आते रहिए और प्रेरणा देते रहिए। हम आपके इस मार्गदर्शन और आपके इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं आपका। आयोजन समिति की तरफ से, विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं और इस उम्मीद से हम आपसे फिर से आपको विदा करते हैं कि हम फिर आपसे मिलेंगे नए कार्यक्रमों में। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। And now it is time to start our 5th session of the conference, and that is scheduled from 11:30 a.m. to 1 p.m. And in this session, we are taking history, geography, and English. And for this specific session, we have session chair Dr. Bipin Sharma ji, who is the Director Planning and Development Unit, English Language Institute, Jazan University, Jazan, Saudi Arabia. And he is connected with us. So, Dr. Bipin, sir, welcome. Welcome. And our another expert, who is Dr. Kamal Singh, based from the Department of Geography, DVS PG College, Dehradun, is also connected with us. Welcome, Dr. Kamal. Namaskar, sir. Welcome. And some other experts who may join this session, who is Professor Ravindra Kumar Mohanty, Professor at Mizoram University as well, and Dr. Manish Verma, Dean Faculty of Arts, Head of the Department of English, Sri Rawatpura Sarkar University, Raipur, may join, may not join as per the network connectivity status. So, first of all, on behalf of the whole fraternity of Jyoti Vidyapeeth Women's University conference organizing team and all the participants of the session, and the session is under the kind supervision of Dr. Bipin Sharma ji. So, first of all, a little bit introduction of Dr. Bipin Sharma ji. He is MA in Sociology and English, MPhil in English, PhD in American Literature, PG, DBA, Symbiosis, PG, DBM, B.Ed. He is Faculty and Director, Planning and Development Unit, English Language Institute, Jazan University, Jazan, Saudi Arabia. And in the recent past, Professor Bipin Sharma work has focused on the impact of COVID-19 on students and teachers, with a particular interest in how social institution and academic institution might we equip teachers to work in professional context characterized by rapid changes, complexity, and uncertainties. Professor Bipin Sharma has published more than 80 papers in national and international referred journals, who include Web of Science and Scopus, UGC Care, and others. Conference proceedings and edited books as invited chapters. Additionally, he authored 5 books and edited 10 books. So, over to Bipin Sharma ji for your keynotes, for the participants, for all the scholars, as inspiring words by your sides. Thank you very much, sir, for the wonderful introduction you have just delivered. And at the outset, let me thank the management of Jyoti Vidyapeeth Women University, the organizing team, and each one who is right in front of us or behind the screen for the kind invite, plus the organizing the mega event on this wonderful issue, that is NEP 2020.
So it is my great pleasure to be part of this elite group of intellectuals, and it has the galaxy of intellectuals. I have just listening to the professor, and who is quite eminent is in his field and emphasizing on the mother tongue. And similar to this, there are many domains that are new education policy that emphasize. So basically in the conference, you have rightly picked up or chosen the right domain, and that encapsulates all the aspects, whether it's political, historical, the language, or the science. And we all know that the policy started in, if I am correct, 1986 and modified in 1992. After around 3 decades or so, we could not find an appropriate policy that can define the significant changes that had occurred in the last 3 decades. So therefore, these magnificent or significant change in the society, the economy across the world, that is after 1991, that LPG, we say liberalization, privatization, globalization. So similar to this, educational sector also needs to gear to cater to demands of 21st century, because these demands usually are dynamic, these are evolving, and we have to take care of the needs of the people, industries, and the country as well. So why we talk about this is just to enhance in quality, innovation, research, because the pillars on which our country would definitely we strive to become a knowledge superpower. So when we talk about these foundational pillars, I wrote one book, a couple of years ago. So there are 5 pillars of this NEP policy. That is, first is access, equity, quality, affordability, if I'm correct, that accountability. These are 5 basic pillars of NEP 2020. And briefly, I would just tell about the aims that we are all focusing to discuss today. That is, we want to transform our country education system into modern, progressive, and the equitable one, because it means a lot for us. As well as we would like to improve poor literacy and numeracy outcomes associated with our elementary education, that we call ECCE, that is early childhood care education, and the elementary education. So why we are here? So that we can reduce the dropout levels, what we are seeing over decades in middle and secondary schools. And at the same time, we would like to introduce the multidisciplinary approach in the higher education system that we are witnessing with the conference. And I'm very thankful to the people who conceived this idea, organizing this mega multidisciplinary approach conference. And it does not only lay emphasis on early childhood education, but also it strives to have restructuring the curriculum and pedagogy, examination process, and which is more neglected part, that is teacher education. So therefore, we would like to universalize the early childhood care education to the secondary education. We would like to increase the gross enrollment ratio. And if I'm correct, I studied the data is 20 million students, they are out of school. So we want to bring them into mainstream. For that, we need to prepare our teachers, the management, the institutions to adopt a very flexible policy that can include and to bring inclusive and equitable education policy or system
by 2030. So we should not wait for 2030. Before that, we prepare. And this is the first step that we are taking to get an inclusive and equitable education. Why we want that every child will come out of school, he should adapt in at least one skill. Now I'm just transferring it to the vocational and experiential learning, because we always talk about the 21st century skills. If you talk about 21st century skills, we need technology integration also. That is the most important part that we can have. And when we talk about these century skills, we always talk about life and career skills. We talk about information, media, and technology skills. Sometimes we talk about learning, innovation skills. Sometimes we talk about 4Cs that comprise of communication, collaboration, and critical thinking. But how to attain these challenges? I mean, the NEP aims and objectives. It's very easy to put on papers, to say or to discuss, but when you try to implement, like Jyoti Vidyapith Women University, it strives very hard. I'm just going through. Yesterday also I saw a couple of glimpses of the conference, and today also I attended, and the use of mother tongue, which is emphasized in the new education policy. So how could we see this holistic change in education system of our country? It's not that easy. It is very Herculean task. Challenges are plenty that can be quantitative, that can be qualitative in implementing these what we call reforms. And I'm sure that whatever the challenge we have, in summarized to sum up, that is in the form of curriculum and content, that you might be reframing it, modifying it, and to make sure that your teachers are available with the current skills and knowledge, along with the training, professional development training that we call continuous professional development of the teachers. That teachers should have adequate knowledge about the current technology also, because the students forget about those students what we had in our times. Now you have Generation G, Gen Alpha, and the digital netizens. Those who already have the knowledge of technology, you have to just exploit it, right? You have to tap it. Accordingly, you have to reframe your examination structure, and you have to follow the bottom-up approach. We always have a colonial system of following top-down approach, so we have to change the perception also. We have to open up the system. Universities also see the NEP. If you follow NEP, every week you have to open one university if you talk about 2035. And every week you have to open 50 schools if you want to include all these dropout students. So at the last, I would like to commend and appreciate the efforts of the organizing team and the management, of course, and the advisors also, who have conceived this idea of interdisciplinary higher education, and that it needs a major shift in demands for a cultural shift. You have seen the multidisciplinary means anyone can come and learn the new subject. Now there is a flexible approach has been adopted, and I'm sure we will have the adequate number of resources, capacities, and we will have dozens of mother tongues. And anyone who wants, I was reading the news, if the government has allowed to take exam in any of the languages, right? It will reduce the mismatch between the knowledge and skills imparted and the jobs available. And I'm sure the conference will definitely go a long way to inspire, motivate, care, and teach all of us. So with these concluding remarks, I open up the session for the paper presentation. Thank you very much, sir. Thank you, sir. And let us allow to request for some moment to Dr. Kamal Singh Best, who is from the Department of Geography as a keynote speaker. He is also with us. So I request on behalf of you, Dr. Kamal Singh Best ji, for few words. Sure, sir. Sure. Welcome, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को नमस्कार।
सर मुझे कुछ बोलना है सर? जी 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 जी। एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान में जो परिदृश्य है उस दृष्टि से न्यू एजुकेशन पॉलिसी छात्रों के हित में तो बहुत अच्छी है, ऑप्शन के बहुत अच्छे बच्चों के चांस उसमें हैं, लेकिन सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिन यूनिवर्सिटीज में स्टाफ की कमी है, चॉइस के लिए स्टाफ नहीं है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें जैसी हैं। वैसे छात्रों में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए उत्साह भी है। हम जहाँ नई शिक्षा नीति की बात करते हैं तो हम अपने पुराने शिक्षा पद्धति को भी थोड़ा सा टच कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीजें इसमें है। तो मेरे कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ब्रॉडर वे में बहुत अच्छा है, इस पे चर्चा होगी और बात निकलेगी तो छात्रों के इसमें बहुत अच्छा रहेगा। तो सर मेरा यही कहना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आगे आने वाले भविष्य के लिए काफी अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू। आप बने रहे हमारे साथ इस सेशन में। आप मुझे मीटिंग में Yes sir, yes sir. Yeah, Professor Bipin Sharma ji is chairing this session, and now Neha Sharma, who is the PhD scholar, is coming with her paper. Neha Sharma. Neha Sharma, technical team, please talk to Neha Sharma. She is connected with us. Neha Sharma, Hajra Hublikar. Hajra, you are going to present? Yes, sir. Yes, I am present, sir. Yes. So, may I start? Yes, please. Hajra Hublikar is also PhD scholar in Jyoti Vidyapeeth, Women's University. She is pursuing PhD in English. Okay. Yes, start presentation. Yes, sir. Good morning, everyone. Namaste. I am very happy that I got this opportunity to speak on the behalf of Jyoti Vidyapeeth. Sir, I am sharing my PPT. Yes. Yes, Neha, you are given 4 minutes maximum. Exploring the use of technology in English language teaching. My topic is exploring the use. Hublikar ji, you are given 4 minutes maximum. Are you listening? Yes, unmute yourself. Yes, you are sir, given yes, 4 minutes. Please start presentation. Yes, sir, I can hear you. Yes, abstract. This paper is about technology in English language, that is ELT, and the integration of technology has become as an increasing popular trend in the education, and its potential to enhance language learning has been widespread and recognized. The purpose of this research is to explore the use of technology in ELT and to investigate to impact the language learning outcomes. The study involved a review in the literature on the use of technology in ELT and
on and a survey of teachers and students' perception of the use of technology in their English classes, and the series of classrooms observations to assess the implementation of technology in ELT. The main keywords are English language teaching, that is ELT, technology, education, and literature. Introduction. The technology is very important in English language. It is the way in which we learn, we offer views, opportunities for language, which is very important in English language, and to interact with the language, which engage the authenticity, materials, and collaboration with the peers. The aim of technology in ELT has been potential to transform traditional teaching approaches, making the language learning more engaging, interaction, and effective. The purpose of this paper is to explore the use of technology in ELT and to investigate its importance and the study of aim of answer these following research questions. Now, what are the main 4 things which we have to go through this? The first very important is what is the current state of research on the use of technology. आज का जो current state है technology जो हम use करते हैं language में वो इतना important क्यों है? Second question, do the teachers and students perceive the use of technology in English classes? क्या वाकई में टीचर्स जो है स्टूडेंट्स के साथ वैसा इंटरेक्शन करते हैं जिस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज में उसको करना चाहिए? थर्ड इज हाउ द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन लैंग्वेज लर्निंग आउटकम्स. उसके आउटकम्स क्या होते हैं जब टीचर और स्टूडेंट जो है एंगेज होते हैं लर्निंग के पर्पस में. And the fourth question is what are the challenges and opportunities? क्या challenges हम face करते हैं और opportunities क्या होती है after we use this technology of ELT? So the answer are here that the significance of this study, आज हमने जो studies देखे हैं, is the potential and contribute on ongoing discussions in the integration of technology. जैसे जैसे technology बढ़ती है वैसे वैसे हमको लैंग्वेज में है बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारे रिसर्च हमको फाइंड आउट करने मिलते हैं. द स्टडी विल शेड लाइट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव द लैंग्वेज. हम इम्प्रूव बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं. दिस इज अ वेरी बेनिफिट फॉर अस. Then the integration of technology and ELT, it provides the insights to the challenges and opportunities. Then the third point is the study will also will highlight the importance to the teachers and the students. The role of the teacher is very important. यहाँ पे जो teacher का role है that is very important and very effective of technology in ELT. And the last is the importance of learner-centered interaction. The interaction between the teachers and students both has to be very communicative approaches in the use of technology. Next we'll come to the literature review. What is the literature review in technology? Technology integration has education in the use of technology in survey to enhance technology and learning process. In recent years, आज के time पर when we see in the recent years technology integration has become very increasing. इतना popular हो गया है. Especially after COVID, the people have started using technologies very much. Even the students, when you see recent time, आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है and they are very access and they are very free to use this technology, which has been proved that the student engagement and the significant and the participation is improved in learning and outcomes of the achievement. The next is the benefits of the technology. हम सबको पता है क्या क्या benefits है technology as a integration in ELT. The use of technology is very much increased. Student जो है हमेशा engaged रहते हैं. They want to get motivated in all these things. They get motivated when they come to something new. The participation, आज हम face to face मिलते हैं लोगों से तो एक participation होने का हमको एक फायदा होता है that we get motivated with all these things. And then you can enhance the language. We learn languages. जैसे अभी यहाँ पर I was seeing that Hindi scholars were giving such a good lectures, which I came to know how the Hindi can be improved. As even when I'm speaking to you all in an English language, there are many other different words when we can learn with each other. So this is a very benefit in English language and all other languages
where we get to opportunities to learn from each other. Then the studies of technology. Various studies of technology can be done in the integration of ELT. In summary, the literature of review highlights the potential and the challenges. हम बहुत सारे challenges we face today, and we come to know the importance. We are very careful to consideration of the languages. हमको languages का हमारे goals क्या है, how to what are the needs of this, and this literature review जो है, it also makes us underscores and the need and learning and training support. We get lots of training and we get lots of support when we do this kind of technology and English learning as a language. Overall जो है एक language को learn करने के लिए the pedagogy of principles are the best practices in language teaching जो हम बोल सकते हैं. उसका जो need है वो first very important is for teacher training, and second thing the support which is very effective of the technology in ELT. And the next is how it can be, how English language can be come to this. The conclusion is there should be the paper has explored the use of the English language and in the impact of English language learning outcome. Uska use and impact, how it has been shown, that has been said over here. Then the next is surely it has shown the integration technology of ELT has a positive. आज हमको पता चलता है it is a very positive approach. जब हम कोई चीज सीखते हैं कुछ. Ajra Hublikar, your time is over. Okay, sir. Okay, this is the conclusion, and yes. So my conclusion is here, and my last slide is. I have correlated and the references are there. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you so much. We shall collect remarks by the session chair at the end of the session. So please, you will be listening us on the platform. Can I make one comment, sir? Sir, yes, sir. My comment is that only today I learned that artificial intelligence has come to play a major role, and even for letter write and other things, it is in the field. So what do you think the prospect of artificial intelligence in English learning in India? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, yes, sir. Next scholar is Neha Sharma. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Yes, sir. Yes. Neha Sharma, start presentation. Okay, sir. Ajra Hublikar, yes. Neha Sharma, please start presentation. Sir, I am audible? Yes, yes. You are given 4 minutes. Good morning, one and all present here. Myself, Neha Sharma. I am pursuing PhD in English, and today I am going to focus on the aims and objectives of NEP 2020. Education is fundamental key for achieving full human potential, human development. Have you any slides like PPT and others? Yes, sir. Then you should share. Okay, sir. Sir, can you see? Yes, yes. Just wait. Yes, it is visible. Start, please. Okay, sir. Thank you. New education policy of 21st century, which aims to address the growing development imperatives of our country. This policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure. NEP was approved by the Union Cabinet of India on July. The new education policy is based on the recommendation of an expert committee headed by Dr. Kasturi Rangan, former chairman of ISRO NEP 2020. In this paper, I highlight various aims and objectives of NEP 2020 in the education system. The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi of India, approved the NEP on July 29th. After the independence of India, the NEP is the newest addition to bring reform to the education system. The NEP is based on 5 pillars, and these are access, equity,
quality, affordability, and accountability. This policy is the newest addition to bring reform in education. NEP helped the student to experience education of global quality. NEP pushed the policy of universalization and extend the RT window from 6 to 14 years to 3 to 18 years. It was implemented to make education accessible to all with the inclusion of one and all. Objectives of my studies: study the objective and aims of NEP 2020. What is the major changes in the education system? What will be the outcome after implication of this policy? And in the last, I would like to give some suggestion that can contribute towards the better implementation of this policy. Objectives of NEP 2020 are ECCE. It will deliver a significantly expand and strength to institution, including Ms. Neha? Anganwadis and Neha preschools. ji, could Yes, you go sir. for suggestions directly, please? Could you go for suggestions? Kindly Yes, go sir. for directly to suggestions, please. Yes, thank you. Yes, sir. The government must take effort to provide online access for all the students, because in recent times e-education is a major mode of learning. It is necessary to give instructor and student support for digitization by making such platform and content available for free. Adequate awareness should be created amongst all the stakeholders and all the areas involved in the successful implementation of the policy. The coordination between the central government, state and local bodies should be worked upon to make this policy a success, and more investment should be directed towards education to make NEP success. Timely feedback from parents, students and industry will also help in successful implementation of this policy, and more focus should be given to the training of teachers and inculcating in required skill in the same goes for the students. And last is the conclusion of the paper is NEP 2020 has laid a concrete roadmap of India 2.0, and if implemented properly, then it has got everything to make like India a global hub in education 2030. The future of the national depends heavily on the kind of education imparted within that state. NEP 2020 is a ray of hope in that direction, but India as a country needs to ensure that the promise made under this should not remain on paper and become a reality, and that will only be possible with effective implementation of its provision with proper coordination from all the stakeholders. The overall papers conclude that drastic changes took place in the education sector, resulting in broader aim and objectives where students can learn and enhance their skill and knowledge in terms of multidisciplinary, thereby leading to fruitful output for the society and ultimately contributing to the growth of the economy. Okay, thank you. Okay. Thank you, And sir. Thank you, Neha. Thank you. now, sir will give remarks, Neha. So you should wait, and you should see on the other platform, and you should keep from here, right? Yes, sir. Now, Darshana Kumari, she is PhD scholar in English. Neha, you can leave this meeting. Darshana Kumari, please. Sonika, you wait, please. Sonika Saharan, please wait. Darshana. Yes, Sonika. What is your आपका सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी है सर. प्रेजेंटेशन रेडी है? एक मिनट सर, फोन से. सर आवाज नहीं आ रही. आवाज अब आ रही है? बिल्कुल स्लो आ रही है सर. आपकी आवाज आ रही है, आप प्रेजेंटेशन दीजिए. Okay, sir. She is from geography. Some other scholars of English are supposed to join. They are facing some network issue. So start presentation, please. Sir, screen share नहीं हो रही. आप ऐसे ही presentation दे दीजिए.
बता दीजिए क्या कहना है। आप मोबाइल से कनेक्ट है, इसलिए आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। शो हो रहा है सर? आप मोबाइल से कनेक्ट है ना? हाँ सर। मोबाइल से स्क्रीन शेयर नहीं हो पाएगी आपकी। We have already instructed that you should use laptop or tab. चलिए अब बता दीजिए, पढ़ दीजिए अपना पेपर। सर गुड आफ्टरनून सर, दर्शना कुमारी पीएचडी स्कॉलर ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी। वेट कीजिए प्लीज। यस वेट दर्शना, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। सोनिका आप बताइए जल्दी। सोनिका आप अपना पेपर पढ़ दीजिए प्लीज। शी हैज लेफ्ट। यस दर्शना स्टार्ट प्रेजेंटेशन। सर हमारा टॉपिक है भारतीय कला व संस्कृति नई शिक्षा नीति 2020 के वीडियो ऑन करिए अपना। आप वेब कैम ऑन करिए। यू आर पीएचडी स्कॉलर इन इंग्लिश? नो सर, हिंदी। हिंदी नहीं, ये सोनिका सहारन अभी हिंदी का सत्र सर ये हो ही नहीं रहा, कट रहा है बार बार। आप पढ़ दीजिए, वैसे ही पढ़ दीजिए। Technical team, please connect with Sonika Saharan and ask whether she can read even or not. Then connect with next scholar, Puranmal Nagar. चेतना यादव पीएचडी स्कॉलर ज्योग्राफी। हेलो सर, दर्शना सर सुन पा रहे हैं? हिंदी का सत्र खत्म हो गया है, अभी हिंदी का इसमें प्रेजेंटेशन नहीं होगा। यस अलका जोसेफ पीएचडी स्कॉलर इंग्लिश। अलका जोसेफ। प्रीति सिंह पीएचडी स्कॉलर इंग्लिश। टेक्निकल टीम प्लीज कनेक्ट विथ ऑल। रामचेत यादव असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, Neha Sharma this side, PhD research scholar in English literature. I am connected, so can I present? Yes. Okay. Good afternoon to all the research, my respected honorable staff members, Dean sir, President sir, and all the respected peoples joining here. I'm myself Neha Sharma. I'm the research scholar from Jyoti Vidyapeeth Women's University. I'm in stream English literature, and my topic of paper is use of technology in English language teaching. I'm sharing my PPT with you all. Please continue. We are hearing you. Yes, sir. Start I'm speaking. just presenting. So is my screen visible? Not it. Yes. Just wait. It is visible. Neha ji, please. Okay, perfect, sir. Sir, this is the use of technology in English language teaching, and my aim to write this paper is how to teach English with technology, how to teach listening, and what are the principles of language teaching and learning. Since technology is a very important factor, it's been very essential for the learning process in the schools and universities as well, and it can help the teacher to present a better lesson to students.
Through the COVID also, we have seen the in the pandemic time, the schools and universities were facing lots of issues, and the children and teachers as well suffering a lot. So, but at the end, they have just turned up learning the e-learning language and the online Zoom meetings, so that they have enriched their learning process, and they have finished the school year completely successfully. So through these factors, I have gone through with them, and I have find out some tools or the technologies which we can use to make the classes more engaging. 10 tools I have found out, and I have prepared on that. That Quizlet, it's an online learning tool which creates the flashcard, short test, spelling quizzes, which can be very innovative for the students. Class Marker, secure professional web-based testing service. It's an easy to use and customized online task maker for business training, educational assessment with tests and quizzes as well. Go Conquer, it is a personal learning environment that allows students and teachers to create, discover, and share learning resources. Podcast, an audio file that one downloads and listens to. Podcasting has a significant potential as a modern learning tool for English learners. Quill, it helps students advance from fragmented and run-on sentences to complex and well-structured sentence with Quill Connect. Crossword Labs, it's a very nice website which can create, a student can create their own crossword puzzles, and the others can't solve them until and unless they don't allow. So Creative, an app for fun and effective classroom engagement, which get instant insight into students' learning with easy to create quizzes, polls, exit tickets, and more. Plickers, which is a powerfully simple tool that lets teachers collect real-time formative assessment data without the need for student devices. Storyboard, which helps you to build books in minutes. Duolingo, world's most popular language learning platform for the classroom. Next is how to teach listening. There are basic, simple steps which teachers can apply for the students. Engagement hook. Before jumping into the instruction of new concept or standards, students listen to an interesting story, and this can give a hook to develop students' background on the topic, activate their prior knowledge, and address any learning gaps. Current events routine. Current events routine is a powerful connection to their lives. This can use as a bell ringer to focus kids as well as get them thinking, whatever their thoughts and how they can explore their thoughts. You can also use current events to connect with events in history they are learning about. Listen-wise, post one current even every school day. There are stories students can relate to and help them engage in their world. For example, use the story Children in Migrant Crisis in Europe. Persuasive essays or classroom debates. Every Friday, current event is a good topic for a debate discussion. Students can listen to both the sides of an issue, and they can state their argument and provide evidence related to that. They can discuss and debate or use this content in a persuasive essay. Next is family and community engagement. The content comes from authentic public radio stories. Students have the opportunity to become better citizens who are able to discuss the world issues with knowledge, and they can share with what they have learned with their families. Consider assigning a current event for students to listen to at home with their parents or guardian. Increase family involvement by having students create questions to use during discussions with their family at night. These stories can be useful in exploring learning at home with the community. Next, last 5 is cross-curricular coordination. Use ListenWise podcast to support the curriculum across disciplines. Coordinate with each teachers in school and share the ideas for implementations, assignments, listening comprehension instructions, assessments. By reinforcing close listening and comprehension across the curriculum, students can use the same questioning, reasoning, and analyzing strategies whenever they interact with the content or the media. ListenWise has aligned stories in ELA, social studies, and science. But you can also work with your art teacher to create a project based on listening also. Principles of language teaching and learning are principles of naturalness,
principle of learning by doing. Yeah, you have given only 4 minutes, so you have Yes, to keep in mind that in during the time you have to finish your presentation. Please. Yes, sir. Principle of practice, principle of limitations, principle of motivation and interest, accuracy, interest, correlation, and oral approach. Literature review. So educational technology and the concepts are there for the educational technology, which I have written in my literature review, which is very essential for the field of study that investigates the process of analyzing, designing, developing, and implementing the instructional environment. So last, my conclusion is through this paper, I have reviewed some issues pertinent to the use of technology in learning language. The key points which are highlighted above, which these can be considered by the teacher as a solution to the issues, and they can help in the improvement of teaching technology much more. And this paper provides the interaction between teachers and learners, which provides the comprehensible input and output, and helps the learners to develop thinking skills, makes learning and teaching much more better, and it will promote learners' autonomy and helps them feel more confident. Thank you. Any comment by anyone, please? Any comment? Ms. Neha, very good presentation. I have got only one point. Yes, if sir. I talk about, you talked about 10 tools, right? Sorry, if I sir? ask you, you have chosen 10 tools, right? You have suggested 10 yes, sir. tools. Yes, sir. Yes, sir. If I ask you one tool that is the most beneficial in your class, or you suggest us, please tell us one tool out of them. Yeah, definitely, sir. Sir, from my perceptions, Go Conquer, it's a personal learning environment tool which will create and discover, share the learning resources between teachers as well as the students. Have you used it in the class? No, sir. Okay, thank but you. I have gone through with it, and I have seen the positive results through this tool a lot. Okay, thank you. Thank you. Now, next scholar who is coming with English, who is a PhD scholar in English, Puran Mal. Puran Malji, please. Puran Mal Nagar. Please start your presentation, Puran. Yes, it is visible. Puran, start presentation, please. Yes, please Good afternoon, start. sir. Good afternoon. It is visible. Yes, sir. दिख रहा है, presentation दीजिए, please start. Yes. सर ये अपने कंट्रोल में थोड़ी है, ये तो दर्शक अपने कंट्रोल में थोड़ी है सर, अपने कंट्रोल में नहीं है, ये ऊपर छोटा तो नहीं अपने कंट्रोल में नहीं है। टेक्निकल टीम, हेलो, अच्छा पूरन जी आप ये पीपीटी रीड करिए, आप ये हम ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ से। यस सर। सर एब्स्ट्रैक्ट सर, प्लीज चेंज सेकंड पेज। ओके ओके। Yes. Abstract. In today's era, education plays a deciding role in the development of society. Therefore, the framework of this reform is the revised National Education Policy 2020, has the potential to strengthen economic and social indicators while also laying the groundwork for a new education system in the country. There is still room for under NEP-2020 to ensure excellent standards in the higher education. The year 2020 was a remarkable one for nations all across the world.
The new education policy 2020 is one of the most significant developments in India after COVID-19. Researchers have become increasingly interested in this issue since recommendations from a variety of committees have repeatedly called the increasing spending on the education to 6% of GDP. The purpose of this study is to provide a detailed critique of National Education Policy 2020 and its core goals and priorities. It analyzes the policy in depth and make recommendations to improve it and make it consistent with its predecessors, which in turn increases the policy significance. Ma'am, please change the page. Introduction. National Education Policy stated goal is to turn India into a global knowledge power. It makes several promises towards that end, including the dissemination of financial literacy and numeracy, the expansion of access to education at all levels, the recognition of teachers as the central figure in the educational process, the development of curricular coherence and the guarantee of autonomy, good governance, and empowerment. Elegantly stated, NEP suggestions are unlikely to be implemented if the proposed policy does not effectively address the present situation, as has often been the case in the past. Ma'am, please change the page. The Constitution guarantees all citizens the right to a minimum duration of compulsory education. However, the current framework of primary education has been weakened due to the focus put on the modified framework for curriculum development. After being called the statutory linchpin for school regulation and governance in the draft policy document, the Right to Education Act 2009 has been completely pushed to the side. Can we hope to launch a pedagogical revolution with the existing setup of under-resourced integrated child development services enter as the policy proposes? Ma'am, please. पूरन जी, आप एक एक लाइन मत पढ़िए, प्रेजेंटेशन दीजिए. You are supposed to give presentation rather than going to line by line. चलिए बताइए प्लीज. Yes, sir. Review of literature. Right to Education Act 2009, National Education Policy, the government's 66-page policy paper on education launch on July 29, 2020, Integrated Child Development Services Center, Secondary Education Commission. Please change page. Discussion. It is not easy to see how establishing a national mission on fundamental literacy and numeracy or a national digital archive will help teachers successfully teach reading, writing, and arithmetic to their students in their native tongues. Regular primary school operations combined with good teacher assistance and oversight at the local level are the sky, not national missions or digital expertise. And next page. Unmal ji, please go to the conclusion, last slide. Technical team, please run last slide presentation. Yes, sir. Yes, sir. Neither does it effectively convey the complexity of the operating system in different states, nor do the plans take into account the varying levels of development of education among states. Sir, please. The inclusion slide. Yes, sir.
The पूर्णमल जी, inclusion आप education हमें on the कंक्लूजन बताइए अपना। पूर्णमल जी, current life does योर कंक्लूजन, पेपर का निष्कर्ष क्या है वो बताइए आप हमें। What is the conclusion of your paper? of this paper. This education will enrich the student according to the problems of the modern age, and student will go with the About current right to scenario. education. Before this, what about right to education that you discussed? Is it allowed or disallowed? Right to education, RTE. Sir, RTE is the government scheme for 6 to 14 years free education. Conclusion. In new education policy, is it included or excluded? New? In new education. RTE, right to education, is included in new education policy or excluded? Professor Aswani sir is asking this question. Sorry, sir, I am unable to listen you can. Okay, Professor Bipin sir, allow us for the next presentation. Yes. Please go ahead. If you have concluded, that's fine. Good Yeah. presentation. Chetna Yadav. Thank you. Yes, sir. Start your presentation, please. You are from geography. Yes, sir. Then Kamal Singh wished he should listen our presentation also. Chetna, start your presentation. Yes, sir. Good afternoon, all. My name is Chetna Yadav. I am research scholar in Jyoti Vidyapith Women's University. My today's topic is प्राकृतिक संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन। जैसा कि हम सबको पता है कि राजस्थान एक बहुत शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। जलवायु एक ऐसी चीज है जो सभी जीव जगत और सभी को प्रभावित करती है। जलवायु वो होता है जो टाइम मतलब एक अपना फिक्स टाइम पे चेंज होता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन वह होता है जो बहुत लंबे टाइम में चेंज होता है। इसका मुख्य कारण है जो ये हम आजकल यूज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इसमें बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसका वर्षा पर भी बहुत अधिक प्रभाव हो रहा है। पहले भारत की औसत वर्षा है 1100 मिलीमीटर, लेकिन राजस्थान में यह सिर्फ 574 मिलीमीटर है। इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वो देखा जाता है। Yes. Next slide. तापमान भी राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, तो यहाँ का तापमान भी यहाँ का अत्यधिक तापमान 50.6 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। इस ज्यादा गर्मी की वजह से यहाँ की फसलों पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा वन क्षेत्र पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। वन क्षेत्र में अत्यधिक तापमान की वजह से आग लग जाती है, जिसकी वजह से जंगली जानवर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव देखा जा रहा है। मेरे इसके उद्देश्य हैं, एक तो जो जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा और बाढ़ जो कृषि पर प्रभाव डाल रहे हैं उसका अध्ययन करना। हमें एक ऐसे बीज को बनाना चाहिए जो 50% जल का उपयोग करके कृषि पर एक जिससे हम कृषि कार्य कर सके, और जो बढ़ता हुआ तापमान हमारे इसके लिए एक संकट बना हुआ है उसका निवारण कर सके। जलवायु परिवर्तन मानव और प्रकृति दोनों की वजह से होता है। इसका प्राकृतिक कारण पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मानवीय कारणों को रोक के हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं। इसके लिए हमें ग्रिफिथ टेलर की नवनिश्चयवाद की संकल्पना पे काम करके जो है रुको और जाओ, अर्थात हम अपना जितना हमें यूज में आ रही है चीजें हम उतना करें और यूज करें, और बाकी की जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सेव करके रख सके, जिससे कि हम जलवायु परिवर्तन को रोक सकें। थैंक यू सो मच सर। Thank you. Can I comment, sir? Yes, sir. Yes, sir.
जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो गैसेज जो कि पृथ्वी में आए हुए विकिरण को वापस नहीं जाने देती, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड परिवर्तन को रोकने के लिए अपने सुझाव में जो शिक्षा का है कि जलवायु को रोके और ताकि हमारे लिए ये प्रकृति रहने योग्य बने रही। आपका सुझाव? Yes, sir. Bipin sir, next. We should allow to the next scholar. Yes, please. चेतना जी, very nice, wonderful topic. बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, ठीक है, बहुत मजा आया इस टॉपिक को जानकर, ठीक है, प्लीज थैंक यू सर। और स्टडी कीजिए इसको, बड़ा अच्छा बन जाएगा टॉपिक आपका, बहुत अच्छा रिसर्च बनेगा ये। थैंक यू सो मच सर। पाठक पराशर, PhD scholar in geography, please start your presentation. Pathik Parasar, good afternoon all of you sir. जी Pathik Parasar, sorry, Pathik Parasar. एक मिनट सर, शेयर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा जो स्टेटस है, मेरा जो ये इको हो रही है, आवाज हो रही है। हाँ प्रेजेंट कीजिए प्लीज। हाँ जी सर, वाटर के ऊपर जो ग्राउंड वाटर स्टेटस है, इसके लिए जो बयाना ब्लॉक के जो कंडीशन है उसके ऊपर मेरा टॉपिक है। तो इसमें जो है ये ग्राउंड वाटर एक्चुअल में पृथ्वी पे जो है दो तरह के वाटर होते हैं, ग्राउंड वाटर और एक सरफेस वाटर। तो जो ग्राउंड वाटर है, इसी से हम मैक्सिममली हम अपना पानी का यूज करते हैं। तो इसलिए जो इसकी पानी को लेने के लिए हम ग्राउंड वाटर स्टेटस बहुत ज़रूरी हो गया है प्रेजेंट वर्ल्ड में, क्योंकि ये जो हम NEP 2020 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी ये कहती है कि इसमें आपको इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन इन स्कूल करिकुला विद सेंसिटिविटी टुवर्ड्स इट्स कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग वाटर एंड रिसोर्स कंजर्वेशन। और इसमें जो SDG गोल है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो 2015 में जो बनाए गए 17 गोल थे इसके अंदर। तो 17 में से जो 6 नंबर का गोल है, वो खुद वाटर के लिए एंश्योर करता है कि आप अपना स्लाइड चेंज कर दीजिए, अभी तो आपका टाइटल स्लाइड ही दिख रहा है। जी सर। आप एब्स्ट्रैक्ट बता रहे हैं या इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? स्लाइड सामने नहीं, स्टार्टिंग की थी ये इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले तो मेरा ये था कि ये जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसका 6 गोल ये कहता है कि वाटर को इसका एक्सेस और इसका जो क्या कहते हैं सैनिटेशन, ये सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये प्रॉपरली नहीं मैनेज किया गया तो 2030 तक इसकी स्थिति खराब हो सकती है, मतलब रिसोर्सेज की जो है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आया 2015 से 2030 के बीच के लिए। तो अब जो मेरा जो टॉपिक है, रिसर्च का जो एरिया है, वो लिया गया है वर्ल्ड लेवल पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो इंडिया है, वो उसके वेस्टर्न साइड में जो राजस्थान है, ये तो इस राजस्थान का जो ईस्टर्न पार्ट है वो भरतपुर, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो ये जो लास्ट का पर्पल दिख रहा है, ये अपना है क्या कहते हैं बयाना तहसील। यही मेरा रिसर्च एरिया है और इसके ऊपर मैंने रिसर्च की है कि इसका ग्राउंड वाटर स्टेटस किस तरह का है। तो अब मेरा ये इसमें एब्स्ट्रैक्ट में ये है कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है इंडिया में, वो 2007 से 2020 के बीच में 61% डिक्रीज हो चुका है पानी का लेवल। और इसमें से जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर जो बयाना तहसील है, इसमें पहले 0.30 मीटर पर ईयर डिक्रीज हो रहा था, जो अब बढ़ के 1 मीटर पर ईयर हो गया है। और जो इसमें कुछ एरिया है जैसे रूपबास, कुमेर, सेवर, वेर, नदबई,
ये ओवर एक्सप्लॉइटेड रीजन हो गए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा निकाला जा रहा है यहाँ पे। इवन 25 मीटर तक की डेप्थ हो गई है पानी की, वाटर टू डेप्थ जो है यहाँ पे। मेनली वाटर के लिए जो मिलता है वो रेनफॉल, गंभीर रिवर और एक बाणगंगा, इससे पानी मिलता है। तो इसमें पहले की जो कंडीशन है, मैं आपको एक सारणी के द्वारा समझाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो है इसमें ये बताता है कि जो 2000, एक सेकेंड, हाँ 2009 में जो है इसमें इसका जो एनुअल रिचार्ज था जो राजस्थान में जो बयाना में होता है वो 454 मिलियन क्यूबिक मीटर था, और इसमें जो डिमांड है वो 509 थी, यानी कि -55 MCM चल रहा था। लेकिन अभी फिलहाल में इसकी जो 86 मिलियन क्यूबिक मीटर की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ रही है, यानी कि हम जो रिसोर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ग्राउंड के अंदर काफी ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। इस स्पीड से अगर चलता रहा तो ये लगा लीजिए आपकी 2041 तक ये माइनस में चला जाएगा स्थिति, यानी कि वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की स्टेटस है वो बहुत खराब हो जाएगा, और ऐसे में हमें बहुत परेशानियों से झेलना पड़ेगा। इसलिए अगर प्रॉपर इसको सस्टेनेबली यूज नहीं किया गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसमें ये देखिए कि ये जो लेफ्ट साइड में है, ये यहाँ का जैसे रेड साइड का है, रेड जो कलर का है, यहाँ पे वाटर कंडीशन बहुत खराब हो गई है। नीचे जो ये बयाना है, जो मेरा रिसर्च का जो एरिया है, इसमें येलो और पर्पल कलर, तो जो पर्पल है वो 10 to 20 मीटर वाटर नीचे चला गया है, और इसमें जो येलो है इसमें 5 to 10 मीटर नीचे चला गया है। तो इसको सस्टेनेबली यूज करना बहुत आवश्यक है। तो इसी का मेरा पाराशर जी जी, आप हमें ये बता दीजिए कि जो आपने ये कहा कि बहुत डाउन गया है लेवल और 2041 तक बहुत बड़ी गहरी स्थिति आ जाएगी, तो इसको क्या उपाय क्या है इसका? आपके इसके सजेशन क्या उपाय है इसके लिए? सर, इसके लिए एक तो क्या कहते हैं, पानी को बहुत सस्टेनेबली यूज करना पड़ेगा सबसे मेन। और इसके अलावा हमको रेनफॉल वाटर मैनेजमेंट, और इसके अलावा जो मतलब जो रेनफॉल होती है उस टाइम पे पानी को एक बहुत कंजर्व भी करना है, प्लस मैनेज भी करना है, उसको किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है यहाँ पे, जैसे कि मनरेगा है, तो वो मनरेगा जो है वो एक्चुअल में जो वाटर मैनेजमेंट के लिए काफी गवर्नमेंट वो करती है, इसमें हेल्प करती है काफी, और इसी से ही हम इसको बचा पाएंगे आगे के लिए। वरना तो स्थिति काफी, जिस स्पीड से ये माइनस हो रहा है पानी, मतलब जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो बहुत काफी गंभीर स्थिति हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा टॉपिक था आपका। थैंक यू any question you can ask. मुझे आपसे बात करके आपका टॉपिक याद आ गया। थैंक यू वेरी मच। नाउ प्रीति is going to present her paper. अभी यूजी के स्टूडेंट जो सामने दिख रहे हैं, दे आर रिक्वेस्टेड फॉर सम मिनट्स, आप वेट करिए। यूजी के स्टूडेंट वेट करेंगे। प्रीति लाथवाल, प्रीति PhD स्कॉलर इंग्लिश। टेक्निकल टीम प्लीज कनेक्ट विथ प्रीति, शी इज कनेक्टेड बट शी इज नॉट लिसनिंग। प्रीति, yes, start presentation. Start presentation. Start. Hello. डिस्कनेक्ट हो गई। चलिए तब तक आप लोग अपना प्रेजेंटेशन दे दीजिए बच्चे। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। सृष्टि की स्लाइड यस, प्रीति को बोल दो। A very warm good afternoon to all of you. Honorable Chairperson, Ma'am, Advisor and CEO, Sir,
Administrator Director ma'am and Chief Guest, Dean and Director, faculty members and or respected dignitaries present to the virtual. Bipin sir, these are our UG student, undergraduate student of Jyoti Vidyapeeth Women's University, used to write research paper and they give their presentation. Great, sir. Great to hear. Which year of Great to undergraduate? see. Start presentation. Second year, sir. Second year. Yes, please. Great. ICTS Shri Khatam. बताइए, please continue. We pursuing BA B.Ed 4th SEM in the Faculty of Teaching Education and Methodology under the Faculty of Education and Methodology. So let's begin. This is the content of our topic. Impacts of climate on natural resources. The places. Natural resources regulate the economic, social, and cultural lives. Water is a basic need in everyday life. And its cycle is inextricably linked with climate change. The main concern in the changing of the water resources and the factories supporting the content of the water Keywords: TVA, climate change, greenhouse gases, water resources, economic systems. So this is the introduction of our topic. So climate change refers to the changes, natural changes, conditions occurring over a period of time, either due to natural forces from human activities. Climate change is a major challenge facing our planet today. Climate ecosystems are closely related and depend on each other. Yes, continue, please. Threat that will pose significant environmental, economic, social, and political challenges for years and decades to come. Exponential increase in greenhouse gases. Objectives: to summarize, accepting highlights work on climate change impact as it relates to the TVA region. To identify area for further research. So this is the reference of our topic. World Climate News 2006, homing in on rising sea levels. Singh, SPV Singh and me M. Skutch 2010, rapid warming in the Himalayas, ecosystem responses and development options. So, this is the conclusion of our topic. The sustainability of the Himalayan mountain ecosystem will depend on striking a balance between the fragile ecosystem components. Ecosystem is an essential component of environmental conservation efforts and any degradation of forests, such as water resources, agriculture, biodiversity, environment, climate change, and human health. Reforestation would help to mitigate global warming and also improve the sustainability of natural resources, as well as provide livelihood opportunities of communities. Himalayan region should be considered broader than a commercial tourist destination and should be developed as a major ecotourism center as well as for our pilgrimage and adventure tourism. Thank you, sir. Thank you very much. And I need very good comment paper. Very good paper. Kumar, who is the chair professor of Arvind Khurana, chair of this faculty of Education and Methodology. Can I make one comment? Yes, sir. Yes, we are inviting you. It is a very good paper, and you will remember I presented a book on biofuel and climate change, and I'm very happy that your center is taking active part in climate change discussion, and maybe you can organize a special conference for the climate change. And the young students are learning, sir. My congratulations to you and Raghav, sir. This is a very important topic, and it should be promoted further. Thank you. Thank you very much. And now, by the permission of chair, we are going to invite Preeti. Preeti, please start your presentation. We are running very short of time. Preeti.
There is a big list of PhD scholars of English, history, and geography. So everyone is requested that please utilize your moment in a significant manner. Preeti, start your presentation, Good please. afternoon, sir. Yes. अगर आप मोबाइल से जुड़े हैं तो आप वैसे ही पढ़ दीजिए, नो इशू। मैम सर मोबाइल से है कनेक्टेड आई एम। ठीक है, पढ़िए, जल्दी करिए। हेलो। What you want to? Okay, Yes, ma'am. yes, please. The topic of my research paper is use of technology in English teaching language. Yes. बोलो प्रीति आगे। She left. Richa Singh. Richa Singh. Good afternoon, sir. Yes. Your subject is history. Thank you, sir. Yes, sir. आप प्रेजेंटेशन शुरू करिए। वो इंग्लिश वाले का भी नेटवर्क इशू आ गया। स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। Okay, sir. Okay, sir. I am starting this. Richa Singh is PhD scholar of Jyoti Vidyapeeth Women's University in history. Yes. Yes, sir. Thank you, sir. प्रीति, अब आप वेट करिए थोड़ा देर। Sir, is my presentation is visible? Okay, sir. Not yet. Yeah, sir. Vipin sir, you are requested for some more moments after 1 p.m. because these scholars are define the parameters of timing. Now it's visible, sir? Not visible. Please share your screen. Richa ji, please share your screen, please. Okay, okay, sir. You haven't shared your screen, please. Now it's visible, sir? Yes, yes, just wait. Good. Thank you, sir. It is visible. It is visible. Thank you, sir. Give me. Okay, thank you, sir. Give me this opportunity. सबसे पहले नमस्ते मेरा सभी रेस्पेक्टेड डिग्नेटरीज को। Okay, sir. I am assistant. It is looking smaller. Okay, sir. Okay, sir. थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए, प्लीज। अगर नहीं आ रहा है तो आपको तो आप ऐसे ही बताइए। स्टार्ट प्लीज। ठीक है। गाइड नेम आल्सो गाइड। Yes, yes. Okay. My guide name is Dr. Lalit Pandey, and I am assistant professor in Maharaja Surajmal Birj Visvidyalay. और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति की गुणवत्ता तथा महत्व। नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में लाई गई है। नई सर अभी साइज बड़ा हुआ क्या कुछ? हाँ ठीक है, चलिए आप प्रेजेंटेशन दीजिए। ठीक है। नई शिक्षा नीति को 5+3+3+4 के फार्मूले में लागू करने जा रही है। जो पुराना पैटर्न है उससे बदल के नई शिक्षा नीति का जो ये पैटर्न है वो तैयार किया गया है। इस फार्मूले को सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों संस्थानों के लिए फार्मूले को लागू करना अनिवार्य होगा। अगर नई शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य वह यह है कि जो अभी हमारे जो छात्र हैं उनको व्यावसायिक व तकनीकी व डिजिटल ज्ञान भी दिया जाए, जिससे कि वो आगे जाके अपने कैरियर को सुचारू रूप से चला सकें। और नई शिक्षा नीति में
अगर विद्यार्थी 10+2 के बाद 1 साल की भी पढ़ाई करता है, तो अगर वो किसी ना किसी कारण से पढ़ाई को छोड़ता है, तो उसको उस 1 साल की पढ़ाई का भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। ये नई शिक्षा नीति का सार है। और अगर हम नई शिक्षा नीति के परिचय की बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो यह कार्यक्रम बिहार के सासाराम जिले के जमुरा स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान के साथ अखिल भारतीय इतिहास संकल्प योजना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। नई शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको मातृभाषाओं से जोड़ा जाए, और मातृभाषाओं से जिससे वो जो उनका बेसिक ज्ञान है वो क्या मजबूत हो सके। नई शिक्षा नीति की अगर बात करें तो यह स्वतंत्र भारत की तीसरी नई बुनियादी शिक्षा नीति में जिसमें बदलाव किए गए हैं। सर्वप्रथम एक शिक्षा नीति 1968 में आई, उसके बाद 1986 में बनाई गई, 1992 में फिर इसको संशोधित किया गया, और अब लगभग 34 साल बाद 2020 में ये पुनः नई शिक्षा नीति में बुनियादी बदलाव किए गए। वर्तमान में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें मुख्य तौर पर हमारे 2 चरण हैं, एक प्रारंभिक चरण है और एक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक चरण है। जबकि इस शिक्षा नीति में मुख्य रूप से इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो चरण है वो कक्षा 3 तक है, इसके बाद दूसरे चरण में कक्षा 6 से 8 तक, दूसरे चरण में कक्षा 3 से आपका 5 तक रखा गया है, और तीसरे चरण में कक्षा 6 से 8 तक रखा गया है, और चौथे चरण में कक्षा 9 से 12 तक रखा गया है। नई शिक्षा नीति के अगर हम मुख्य तथ्यों की बात करें तो नई शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा मुख्य तथ्य है वो यह है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का गठन किया गया है, जिसके द्वारा छात्रों द्वारा परीक्षा में प्राप्त किए गए क्रेडिट को डिजिटल एकेडमिक क्रेडिट बनाया जाएगा, जिससे वह किसी भी संस्थान में अपनी शिक्षा का कार्य करें और उन क्रेडिट को संग्रहित करके अंतिम वर्ष की डिग्री में जोड़ दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि शैक्षिक पाठ्यक्रम को लचीला बनाया जाए, जिससे अगर कभी भी छात्र का बीच में किसी भी कारणवश उसने जैसे कि 9th स्टैंडर्ड में कोई भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम ज्वाइन किया है, अगर उसमें फिर उसको उसका रुझान कम हो जाता है तो वो उस कोर्स को कुछ दिन बाद पढ़कर भी वो दूसरे कोर्स को वहीं से ज्वाइन कर सकता है। नई शिक्षा नीति के साथ में हर जिले में उच्च शिक्षा संस्थान का निर्माण किया जाना तय किया गया है। नई शिक्षा नीति के अंदर 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक शैक्षिक पाठ्यक्रम संस्थान बनाने का उद्देश्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति के नई शिक्षा नीति की राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजित करेगी, जिससे शिक्षा का स्तर बनाया जा सके। इसके अंदर सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों को बराबर एक समान मान दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के 4 वर्टिकल दिए गए हैं। और रीचा आपसे निवेदन किया जा रहा है कि कृपया आप कंक्लूजन बताइए। टाइम ओवर हो चुका है और सर अभी सऊदी अरबिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक कैंडिडेट और भी है जो बता नहीं पाई ठीक से, तो आप कंक्लूजन बता दीजिए प्लीज। और सेशन नई शिक्षा जजान यूनिवर्सिटी सऊदी अरबिया, प्रोफेसर बिपिन शर्मा जी। सॉरी सऊदी अरबिया। ओके सर, आई एम टेलिंग द शॉर्ट कि नई शिक्षा नीति का जो मुख्य प्रोफेसर शर्मा, व्हाट इज टाइमिंग राइट नाउ इन सऊदी अरबिया? सर ये 10:35 हुए सर, 10:35 इन मॉर्निंग। यस ओके राइट, सो ओके, नो इशू। सो जल्दी बताइए। ठीक है सर, मैं नई शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो शॉर्ट में कंक्लूजन में ये बताना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति में जो कोशिश की गई है उसमें कि जो छात्र छात्राएं हैं उनको व्यवसायिक ज्ञान दिया जाए एवं उनको तकनीकी का भी ज्ञान प्रदान किया जाए। वह पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है जिससे वो एक शिक्षा से दूसरी शिक्षा और विषय चुनाव कर सके। जैसे कि सबसे बड़ा पैटर्न ये है कि अगर जो पहले 11वीं क्लास में जो छात्र हैं वो सब्जेक्ट या स्ट्रीम उनको चूज करनी पड़ती थी, जैसे कि साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, अब वो 9th में ही उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो डिफरेंट स्ट्रीम से अपनी पसंद के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उन पे जाके आगे अध्ययन कर सकते हैं।
तो ये नई शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा बदलाव है वो मुझे लगता है कि इसमें किया गया है। ओके, ओवर टू विपिन सर, एनी कमेंट? नहीं, बहुत अच्छा ऋचा जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सर। कॉलेज में इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, ठीक है ना? जो भी आपने थैंक यू सर, सुझाव दिए थैंक यू हैं। सो मच सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। नाउ प्रीति शर्मा, प्रीति, Yes, sir. स्टार्ट विद प्रेजेंटेशन। थोड़ा तेजी में प्लीज। In this era of globalization, everything is changing extremely quickly. With technologies, the world has become smaller because You introduce yourself, Preeti, then give your presentation. You introduce yourself. Okay, sir. Before the panel. Yes, please. Okay, sorry for that. Good afternoon, everyone. Myself Preeti, and I am a scholar of PhD in Sunrise University, Alwar, Rajasthan. Right. So my topic is use of technology in English language teaching. In today's world, there is some changes in everyone extraction, because there are modernization of the world is becoming smaller. So can we start at this now? Yes, yes. In this era of globalizations, everything is changing extremely quickly with technology. The world has become smaller. It is not an anomaly, and the English classroom has undergone significant transformation because technology had a significant impact on all aspects of life. Traditional teachings approaches are not very effective at inspiring kids also. Due to their exposure to these devices, students are technologically. Teacher must use cutting edge technologies to engage students in the ESL classrooms in the new digital learning environment instead of the same old convocational approaches. The use of modern technology in English teaching is generally understood to include the creative applications of techniques, apparatus, materials, tools, systems, and strategies that result in the accomplishment of the desired objectives. Since technology presents a number of potential opportunities to improve both the content and delivery to the pedagogies typically associated with traditional English language instructions. It is a particular true of English language teaching, despite the fact that technology is now generally accepted as an important educational and auxiliary tools across a range of teaching and learning contexts. English language teaching has undergone a significant technology transformation, improved both the teaching and learns process for both teachers and students. The internet offers a wide range of learning tools for choosing the English language, including interactive websites, online classes, and language learning apps. These tools enable students to practice their English is in fun and self-paced ways by providing a variety of activities, exercise, multimedia material, and assessments. Language learning, supported by computer software and application, is known as a computer associated language learning, or COL. It has exercise in grammar and vocabulary, multimedia presentations, and pronunciation, among other things. Preeti ji, Yes, sir. could you reach to the conclusion? Just I would like to see the conclusion. Okay, sir. Because your is not synchronized with the slides. Okay, sir. The conclusion: English proficiency and a setting that will best assist learning, using current technology to actively involve students in language learning and inspire them to learn the English language in a useful and realistic way in one of its ultimate goals. This can be accomplished through an environment and that encourages openness and access to information and subject matter using contemporary technology, where students are encouraged and instructed to interact with one another. Multimedia will undoubtedly play a significant role in the student centered approach to teaching English to contemporary standard in the coming years. As a result,
through examination of English language proficiency would be beneficial for teaching quality and student application to contemporary educational foundations. Okay, Preeti ji, a very good topic, right? And Yes, sir. especially in these circumstances, you have used one, abbreviation CALL. What is this? Call. What, sir? You have used an abbreviation that is CALL. वो क्या है? What is that? Sir, call. Call. What is this? This is we are on the online call. Through the calling, we are at touch with others on the phone, because we in this world we can't meet many days without call. Now with the call we have touch in everyone with the net call. Okay, you've been to the computer-assisted language learning, right? Yes, sir. Okay, thank you. So, Bipin sir, few scholars and students are still in the row. So, what is your comment? Because we have given you promise up to till 1 p.m. and we are crossing the time. So, let me know, should we continue or the session should be stopped here? Please. No, Please no, continue, sir. sir. We From should my give them side, opportunity. Vipin Sharma sir, he Yes. will also agree. Okay, Vipin okay. Sharma sir, So, Please give technical them, team, please allow let them to our summarize it. students who are eager to give their presentation in brief. We should inspire them, motivate them, Yes, sir. give Yes, them sir. please opportunity. continue. Yes. Yes, sir. Just they are coming. Yes, Akila, you start your presentation. Akila. Yes, sir. Yes. Yes, yes. After this, you okay? Sir, अभी Akila कुछ Joseph, PhD scholar. सर presentation stop sharing कर दीजिए. Please. Yes, sir. Akila in short. Yes. Namaste, respected dignitaries on this online platform, and myself, Akila, distant research scholar at JAIPUR Women's University, and working as an assistant professor at St. Albert's College, Ernakulam. So thank you for giving me an opportunity to present this paper. So coming towards my paper, the topic is Advanced Learning, Technology and English Language. So the overall idea I put forward in this paper is about the use of technology, and also addresses the issues that connected with technology in the classroom, and also the effective materials or tools that are available to online for using the learning and teaching process, and also provide necessary information regarding the online teaching platform. So connecting towards the introduction, we all know that the social media has played an important role in the revolution of among students, teaching field, educational field, etc. So in the case of English, it has also played an important role in the online platform. So teaching and learning using technology is a fast option for guiding students, and also help them in dealing with online activities, etc. So the materials available in the online also help the students to make a good interaction with the online platforms. And also the importance of technology in English language is also an enough usage of Take your technology at slide. schools. Please change your slide. Okay, okay. So these are the ideas that I had put forward in this paper. Then use of technology effectively in English classroom is the tools that adopted is like computer networking, like Google platforms, and
we can use a digital library. So these are the platforms we can use for the taking classes, and also it helps the students to make more understanding in English. The next generation also can use online resources to develop thinking skills and also method of learning, gain self-understanding. And also the activities can also be enabled through these Google Classrooms. So this how this educational technology tools support the teachers. This helps to for the create a better learning environment and also gives a possibility in wider range like language teaching method resource and other resources like digital library can be used. Then also there is another online platform that is called Sanaco that can also helps the teachers to provide the various resources, teaching resources to the students. And also the classroom makes a real world connection that students can interact across the globe. And also that it saves the time in lesson planning and it makes an opportunity for continuous professional development. Technology in language learning, that is, it gives a wider exposure across the culture. That is, we can communicate with other speakers, even all over the world. And it also gives them highly motivation and attention to the students by getting a practice in the activities from the online. Also it gives a flexible learning, that is wherever they go they get an access towards the materials, like means teaching and learning materials through online platforms. And also it provides an adaptive learning, that is which provides a tailored experience with making the students with their own space in speaking or connect with the peers in teaching. So pronunciation and speaking skills. This is one of the most. Akila, please come in on your conclusion slide. Okay, sir. So pronunciation and speaking skills is the one of the most important factor that connected with the English, and this online platform is also providing that opportunity for the students as well as teachers to connect with the students. Then these are some of the tools that are related to the online platforms: blogs, mind maps, podcasting, quiz makers, etc. Then these are some of the links that connected with the online platform for learning English. So coming towards the concluding point, as a student or as a teacher, it's a way to communicate with students through online platform is a better opportunity for each and everyone to get more focused in education. And also, especially in youngsters, we can see that they use short abbreviations for communicating with others. And e-content is also another factor that can be used for giving notes. So, as an overall idea, a technology is required, but a technology should be a tool for this education. Okay, thank you. Now UGA student of Jyoti Vidyapeeth are coming. UGA students are coming with their presentation. UG, yes, start presentation in short, please. Firstly, introduce yourself. This is the last presentation of pre-lunch session of today. And the rest will be given timing after 4:30. Who are left in the session. Namaste ma'am, Namaste sir. I very want a good afternoon to all of you. Honorable Chairperson ma'am, Advisor and CEO sir, Administrator, Director ma'am, Chief Guest, Dean and Director, faculty members and all representative dignitaries present thoughts the variable media. अपना नाम नहीं बताइएगा. You should say about yourself. Yes. Sorry. I, JVN Yes. Suman Kumari, pursuing BA B.Ed, 4th Sem. I am from Badmer. I, JVN Shruti Priya, pursuing BA B.Ed, 4th Sem. I belong to Bihar. Today I want to explain the use of technology in English language teaching. First of all, abstract. Technology is one of the most important factors of the programming, processing, the teaching process in the schools and the universities, especially for the English language teaching. It can help the teachers to present better lessons
to students. Technology is very necessary for the field of education because there are too many two things that the teachers can do, such as playing videos in English language or a song, movie, and even a theater show. Using multimedia to create a content teach English has its unique advantage. This paper tries to analyze the necessity to multimedia technology to language teaching and also bring out the problems faced by using these technologies. It also aims to make English teachers aware of the strategies used it in an effective manner in language teaching and learning. We have a lot to choose from the world of technology: radio, TV, CD, ROM, computers, the internet, electronic, email, blogs, and audio, PowerPoint, videos, DVDs, and VCDs. Keywords: language teaching, multimedia teaching, advantage, disadvantage, and optimization. An introduction. With the separate and development of English around the world, English is used as a second language in a country like India, and for some people the first language. It enjoy a high percentage in the country. At present, the role and status of English in India is higher than even as evidenced by the position as a key subject of media of introduction curriculum. As the number of English learner is increasing, different teaching methods have been implemented to test the effectiveness of the teaching process. Use the authentic matter listener. The form of films, radio, TV has been there is a long time. It is true that these technologies have provided successfully in replacing the traditional teaching. Literature review. There are the flowing points through which we can tell about the use of technology in language learning. Students get engage themselves in target language for reading and listening. Students practice interpersonal skills when they interact through audio or text in the target language in English learning. Students collaborate with each other and the teacher anywhere or any time for the presentation task. They can work as per their need, and faculty and can access online content and computer programs which are managed by the teacher. In a technology, there is no humor as in man-to-man teaching. There is no interaction with language educator and the critical also. It cannot hold apprentices interpersonal skills as compared to real world. Intercultural competence is again through human interaction and the meaningful experience of language teaching and education. The teacher use content, knowledge, research, informed teaching strategy, and effective teaching through supporting language learning. Some students struggle for acquiring through internet, including support resource. For example, Yeah, a student please come on your last slide. Your last slide. Conclusion. Yes. This study Yes. indicates that using technology in learning English language is very essential. Having such technological tools in the classroom allows the teacher to use different methodology and approaches in teaching his or her student. In addition, the student that we talked about proof that technology is one of the important backbones in modern era. It is very helpful in facilitating topics and assisting the teacher with the lesson. However, in the Kusitran public school, we are suffering from lack of technology defense, which is real a bigger disaster of our education sector. Moreover, there are school in the system which has provided this necessity, but they are private schools. So it is the government responsibility to provide such technology device to public school as well in order to maintain the equality between the society and to protect the rights of the lower class people. And the end of the study, it appears that technology these days are very important in our lives and especially for teaching learning. Good. Very good. By my side. Very good. I'm Thank you, happy. sir. Yeah. Now over to Professor Bipin sir for the concluding remarks of the session. Suman, Sharing. yeah. Yes, Let sir. me speak a few words to them. Yes. Suman and Shruti, if we ask you to use technology, will you use it in the classroom? We will Suppose try. if I am a teacher,
If I'm a teacher, if I ask you to use technology in the classroom, will you allow it? Will you accept it? एक्सक्यूज मी, कल्याणी मैडम आपको क्लास में पढ़ाती ना यूज, और आप भी यूज करते हैं ना अपने जतिउदय, तो बताइए ना सर को, प्रॉपर्ली यूज इन आवर क्लासेस। सर प्रोजेक्टर वगैरह से यूज किए जाते हैं सब पढ़ाई के लिए। गुड। PowerPoint भी करते हैं आप यूज? उसमें सर प्रोजेक्टर में कुछ डायग्राम वगैरह के थ्रू भी समझाया जाता है, लाइक ऑडियो हो गया, वीडियो, उसके अकॉर्डिंग भी समझाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं अभी? हम कैसे जुड़े हुए हैं? हम कैसे जुड़े हैं अभी? ठीक है ना? तो आपने कुर्दिस्तान का एग्जाम्पल दिया है, आप यहाँ का एग्जाम्पल। कुर्दिस्तान कहाँ पे है? ये गवर्नमेंट स्कूल्स इन कुर्दिस्तान आपने दिया ना एग्जाम्पल कंक्लूजन में। आप इंडिया का एग्जाम्पल दीजिए। वी हैव नंबर ऑफ स्कूल्स। ठीक है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। ठीक है, हैट्स ऑफ टू योर टीचर्स। ठीक है, प्रोफेसर्स ऑफ इंग्लिश जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, स्पेशली द डायरेक्टर प्रोफेसर मंजूशी इज ऑलवेज विद यू, and Professor Lal is also with you, right? Because you have given opportunity at very early stage. You should appreciate, you should all be thankful to your teachers, right? And to your management also. आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपना स्किल शोकेस करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा कीजिए। वेरी गुड। टुडे यू आर 4, टुमारो इट शुड बी 20, 20, 30, 40, right? Next time students Professor Aswini yes, sir is also trying to say. I would like to comment that all the presentations were of very high standard. Slides were very good, and I will agree with Professor Bipin Sharma that and the labor done by director and the staff of the university and Dean Professor Lal. And I would like to know from Professor Bipin Sharma very shortly, what are the measures used in your country, Saudi Arabia, for the teaching and learning of English language and other languages, because there are different languages in your country, and how your education system is different than from India, and what do you suggest for the Jyoti University? Sir, if you ask me practically, of course, we have plenty of resources here. There is no dearth of resources here. There is no dearth of money and everything. Everything is there. Only thing is how to make effective use of these resources. The requirement is easy, but how to use it effectively, right? I have carried out so many researches. I have written so many research papers, how to use social media in the classroom, teaching, like WhatsApp, Facebook, other things. So I found mixed results, pros and cons. They also allow us, but there is a barrier here that we cannot cross that barrier. Cultural barrier, we always say, mention. And we are very open into our system. We can do whatever we feel like, but here we are allowed to do, but there is a limit to that, and we are not supposed to, because we have to respect every norm of the society and the educational institution. We have smart boards. We usually use smart boards, and moreover, every student is allowed to use mobile phone. Okay, it's up to the teacher up to what extent he, and we communicate usually on WhatsApp. Especially we have had the Blackboard system during COVID, right? And we were teaching that through Blackboard only, but still it is in existence. Every communication takes place through the Blackboard system, and whatever we upload, it directly goes to the student's profile, because they are equally connected to us. So it is a two-way process, not one-way process. It's online also, it's offline also. So you have to be on toes. Means blended mode. Blended mode. Blended mode. Plus, we have the sound examination system like formative assessment and other parts also. So now we have a tri-semester system which is running very successfully. Here, and उसमें क्या है, बच्चों पे थोड़ा दबाव कम पड़ता है, छुट्टियां कम होती हैं of course, but बच्चों को थोड़ा सा कम सिलेबस मिलता है करने के लिए. But there are many. Every system has got pros and cons. When I was in India, it did not work. Tri-system. We implemented tri-system in our university, but it did not work. No. Because our university since last, we have in semester in our engineering, and there was trimester. A tri-system. Good. Oh, Trimester good. system. Yeah. So somewhere it works, somewhere. So every institution has pros and cons. But मुझे अच्छा लगा कि students have come up with the such good presentations. ठीक है.
कुछ होता है ऊपर नीचे, but it takes time. They are in second year now. So, sir, We your are concluding still remarks learning for at the this session, your concluding remarks in some lines हाँ. of the session. Sir, I will just conclude with let me in nutshell say overall very good presentations by all the participants, and I have seen few participants, they are from other universities also. So it is a blend of both external and internal, right? And we started with the Miss Hajra Hublikar, who explored the use of technology in reality, and followed by Neha Sharma. She emphasized on aims and objectives of new education policy, and she has given some suggestions also, valid suggestions regarding teacher professional development that I'm sure you all are doing through this also, and additional activities. And then followed by, we have a Darshana Kumari, she did in Hindi, and the Sonika Saharan, of course, geography. We could not manage properly to that extent. Then again, Neha Sharma joined, and we did it for the use of technology, because most of the students, they adopted the technology as their subject, key Same. areas. Yeah. So she suggested us 10 tools, and I'm sure if you try to explore those tools, and out of those, some may work, some may not work, but I'm sure the effectiveness of the tools will be at par with the student, because everyone uses mobile phones. Now it's up to you whether you allow them to use mobile phone. That is, a policy issue. So we should not get into that. Then followed by the Puranmal Nagar, he also critically evaluated the NEP-2020, and he tried to analyze the policy in depth, followed by a few recommendations. And he emphasized and concluded that teachers, they play a very central role in the education process. Then the couple of good presentations were in geography, which I liked the most, frankly speaking, and it was on climate change and global warming. It is a very critical issue nowadays. You see the temperature. You can see the rainfall. Very When I call significant. my the rainfall, I mean there is rain outside. I said, "Come, it is May." No. So this is all about this. And then the Mr. Parashar, he rightly pointed out about the low level of groundwater. It's a very common problem nowadays, and I The don't know how burning to deal with problem it. of Rajasthan. Because ministries are also working on we can say rain harvesting system, and there are so many reasons. I mean, why these? Because every measure, every recommendation needs funds. So if you have funds, you can go ahead. If you don't have, the people will come. You go for STP, establish STP. Go for the rain harvesting system to your university, but go to public university, they don't have. So these anomalies, we have to cater to these anomalies, okay, at the higher level. So let's have the bottom-up approach and top-down approach both together. And special thanks to the management who allowed you, who granted you with this wonderful opportunity to the top gentry, that is President, sir, I think he was available in the morning. Now the Dean Professor Lal is there with us, and Director Professor Manju Sharma is with us. And many thanks to the team. We always forget the team who is working to run the show, especially the organizing committee, right? And especially the people who contact every now and then, right? For the last, I think I see I'm in your group also and Professor Suman group also. So Yes. you keep communicating to, I mean, day and night. I can see the efforts you put in to run this show, and thank you very much for the invite, and I look forward to some more wonderful opportunities that fall ahead to us, and I'm always keen to collaborate, serve in any capacity that you feel like. Whenever you need my services, I'm very quite open. Thank you very much once again Thank to you, all sir. the Thank students. you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks a lot on behalf Thank of you, the whole sir. fraternity of Jyoti Vidyapeeth Women's University organizing team. We all welcome and appreciate your report you have taken, and the very meaningful and significant remarks for the scholars who are going to play a very vital role in their career. We are sure, and
We are delighted to see you here in our this session. Thank you very much for your joining and for your assurance that you are open for collaboration with us. Thank you Thank you, very sir. much. Thank you, Professor Ashwini. Vipin Thank you, sir, you everyone. are Thank you good very much. motivator. You are very good motivator. Since Really. on 2 p.m. We all again are we to have each other. after lunch our session is going to be started from 2 p.m. and it is 3:40. So we are left with 20 minutes only for lunch. 40. It is why we are leaving this session for some moments and again we are joining at 2 p.m. Thank you, sir. Thank you very Right. much. Thank you, sir. Namaskar, madam. Thank you, sir. Thank you so much. Namaskar. Really appreciate. Thank you. Thank Namaskar. you. Jai Professor sir. Thank you, madam.
ठीक है, आप ऐड हो गए मोनिका मैम। Are you getting me? Monica Yadav, please mute yourself. Hello. Ji, we are listening, sir. I'm also listening you now. Okay, thank you very much. Ultimately, Just wait for 1 minute. Okay. Should I start? Sir, just wait, please. Just wait. Okay. So, welcome to the post-lunch session of our second day of the international conference on NEP 2020, Catalyzing Quality Academic Multidisciplinary Research and New National Research Foundation. This conference is being hosted by University Harbind Khurana Chair under the collaboration of Northern Illinois University, Chicago, USA. And today is the second day of this international conference, and the post-lunch session is for political science and public administration. And the experts who are supposed to join today in this session is session chair Professor Meenakshi Chaturvedi Madam. Yes, she is connected with us. She is chairing the session. She is from Department of Political Science, University of Rajasthan, Jaipur. And keynote speakers in this session will be Professor Gopal Krishnan Sharma ji, Bikram University, Ujjain.
Professor Gopal Krishna Sharma ji, yes. Okay, sir. And Professor Indrajit Singh Sodhi. Yeah. Professor Indrajit Singh Sodhi, Public Administration, Professor. Namaste, sir. Namaste, madam. Namaste, madam. And Head, Rajiv Gandhi Institute of Youth Department. Yeah, I hope that technical team, Professor Indrajit Singh Sodhi, is connected with us. Yes, he is connected. He is connected? Yeah, Professor Indrajit, are you listening us? Okay. Professor, बंद कर दे. So, first of all, on behalf of the organizing team of this international conference and the whole fraternity of Jyoti Vidyapeeth Women's University, we welcome to all the esteemed guests, our chair, session chair, Professor Inakshi Chaturvedi ji, Professor Gopal Krishna Sharma ji, and Professor Indrajit Singh Sodhi ji. We welcome you all, and we are expecting that this session is going to be beautiful, very meaningful, very historical under your guidance. Madam Meenakshi is known for her quality research, a very visionary approach toward the academic and research. She is chairing the session, and Professor Gopal is also here. So, first of all, I request to Professor Inakshi Chaturvedi for your few words to the participants and for all the presentators. Okay, thank you. Good afternoon. First, I would thank to the organizers and very efficient team heading Mr. Lal, Dr. Manju Sharma, Professor Ashutosh. I don't know all the names, but efficient team. You have given me the opportunity. I'm feeling great that this event, due to your vision, have come true. And this event is very great because of two main reasons. First, that this event is organized by first established women university, and the very relevant topic, contemporary topic, NEP, New Education Policy. And I feel honored and privileged to be the part of this prestigious conference organized by the university. Myself, Inakshi Chaturvedi, Department of Political Science, retired in 2019 and joined the department in 1984. I did my postgraduate, MPhil, PhD from the same university and lived in the same campus. Half of the life I spent in the university campus. I was the first elected member of University of Rajasthan syndicate. I am mentioning this because this was not necessary, but I am mentioning because this is women university and this is the motivation and inspiration for women folk. That's why I mentioned it. My co-panelist is Professor G.K. Sharma and Professor Indrajit Singh Sodhi. This is a very unique combination because Professor G.K. Sharma is in the category of my mentor, guide and philosopher and very good researcher. And Professor Indrajit is in the category of my junior but efficient and academician scholar. And this is indeed a matter of pride that you are sharing this stage with your young scholars. So in this way, this panel is very unique. And the main theme of this panel is, as you know, that NEP 2020, but many sub-themes are there. The scholars will present some papers, I think,
on sub-themes, and my fellow panelists talk on specific two main two topics. For example, emerging trends of Indian politics, issues, challenges and possibilities, democratic decentralization, e-governance, democracy and political institutions, good governance, democracy, need for the electoral reforms, impact of civil society, ethics in administration. And aim of education in ancient India was not just the acquisition of knowledge, but for complete realization of liberation of the self. Sa vidya ya vimuktaye. That knowledge which is for liberation, not for the informations only. Education must move towards less content, towards more learning. After intervention of Macaulay, as we know, our education system was brutally destroyed, and literally we have been enslaved by British educational system. Our values and rich legacies are ruined. After getting political independence, many other education policies have come, but this NEP 2020 is very unique in so many aspects because it focuses on access, equity, quality, affordability and accountability, and aims to make education more inclusive and equitable to all, with a special emphasis on marginalized communities. And it is multidisciplinary, it is holistic, and basic main component of this new education policy is that we have combined the Indian knowledge system with the other existing emerging trends of the education. And according to Gandhi, the aim of this education policy is we should open the windows for the fresh air, but we should stick to our values, traditions that we are lacking in last policies. So the main focus of this NEP is to synthesize with the Indian knowledge system and modern system of the education. Now, I request Professor G.K. Sharma to present his talk or his topic. Welcome, sir. Thank you, madam. Thank you very much. I'm very happy to see you in this seminar after a long time. I feel proud that you are chairing my session. You know, it was wonderful to see the themes of the seminar. So many sub-themes are there, but basic concerns are very expressive. Because, you know, I think that the organizers, whosoever decided the themes of the seminar, they are much concerned about the democracy in India, because so many topics are there related directly or indirectly related to democracy of India. Say, for instance, emerging trends in democracy and decentralization. Then again, democracy and decentralization and good governance. Whatever theme you e-governance, because every sub-theme is related to the issue of democratic setup in India. And I'm not going to discuss much because I will give only 10 minutes. It's 2:16. I'll try to discuss in both the languages because students are there. ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का, ये बहुत एक लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं। हम जानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन की भूमिका क्या रही है। हम जानते हैं what role the Constitutional Assembly has played for the democracy of this country, what imagination they had about the democracy. You know, I'm aware of this fact that Dr. Ambedkar has once said, whatever constitution we give, it will depend who are going to conduct the constitution, कौन संचालन कर रहा है उस constitution का, क्योंकि वो सारा मसला हमारी आंखों के सामने है। इसलिए ये सारे कंसर्न जो इन थीम्स के माध्यम से आ रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुड गवर्नेंस की बात है या ई गवर्नेंस की बात है जो इस थीम में है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है, ये सारी चिंताएं उसी डेमोक्रेटिक सेटअप को ले गए जिसको लेके आज हम बात कर रहे हैं इस सेमिनार के माध्यम से। तो हमारी डेमोक्रेसी में बहुत विस्तार से जाना संभव नहीं है, क्योंकि 10 मिनट में जैसे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में डिबेट बोला करते थे 5 या 6 मिनट में, I'll try to conclude within very and brief, ये बल्कि सूत्रों में बात करने की कोशिश करूंगा मैं। You can take time because you are leading the. But organizers have limitations, madam. So I will talk to all of you in जैसे सूत्रों में बात करने की बात मैं आपसे कर रहा हूँ,
We know that this democracy has been developed in India because of the British contact. I'm not going to do much in the history, but you know, we have been given that training of democracy in India. और उसी ट्रेनिंग के चलते हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की और बहुत सोच समझ के, उसका कोई चारा नहीं था। देश बहुत सारी रियासतों का देश था, बहुत सारी मतलब हमारा समाज उसके लायक नहीं था उस समय जब हमने डेमोक्रेसी अप्लाई, क्योंकि हमारा सामंती समाज था, शिक्षा नहीं थी, अशिक्षा थी, गरीबी थी, और ये एक वो मॉडल था जो एकदम एफ्लुएंट सोसाइटी में वो सूट करता है। हमने ब्रिटिश से लिया था, ब्रिटिश ने उसके लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने उसको अडॉप्ट किया था। खैर, आई एम नॉट गोइंग टू इनटू डिटेल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री इन इंडिया, वो 74 साल 75 साल 70 साल पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव गॉट वंडरफुल लीडर्स टू एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी। द फर्स्ट ऑफ ऑल वाज पंडित नेहरू। ही वाज डेडिकेटेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेट, ही वाज सिंसियर अबाउट एस्टैब्लिशिंग द डेमोक्रेसी इन इंडिया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उनके मन में बहुत सम्मान था, ही ट्राइड। एक ही अपवाद है उनके पूरे कार्यकाल, मुझे मालूम है अपोजिशन के लोगों को चुनाव जीतने के लिए पैसा दिया करते थे, वो चाहते थे वाजपेयी जी उनके, इसीलिए दीवाना सिंह किस तरह से एक लीडर हुआ करता है देश में। एक आध एक्सेप्शन जरूर उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम में हो सकता है, जब उन्होंने अपनी बेटी की जित 59 में सरकार गिरा दी थी, वो केवल अपवाद के रूप में एक माना जाता है कि उनके पूरे डेमोक्रेसी के इस्तेमाल में वहां उनसे गलती हुई थी। और उसके बाद आप देखते हैं कि हम आगे बढ़े और एक 40 साल तक लगभग ये डेमोक्रेसी एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में रही, बिकॉज दैट पार्टी हैज प्लेड वाइटल रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। उसमें दूसरी पार्टी नहीं थी, मुस्लिम लीग और थी, अपना पाकिस्तान लेके चली गई। तो कुल मिला के बहुत कम दल थे। कांग्रेस वाज लीडिंग द कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 4 decades, 40 years। अब जाहिर है पावर एक साथ अगर किसी के पास रहेगी तो गड़बड़ होगी, इसीलिए कहा है कि एब्सोल्यूट पावर करप्शन, एब्सोल्यूट वाली जो बात है वो अपनी जगह सही है। अल्टीमेटली उस पावर का सेंट्रलाइजेशन इस देश को आपातकाल के गड्ढे में ले जाके पहुंचा, क्योंकि यदि पावर बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं होगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अगर तबाह हो जाएंगी, तो आप ये समझिए कि देश इमरजेंसी के गड्ढे में गिरा, जिसको आज भी हम काले चैप्टर के रूप में देखते हैं, काले अध्याय के रूप में देखते हैं। तो वो हमारे लिए एक सेटबैक था बहुत बड़ा। उसके बाद हम फिर डेमोक्रेटिक पटरी पे आए। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो परिवर्तन होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा की रोल है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन होते रहे। सिंगल डोमिनेंट पार्टी का इरा खत्म हुआ और उसके बाद में कोलिशन का शुरू हुआ हिंदुस्तान में, और धीरे धीरे चल के कोलिशन की गवर्नमेंट में तो उसके भी बहुत सारे अच्छे गुणों को देखता हूँ कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि अगर एक पार्टी की डोमिनेशन की गवर्नमेंट होती है तो खतरे कई किस्म के होते हैं जो अल्टीमेटली देश को इमरजेंसी की तरफ पहले भी ले जा चुके हैं। तो कोलिशन गवर्नमेंट में आया, बहुत सारी दिक्कतें थी उसमें, लेकिन फिर भी फेडरल स्ट्रक्चर मजबूत हुआ, मिलीजुली तरीके से काम करती सरकारें, राज्यों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था और एक दूसरे पर नियंत्रण था, पॉलिसी के आधार पर काम करती थी। तो एक दौर भी हमारे देश में निकला आफ्टर इमरजेंसी, जब कोलिशन सरकार का दौर आया। बट नाउ आफ्टर दैट एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट इस देश में हुआ कि जो मेन अपोजिशन पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। आप जानते हैं 84 में उसका 2 सीट थी, 80 में उसने अपना नाम बदला, भारतीय जनसंघ से उसकी शुरुआत हुई थी। एक निश्चित विचारधारा, निश्चित कमिटमेंट लेकर पार्टी की स्थापना की गई थी, उसकी और उसके ऑर्गेनाइजेशंस की। उस कमिटमेंट के साथ वो पार्टी लगातार काम कर रही थी, पूरी धुन के साथ काम करी, पूरा उनका जो कैडर है वो पूरी ताकत से उस पर लगा हुआ था लगातार, एंड दैट प्लेड द रोल अल्टीमेटली। उसने फ्रूट पैदा किए एंड 14 तक आते आते इस देश में इस पिछले दशक में ये मान के चलें कि हम एक बड़ी नेशनल पार्टी को होता हुआ देखते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे सामने है। अब कांग्रेस इरा इज ओवर, बहुत अपीयर है, दिख रहा है सामने कि इट्स बीजेपी इरा लेड बाय बीजेपी। अभी भी देखिए आप, बुद्धिमत्ता ये है गवर्नमेंट बीजेपी की है, बट इट इज वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ कोलिशन। चाहे कोलिशन पार्टी छोटे छोटे सीटों के हों, छोटे छोटे एरिया के हों, छोटी छोटी पार्टियां हों, उसमें आना जाना लगा रहता है उस कोलिशन के साथ में, लेकिन जानबूझकर बीजेपी प्लान करके अपने आधार को बढ़ाने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोलिशन पार्टनर के साथ काम कर रही है। अब यहाँ जो आपकी चिंता है मैं उस पर आऊंगा सीधे सीधे, क्योंकि मेरा बहुत साफ मानना है, ऑल ऑफ अस नोज वेरी वेल कि डेमोक्रेसी सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही डेमोक्रेसी को हमारे देश में अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट की है, हमने प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट, यद्यपि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंदिरा गांधी तक आते आते हमने प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट के रूप में देखा है, जैसे इंग्लैंड में भी हुआ है। सब जगह एक आदमी के नाम पे वोट पूरे हिंदुस्तान में पहले ही मिलते रहे और अभी भी मिल रहे हैं, क्योंकि वो कन्वर्शन फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम टू प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट का उदाहरण है। ऐसी स्थिति में जो कठिनाई पैदा होती है वो ये कि हमें उन संस्थाओं की चिंता करना बहुत जरूरी है जो आपके इस सेमिनार के अलग अलग थीम में दिखाई दे रही हैं। उन संस्थाओं की चिंता करना जरूरी है जो संस्थाओं की नींव पर डेमोक्रेसी काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको पैदा किया तो डिबेट किस बात की है? जाहिर है कि सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है। संसद हो या पार्लियामेंट्री हो, पार्लियामेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या स्टेट के गवर्नर्स, कोई भी एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर,
इज द क्रिएशन विच हैज बीन डेवलप्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब संविधान प्रसूता है सारी संस्थाएं। तो जाहिर हम सबसे पहले अगर सबसे ऊपर जनता को रखेंगे तो जनता के लिए जो दस्तावेज हमारे सामने है वही हमारी बाइबल है, वही हमारा धर्म है, वही हमारी गीता है, वही हमारी कुरान है, वही हमारी रामचरितमानस है। तो हमें राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए उस पर उसके प्रति सम्मान का भाव पॉलिटिकल लीडरशिप में उनमें अगर नहीं होगा तो मान के चलिए कि हम डिरेल्ड हो जाएंगे और कई देशों का जो हर्ष हमारे सामने हो रहा है हम उस खतरे की तरफ न बढ़े। ईश्वर से यही प्रार्थना मेरी। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में इंस्टीट्यूशन से, अब पार्लियामेंट को देखिए आप, ये अभी नहीं पहले भी पार्लियामेंट का बेसिक काम है कानून बनाना, तो लॉ मेकिंग फंडामेंटल वर्क, फंडामेंटल रोल ऑफ पार्लियामेंट। बट कई दशकों से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के सेशन जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहे। इवन इन मनमोहन सिंह इराक की बात करें चाहे मोदी इराक की बात करें, सेशन नहीं हो रहे, कानून बन रहे, धड़ल्ले से बन रहे कानून, लेकिन सेशन नहीं हो रहे। क्योंकि पार्लियामेंट वो जगह है जहां देश की जनता का तकदीर तय करने वाले कानून बनते हैं। आई अटेंडेड सम सेशन एज ए स्टूडेंट, माई स्टूडेंट लाइफ, जब डॉक्टर भाई महावीर या डॉक्टर मधुलिमा जी या जॉर्ज फर्नांडिस या अटल जी जैसे लोग भाषण दिया करते थे, हम लोग दर्शक दीर्घा में बैठकर उनको सुना करते थे। वो दौर खत्म हो चुका है, इक्के दुक्के वक्ता हैं और उनके पास समय की भीख मांगते रहते हैं अपने स्पीकर से। बाकी ढेर सारे लोगों को समय मिलता है जो बहुत नॉन सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं लेकिन पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए तो सबसे महत्वपूर्ण है पार्लियामेंट, उसको अपने इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करना है। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और सुप्रीमेसी की चर्चा पहले इंदिरा गांधी टाइम पे, यू नो, आई हैव रिटन द थीसिस ऑफ एमए ऑन द डिस्प्यूट बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट व्हेन दिस गोलकनाथ प्रकरण से लेके तो केशवानंद भारती का कहानी सामने आई और बेसिक स्ट्रक्चर तक बात पहुंची। फिर बेसिक स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया इंदिरा गांधी टाइम पे, चाहे जिस तरह से जजेस की नियुक्ति उन्होंने की 3 की उपेक्षा करके। तो सुप्रीम कोर्ट अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वॉचडॉग है वो, उसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की रक्षा करना है, उसे डेमोक्रेसी की रक्षा करना है, उसे संविधान की रक्षा करना है, उसे स्टेट सेंट्रल रिलेशंस की रक्षा करना है, उसे नागरिक जीवन की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूमिका निभाना बंद कर दिया, आप सोचिए इस देश को गड्ढे में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस सुप्रीम कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर जजेस अपनी नैतिकता खो देंगे, आप सोचिए क्या होगा इस देश का। हमारे देश की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हमने तमाम तीसरी दुनिया के देशों से अलग किया। हम आप देखते हैं अड़ोस पड़ोस में कैसी अराजकता खत्म हो रहे हैं, सारे के सारी पड़ोसी कंट्रीज बड़ी मुसीबत में है। क्यों है? क्योंकि हमारी तरह उन्होंने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप नहीं किया, हमारी तरह संविधान उन्होंने नहीं बनाया, हमारी तरह डेमोक्रेसी में उनकी आस्था नहीं रही है। पर दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या उसके बाद के नीचे की कोर्ट भी यदि वो पॉलिटिकल हस्तक्षेप से प्रभावित होंगे, यदि वो नेताओं के साथ कत्थक करेंगे, तो आप मान के चलिए कि बहुत मुश्किल है कि हम डेमोक्रेसी को बचा पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग। मुझे याद है मैंने देखा है अपने टीचर के रूप में जब रोल प्ले किया करता था। मेरे विश्वविद्यालय में 11 जिले से और एक इलेक्शन कमिश्नर आया था, अचानक कहाँ से पैदा इस देश में हुआ था मुझे मालूम कैसे उसने ये रोल प्ले किया। दूर दूर के झंडे नजर आते थे, न डंडे नजर आते थे, बैनर नहीं आते थे, न कोई प्रचार प्रसार होता था। इतना आतंक था सेशन का। उस समय कांग्रेस लीड कर रही थी दुनिया को, भारतीय लोकतंत्र को। वो आतंकित थी कांग्रेस भी और दूसरी पार्टी में डरती थी। तो उसकी मर्यादाओं में रह के सारे चुनाव होते थे। और याद रखिए उस समय हमारे पास इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि आप खेत खलिहान में बैठकर, किचन में बैठ के, मजदूर अपनी फैक्ट्री में बैठ के, मैं अपने घर ड्राइंग रूम में बैठ के, विद्यार्थी अपनी क्लास में बैठ के, समूह में बैठ के, व्यक्तिगत रूप से बैठ के प्राइम मिनिस्टर के मन की बात सुन लेते हैं हम लोग। क्योंकि अब डेवलपमेंट काफी हो चुका है। एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हो रहा है कि हमारे पास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, तमाम तरह के मीडिया के चैनल्स का ये जो साधन है, इन साधनों ने हमारे देश में डेमोक्रेसी को जड़ों तक हर आदमी जानता है हर चीज को। उसका मोबाइल है, यूट्यूब है, नई समाचार है तो यूट्यूब में वो देख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को अगर देश के हित की जरा भी चिंता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कंसेंसस से ये तय क्यों नहीं करती कि चुनाव प्रचार के तरीके बदले जाएं। करोड़ों रुपया खर्च चुनाव की रैलियों पे क्यों होता है? क्या होता है रैली पे करने से? आप जानते हैं कितना यूज, वो दौर देखा है मैंने अपनी आंखों से, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक एक झंडे डंडे नजर आते हैं। तो आप देखिए पूरा देश पोस्टरों से पटा है, लीडर्स के, पूरा देश पार्टी के नारों से पटा है। मतलब वो जो इस दौर में जबकि आवश्यकता खत्म हो चुकी है, हमें इस पर विचार करना होगा। क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म भी आपकी इस एक महत्वपूर्ण थीम है कि इलेक्शन न केवल मीडिया की बात में इलेक्शन की बात कर रहा हूं, बल्कि इलेक्शन के साथ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। कमीशन को ध्यान रखना होगा कि जो निर्धारित किया है संविधान ने, चुनाव आयोग का दायित्व निर्धारित किया है कि किसी तरह से चुनाव आयोग को सेना का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मजहब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हम देख रहे हैं सर, मे आई रिक्वेस्ट प्लीज फॉर कंक्लूजन।
Yes, I have to conclude because in 10 minutes Sir, you cannot. sir, because Ultimately, we have finally, I want to tell. Scholars are actually very much curious to give their presentation before you all. I started with this. I have only 10 minutes with me, Yes, and sir. I'm Yes, just sir. likely to complete 10 minutes. Yes, आखिरी sir. में Yes. कहना चाहूंगा, बिल्कुल सूत्रों में कहना चाहूंगा कि चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे बाकी न्यायालय हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे फिर सबसे खतरनाक रोल मीडिया है, वो चेतना बनाता है, वो मीडिया हो, अगर ये सारी संस्थाएं अपने धर्म का निर्वाह नहीं करेंगी तो आप यकीन मानिए फिर ईश्वर के पास ही हमारी गति मुक्ति की व्यवस्था होगी. थैंक यू वेरी मच. Over to Inakshi ma'am. Over to Inakshi ma'am. Okay. हाँ सर. Madam, हाँ there is one Professor Indrajit Singh Sodhi is also here. Let us listen them. थैंक यू शर्मा जी. आपने जो भी समस्याएं, जो भी चुनौतियां लोकतंत्र की समक्ष या संस्थाओं के समक्ष बताई, उनमें से मेरा मानना यही है कि ये सब चुनौतियां हैं और आज की जो मुख्य थीम NEP जो है वो ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स पैदा करेगी जो इन चुनौतियों से मुकाबला करने में. Let us hope. चलिए. Thank you. Sir Sodhi, I invite Professor Sodhi to present. Thank you, madam. Am I audible? Yeah. Yes. Okay. Thank you. Thank you. Very much thank you to the Jyoti Vidya Peeth University, Women's University, their management and. Sodhi साहब, मैंने कहा कि आप हमारे यंगर स्कॉलर हैं, तो शर्मा जी से थोड़ा 2-3 मिनट टाइम कम लीजिएगा. मैं कम ही बोलता हूँ मैडम. Don't worry. So I'm thankful to all the management and Vice Chancellor and Madam Garg Madam and all the directors, Manju Sharma, and particularly thankful to Professor Inakshi Chaturvedi. She was my former guru and still she is mentor. Always I was inspired by her and Professor Madhukar Shyam Chaturvedi. I am in this position only due to few gurus, among them Professor Inakshi and Professor Madhukar. They stand topmost among my heart. So when we talk about public administration, as I'm in the discipline of public administration, we find a number of initiatives have been taken from since independence. If we talk about first Administrative Reforms Commission that was set up in 1968 and which submitted 20 reports 1968 to 1970. So it gave around 583 recommendations. After that, second Administrative Reforms Commission, if we talk about 2015 to 17, we submitted 15 reports. So we have seen a lot of upheavals up and down in the administrative reforms. But this new education has, we can say, plays a new platform for all the subject and discipline, particularly for social sciences, because it also emphasizes or give importance to some foreign university can set up their campuses. How far that will be relevant, that we can say after 5 years or 10 years relevant. But particularly if these all foreign universities have a collaboration with all the good universities in India, a number of central universities, state universities, and some private universities already have started initiative. Particularly, I believe it will be beneficial for the student because it gives flexibility. It talks about flexibility and will be relevant for the subjects of all the subjects, whether it is technology or social sciences or medicals, all the subjects. So when we talk about public administration, no doubt a number of universities, they are giving degree masters in public administration. Some university, except like Lucknow University, they give degree masters in public administration, MPA, not MA public administration. So we have to look into whether new education policy, how far it looks into the nomenclature of degree, whether the degree should be MA or master in public, like MA in sociology, whether it would be master's in sociology, M socio degree, or M pol science, like in some European or American university, they are already giving degree. So that is a very crucial question. And how far these young scholars and other faculty, they can play their role in the betterment of the education, betterment of the research, and how those research would be definitely relevant for the development of India, because India is a developing country, you know. So we require a lot of young scholars
young researchers' work, which can definitely give a directions to the government and play the role for interaction, for collaboration. And when we talk about public administration, definitely public administration has a good relation with political science. Both are going together if we talk about whether it is in the case of Union Public Service Commission civil services examination. But particularly in this 21st century, we have observed e-governance and ICT. And as we know, digital government has played a very important role. And we all have observed during the time of Corona pandemic period, throughout the world, only India stood best if we talk about digital government, because most of the people, they have done their, and that means exchange only in digital, not in cash, as it was observed in many America and European countries. So India definitely is marching ahead if we talk about that means digital government. So public administration definitely playing a very important role, and number of university also have started some short courses on diploma or postgraduate diploma in ICT, digital government, if we talk about, or we can say sustainable development. These all are interdisciplinary, which definitely helps everyone. So I believe this conference, 2 days conference, and definitely will give a platform to the young scholars, all those, and we are here to support everyone. Thanks to the organizers. Thank you. Be in time. Now, सोडी साहब, आपकी जो इच्छा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आगे राइज करेगा और NEP उसमें और एनहांसमेंट करेगी, ऐसा लगता है मुझे भी, क्योंकि इसके बिना पॉलिटिकल साइंस थियरी दे सकती है, कंसेप्ट दे सकती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन टोटली डिपेंड्स ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, और वी कैन call it by other names also. And now, sir, who are the scholars? They can present. Scholars, presentations. Sir, you are not audible. Sir, unmute. You are not audible. Not audible. Now you are audible. Sir, unmute. Sorry. Madam, I was trying to say, sorry for muting myself. We have a list of 15 presentators. Out of them, 9 are PhD scholars. No problem, sir. We just, no problem. And then other 6 are UG and PG scholars. So first of all, allow us to invite Monica Yadav, who is PhD scholar in political science. Sir, 15 scholars and 6 UG scholars. No. 9 PhD scholars and 6 UG PG students who are who are ready to give their presentation as per the list. In case of any network issue and others, they may deny also, but at least at present we have list of 15s. Okay. So we can give the scholars 5 minutes, and for UG scholars 3 minutes. How can you give, madam? It is for you to take decision. You are chairing the session, and panel can take Gopal Krishna Sharma sir can take decision, and other can take decision. It should be completed before 3:30. No time है उसका 3:30. Yeah. So Monica Yadav, PhD scholar, first presenter is Monica Yadav. Please start your presentation as per the permission of the chair. Monica, you can start. Monica, your voice is not coming. Title is obvious. That is on the screen. Yeah, title is obvious, but voice should be. The girl is not there. No, she is here. Monica, start speaking. Technical team, please coordinate with Monica Yadav. She must unmute her while she is speaking, I think. मोनिका आप बोलिए. माइक ऑफ है उसका शायद. Monica, you should unmute.
Technical team, please coordinate with Monica Yadav. Yes, sir. She has muted her mic. This is all problem. I hope Praveen Kumar is here connected. Praveen Kumar. Akshay Kumar Yadav. Akshay. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, you speak. You start your presentation, then after you, Monica will give your presentation. Akshay, you should present. Ji ma'am. What is your problem and what are the findings? Then after, say something. What is the problem of? Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. My research paper topic 15वीं लोकसभा में मतदान व्यवहार के संदर्भ में एक अध्ययन. ओके. बोलिए भाई, बोलिए ना, कंटिन्यू बोलिए, टाइम कम है आपके पास. आपकी क्या हाइपोथेसिस है इसमें? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं. Already 5-7 minutes are over. आप बोलते भी जाइए, स्क्रीन शेयर का भी प्रयास करते रहिए. जी मैम. मेरा टॉपिक है 15वीं लोकसभा में मतदान व्यवहार के संदर्भ में अध्ययन. एब्स्ट्रैक्ट. लोकतंत्र के लिए मतदान व्यवहार होना बहुत जरूरी है. मतदान लोकतांत्रिक राजनीति के. अक्षय जी, बैकग्राउंड की तरफ हाइपोथेसिस और आपकी क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम में मतदान व्यवहार के दौरान जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, जाति, बाहुबल, धन, इसके बारे में मैंने इसका अध्ययन किया है. इसमें मैंने प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों आंकड़ों का प्रयोग किया है. अब पढ़ो इसको, टाइम कम है पढ़ने का. इसलिए किसी भी लोकतंत्र में हम जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हैं तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए हमें इन सभी तत्वों का समावेश करना चाहिए. मेरा एब्स्ट्रैक्ट है मैम, मतदान लोकतांत्रिक राजनीति के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक है. लोकतांत्रिक सिद्धांत और व्यवहार की आपके अध्ययन का उद्देश्य क्या है? जी मैम. क्या उद्देश्य है आपके अध्ययन का? पर्पस ऑफ उद्देश्य ये है 15वीं लोकसभा का 15वीं लोकसभा मतदान समस्याएं है क्या क्या समझ, क्षेत्रीय दलों का क्या. जी मैम. मैं आवाज नहीं आ रही आपकी. आप एक ही स्लाइड को बार बार प्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़ा चेंज भी तो करिए अक्षय जी. मैडम जो पूछ रही हैं कि आप प्रॉब्लम और सॉल्यूशन बता दीजिए. आप इश्यू आ रहा है, बीच में आवाज नहीं आ रही. इसका सॉल्यूशन क्या है, इसमें आपने क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं, ये बता दीजिए. इसके उद्देश्य बताइए. मैंने सर 15वीं लोकसभा का इसमें दूसरा उद्देश्य ये है मैम 15वीं लोकसभा के मतदान. आजकल के स्कॉलर्स सुनते कम हैं. दिस इज द इशू. अक्षय जी ने शायद नेटवर्क इशू हो गया. हाँ.
हाँ देख रही। मोनिका जी आपको सुनाई दे पा रहा है मोनिका? यस सर मोनिका। चलो आप प्रेजेंट कर दीजिए वो जब तक रेडी होते यस मैम। यस सर। आई एम मोनिका कुमारी, PhD स्कॉलर, ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल साइंस। आई एम ऑडिबल सर? हाँ मैडम इनको दे दिया जाए परमिशन, मीनाक्षी मैम। हाँ बोले आप। यस आप बैकग्राउंड में PPT शेयर कीजिए। आपका PPT शेयर कीजिए। शॉर्ट में बताइए। हाँ जी मैम। 2014 के उपरांत मेरा टॉपिक है मैम 2014 के उपरांत भारत की परिवर्तित विदेश नीति। नेक्स्ट मैम। सारांश। सारांश नहीं, आपने इसमें क्या काम किया है? जी मैम। भारत की विदेश नीति के जनक नेहरू अपनी नीति नियोजन में विश्व शांति को प्राथमिकता दी। इसके अनुसार भारत सभी देशों में विशेष रूप से प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। पंचशील पर भारत 28 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए। तब से यह अन्य देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया है। पंचशील के नीचे सूचीबद्ध 5 नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। क्षेत्रीय अखंडता। 2014 के बाद की बताइए आप, पहले की जरूरत जी मैम। भारत की विदेश नीति सभी मोर्चों पर सुरक्षा हासिल करते हुए भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार पूरा करने की आवश्यकता को आकार लेती है। आधुनिक भारत केवल राजनीतिक चरों पर ही नहीं बल्कि संरचनात्मक कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। भारत एक महान शक्ति बनना चाहता है और ऊर्जा, पर्यावरण, व्यापार, मानवाधिकार, सुशासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ जिम्मेदारी को साझा करना चाहता है। अब भारत इंडो पैसिफिक में अपने पड़ोस के साथ विश्वसनीय संतुलनकर्ता के रूप में माना जाता है। क्योंकि चीन की समुद्री मुखरता बढ़ती है जिसे भारतीय कूटनीति के लिए जगह बन रही है। मोदी न केवल भारतीय कूटनीति के संचालन को एक नई शैली देने में सक्षम है बल्कि भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य की एक भावना भी है। 2014 में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करने वाली एकमात्र महाशक्ति होने से लेकर चीन सैन्य आक्रामकता के खिलाफ मजबूती से जवाबदेही कार्रवाई करने के लिए भारत ने की। दूसरी ओर बिना किसी औपचारिक गठबंधन के अमेरिका के साथ अपने सहयोग बनाए घरेलू क्षमताओं और अपनी बढ़ती विदेशी सहायता को के संभावित लाभकर्तियों के रूप में अपनी आर्थिक निर्भरता के रूप में तेजी से जागरूक हो गया है। भारत अन्य देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप का विरोध करता है। भारत की विदेश नीति जो एक द्विध्रुवीय थी अब वह बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बदल गई है। कई राजनीतिक नतीजे हैं जैसे भारत के निकट पड़ोसी देशों के साथ विस्तारित पड़ोस के साथ संबंध, उनके खाड़ी राज्य, मध्य एशिया देश और शामिल हैं। एशियान के कनेक्टिविटी, वाणिज्य, संस्कृति और जनसांख्यिकी दृष्टिकोण के आधार पर नए संग्रह देखे गए हैं। भारत को यूएनए में 192 वेद मतों में से 184 प्राप्त हुए। इस प्रकार भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर सदस्य सदस्य के रूप में चुना गया। भारत जर्मनी के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल सदस्य नहीं होते हुए भी भारत को सदस्यता दी गई है। वैश्विक मांग। जी सर मैम। मोनिका सुनो, 2014 की विदेश नीति और उससे पूर्व की विदेश नीति में क्या तात्विक अंतर है? मैम पहले 2014 से पहले मैम भारत यथार्थवादी था और अब मैम हाँ मैम अब भारत केवल संरचना और उसमें मैम अपने मतलब विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के बहुध्रुवीय यूज कर रहा है मैम। कोई भी मतलब एक पे नहीं चल रहा है। पहले
जो यूज करता था, अब सभी हर तरफ पड़ोसी हो चाहे वैसे कोई भी देश हो, उसके साथ सभी के साथ अपने उसी हिसाब से अपने संबंध बनाता है और ना ही किसी के विदेशी मामलों में या वैसे यूक्रेन रूस में हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि उससे उसको हानि होने वाली है। इस प्रकार वह अपने चुप रहता है और तटस्थ नीति का प्रयोग करता है। क्या कहना चाहते हैं माध्यम से? मैम, इसके माध्यम से मैं यही कह तरह अपना विकास करने के लिए बहुध्रुवीय विदेश नीति अपना रहा है, इसी पे चलना चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट कॉलर कौन है सर? हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। ममता, आवाज नहीं आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ममता चौधरी। हाँ हाँ, यस मैम, यस मैम। मेरा टॉपिक है स्कूली शिक्षा के प्रभाव क्षेत्र में NEP 2020 के क्रियान्वयन की रणनीतियाँ। हेलो, बोले, स्टार्ट करो। स्कूली शिक्षा भविष्य के मेरा टॉपिक है स्कूली शिक्षा और भविष्य के प्रभाव क्षेत्र में। ममता जी, आप एजुकेशन की हैं, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस सेशन में कृपया पॉलिटिकल साइंस के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर को ही ज्वाइन कराएं। जिनका एजुकेशन या बाकी सब्जेक्ट में बच गया है उनको हम 4:30 के बाद अलग से टाइम शेड्यूल करके प्रेजेंटेशन लेंगे। दिस इज द काइंड रिक्वेस्ट बाय द टेक्निकल टीम। आपका कहाँ का रजिस्ट्रेशन है? आपका किस सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन है? मैम, रजिस्ट्रेशन मेरा एजुकेशन से है, लेकिन मेरी गाइड सपना में ME है मैम। चलिए करने दे सर, फिर चलो बोलो, बोलिए। हाँ मैम, तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट है। ममता, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो मैम। प्रेजेंट कीजिए करके जल्दी ममता जी, प्लीज। हाँ सर। ये स्टार्ट प्रेजेंटेशन। चलिए अब आप जल्दी प्रेजेंटेशन दीजिए, टाइम नहीं है। सर स्लाइड आगे कीजिए सर, जो टेक्निकल टीम है सर, मेरे पास नहीं है सर स्लाइड। हाँ हाँ ठीक सर, है। हाँ सर, एब्स्ट्रैक्ट है मेरा कि जो शिक्षा नीति 2020 थी, उन्होंने जो शिक्षा नीति दी है, तो उन्होंने जो भारतीय मूल्य हैं उनको विकसित किया है इसमें, और जो शिक्षा है उसकी उच्च स्तर पर गुणात्मकता है उसको देने का इसमें पूरा प्रयास इन्होंने किया है। मेरे मुख्य शब्द है NEP 2020 और स्कूली शिक्षा। सर, स्कूली शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने जो पॉइंट दिए हैं उसमें इन्होंने प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा है उसको सीखने की नींव माना है, और दूसरा जो पॉइंट है उसमें उन्होंने माना है कि जो बुनियादी साक्षरता एवं जो संख्या ज्ञान है उसको सीखने के लिए इन्होंने एक तत्कालिक और आवश्यक पूर्व शर्त इन्होंने सीखने की माना है। और इन्होंने माना है कि जो ड्रॉप आउट बच्चों की जो संख्या है उसको कम करना और सभी स्तरों पर जो सार्वभौमिक शिक्षा है उसको सुनिश्चित करना, सभी के पास शिक्षा पहुंचाना। उसके अलावा उसने चौथा पॉइंट जो इन्होंने दिया है उसमें इन्होंने दिया है कि स्कूली जो पाठ्यक्रम है। सुनो ममता, आप इसका हाँ अध्ययन कैसे? ये तो पॉइंट्स हैं, आप इसका अध्ययन क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो? सर, अध्ययन तो ये है कि ये जो स्कूली शिक्षा है इसमें जो इन्होंने पॉइंट दिए हैं तो वो क्या प्रभाव लाएगा और इससे क्या परिवर्तन होगा स्कूली शिक्षा में। तो उसको आप कैसे जांचोगे आप उसको? क्या आपने कोई सैंपल लिया है, कोई स्कूल लिया है, कैसे क्या? नहीं मैम, इसमें सैंपल अब नहीं लिया मैंने, इसमें सिर्फ अभी पॉइंट दिए थे मैम, जो इन्होंने दिए हैं सिर्फ मैंने उनके पॉइंट दिए हैं, इसके जो सैम्पलिंग वगैरह वो मैंने नहीं ली। तो आपका क्या योजना क्या है आपकी? अभी आप बैकग्राउंड स्टडी कर रहे हैं? हाँ, अभी तो इसको हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। अभी तो जब ये लागू होगा, कुछ जैसे कुछ में लागू हो रहा है, कुछ में नहीं हुआ, तो अभी होगा उसके बाद में निकल के आएगा मैम कि कितना प्रभावी रहा। नहीं तो फिर आप अध्ययन क्या करोगे? आपका रजिस्ट्रेशन हो गया?
नहीं मैम, मेरा टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक तो दूसरा है, मैंने तो ये लिया था इस पे। ठीक है, बोलो आप, मतलब आप केवल इस पेपर पढ़ने के लिए बोल रहे हो? चलो हाँ हाँ मैम, सिर्फ पेपर के लिए, मेरा टॉपिक दूसरा है मैम। चलो बोलो। हाँ तो मैम, प्रारंभिक और बाल्यावस्था जो देखभाल इन्होंने सीखने की नींव माना है, उसके अंतर्गत इन्होंने माना है कि जो बालक है उसके 85% मस्तिष्क का निर्माण 6 वर्ष की आयु तक हो जाता है, और इसी समय बालकों को हम सिखा सकते हैं। तो इसी समय जो शिक्षा दी जाएगी वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अंतर्गत आएगी। तो इन्होंने ये माना है कि लचीली और बहुआयामी शिक्षा जो विद्यार्थी है या बालक है उनको दी जाए, जिसमें खेल, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, कला, पेंटिंग वगैरह इसमें दी जाए। और प्रारंभिक स्तर जो है इन्होंने 0 से 3 और 3 से 6 वर्ष जो प्राचीन काल में शिक्षा का सीखने की उम्र माना जाता था, उसको इसमें कविता, खेल, गीत, कहानियां आदि को शामिल करने का जो है वो इसमें दिया है। तो आपको इस आप प्रपत्र के माध्यम से आप क्या सिद्ध कर रहे हो कि जो स्कूली शिक्षा है वो उसमें क्या परिवर्तन आया है, परिवर्तन आने की संभावना है? सर, परिवर्तन आने की इसमें संभावना है, क्योंकि इन्होंने जो आयु वर्ग जो इन्होंने चेंज किया है, जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने 1 से 3 6 वर्ष तक इन्होंने जो प्रारंभिक और बुनियादी शिक्षा इन्होंने दी है। उसके बाद में इन्होंने जैसे 8 से 11 साल तक, सॉरी, पूर्व में क्या था? पूर्व में क्या था? पूर्व में मैम जैसे 6 से 14 वर्ष का जो था, इसमें मैम इन्होंने जो बुनियादी शिक्षा को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, और इन्होंने ये भी माना है कि जो पिछड़े बालक है उनको समावेशी शिक्षा के माध्यम से, दिव्यांग बालक है या ट्रांसजेंडर जो छात्र है उनको भी स्कूली शिक्षा में समावेशी शिक्षा के आधार पर इनको ले सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने पाठ्यक्रम में भी लचीलापन की जो वो दी है कि पाठ्यक्रम भी चेंज कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। जो साइंस के स्टूडेंट है वो कुछ सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और जो ड्रॉप्ड आउट बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनको भी रोकने के पूरे प्रयास इसमें किए गए हैं। उसके लिए उनको रुचिपूर्ण शिक्षण दिया जाए। कि जाएंगे तो अभी तो योजना हाँ ही है ना? हाँ मैम, योजना ही है, लेकिन अभी लागू तो अब होगी, जब इसके रिजल्ट पता चलेंगे मैम। अच्छा, तो आपकी क्या निष्कर्ष क्या है इसके? मैम निष्कर्ष तो ये है कि यदि ये योजना लागू होती है तो कुछ स्तर पर इसमें शिक्षा में जो है काफी सुधार होगा, और जो मेन जो बेस है शिक्षा का वो मजबूत होगा। तो आगे आने वाले टाइम पर जो भारत है उसमें एक अच्छी शिक्षा योजना के आधार पर शिक्षा का विकास होगा और देश का विकास होगा, निर्माण होगा। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। समावेशी शिक्षा और एनईपी का क्या रिलेशन है? क्या मैम? समावेशी शिक्षा और एनईपी 2020 है, इसमें क्या रिलेशन है? क्या कहना चाह रही है एनईपी समावेशी इंक्लूजन? मैम समावेशी शिक्षा मतलब जो विशिष्ट बालक या जिनको विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, बच्चों को जो दिव्यांग है या फिर जो मुख्य धारा से अलग है, या जो बच्चे हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, जो सामान्य बच्चों से नहीं जुड़ पाते, तो उनके लिए इन्होंने स्कूलों में समावेशी विद्यालय बनाने का वो किया, ताकि इसमें सभी बच्चे एक साथ चलिए शिक्षण ममता ग्रहण जी, हो गया, करें। धन्यवाद। चलिए गंगा शर्मा, नेक्स्ट स्कॉलर गंगा शर्मा। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते। नमस्ते। क्या टॉपिक है आपका? सर मैं गंगा शर्मा, पीएचडी स्कॉलर पॉलिटिकल साइंस से हूँ। मेरा टॉपिक जो है वो है, आप थोड़ा सा और साइड में कर लीजिएगा, अपना सिस्टम तो दिखाई दीजिएगा, आप दिख नहीं रही हैं। सॉरी सर। हाँ। अब आपकी इस सेशन की अध्यक्षता कर रही हैं मैडम मीनाक्षी द्विवेदी जी, और इसमें पैनलिस्ट है गोपाल कृष्ण शर्मा जी एंड प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह सोधी जी। आप इनके सवालों का जवाब देंगे और प्रेजेंटेशन कीजिए प्लीज। जी सर, मेरा टॉपिक है नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। वेरी गुड। एब्स्ट्रैक्ट है मेरी। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.3 बिलियन पीपल्स। हाउएवर, अरे आपका स्लाइड कुछ दूसरा, आपको प्रेजेंटेशन दूसरा है।
आपका तो कुछ हिंदी में कुछ दूसरा ही आ गया है। आपकी नहीं। जगह आपके पर्दे दिख रहे थे, आपके टॉपिक की जगह दूसरा टॉपिक दिख रहा है। नीड ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स इन इंडिया है सर। अच्छा, बोलो बेटे बोलो। कंटिन्यू करूं सर? हाँ करो, कंटिन्यू करो। सेम होनी चाहिए। India is the world's largest democracy with a population of over 1.3 billion pupils. However, the country electoral system has been plagued with issues such as corruption, vote banking, and violence during elections. This has led to growing need for electoral reforms ensure free and fair elections. True democracy can function only when the election to the office of power are held in free and fair manner. In a vibrant democracy like India, it is essential that the best citizens are elected as people's representative for good governance in the country. This promote this promotes moral values in public life as well as increase the number of candidates who win election on the basis of positive votes. This paper aims to analyze the current state of India's electoral system and the need for reforms. The paper will discuss the impact of money, power, criminalization of politics, the Beautiful. need for transparency in electoral funding. The paper will also highlight the role of technology in improving the electoral process and suggest reforms that can make the system more accountable and representative. Technology has played a significant role in improving the electoral process. Many electoral management bodies have आपका पीपीटी adopted तो हम लोग को various दिख नहीं tools रहा to है। make. हाजी सर, We are unable to see your PPT. हम लोग को दिख नहीं रहा है। Where is that? सर पीपीटी PPT नहीं है। कोई बात करने नहीं, दीजिए आप उसको, बता बिना करने दीजिए उसको बिना बीबीटी के, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी ठीक है, करिए कंटिन्यू बेटे, कंटिन्यू सर करिए। एक मिनट सर, एक मिनट ठीक है, आप करिए, कंटिन्यू अच्छा करिए। बोल रही थी सर वो। सर दिख रही है अभी? नहीं चलिए, आप बोलते रहिए, मत चिंता कीजिए ना दिखने की, बोलिए आप। बताइए बिना पीपीटी के। Introduction. India, the world's largest democracy, has been facing challenges in its electoral process, which is the foundation of a strong constitutional democracy. The criminalization of politics, the misuse of power and machinery, the power of money and muscles, and the inefficiency of the system are some of the flaws that need to be addressed. To ensure a responsible parliamentary democracy, electoral reforms are necessary in India. The Election Commission of India has already taken several measures to prevent bogus voting and plan to link Aadhaar with voter identity card. False affidavits and paid news will be punished as corrupt practices. The citizens' participation in the electoral process is crucial for the success of democracy. The issues faced by the current electoral system in India include criminalization of politics, money laundering, and a lack of transparency in politics finance. Reforms are needed to make the system more transparent, well authorized, and citizen friendly. In this regards, the electoral process and electoral politics are the life and soul for the consolidation of a parliamentary democracy system in India. Good. Okay. Issues in politics in India. There are multiple issues plaguing in electoral process in India. Some of the most prominent one are mentioned below. सर मेरी पीपीटी दिख रही नहीं है क्या आपको? नहीं दिख रही है।
सर 1 मिनट सर, मैं दिखी हाँ, अब देखिए समय तुम्हारा हो गया, उसके बाद दिख रही है। सर मुझे पता ही नहीं चल रहा था दिख रही है कि नहीं दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, हमने कह तो दिया, मेरा बीबी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर अभी आगे क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हुए हैं? हाँ जी मैम 1 मिनट, अभी आगे चल ही नहीं रही। जहां तक बोली उसके आगे बोलो, तुम छोड़ दो उसको। 1 मिनट वो नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आप चलो। हो गया, मनी पावर के आगे बढ़ो। हाँ जी सर 1 मिनट। गंगा जी कौन सी स्लाइड खोली है? हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं आपकी। जी सर, मसल पावर, मनी पावर इन डेमोक्रेसी, in every constitution candidates have to spend crores of rupees for campaigning, publicity, etc. Don't elaborate. Only say क्या power yeah. अरे बोलो तो अब तो। Sir, second है muscle power. In certain parts of the country, there are whispered reports of illegal and untoward incident during polling, such as the use of violence, intimidation, booth corruption, etc. Next one है criminalization of politics and politicization of criminals. Criminals enter into politics and ensure that money and muscle power win them elections, so that the cases against them are not processed with. Political parties are also happy as long as they have winnable candidates. Political parties feed criminals in election for funds and in return provide them with political patronage and protection. सर मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। कम्युनलिज्म नेक्स्ट है, कम्युनलिज्म। खत्म हो चुका है, बस आवाज तो मैडम मीनाक्षी मैम प्लीज टेल अस व्हाट वी हैव टू डू बिकॉज़ शी हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड द लिमिट। Ganga Sharma, criminalization of politics. What do you mean criminalization of politics? गंगा? हाँ जी सर, हाँ जी मैम। फिर नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। Misuse of government machinery. There is a general opinion that the party in power uses government machinery. गंगा शर्मा, आपको सुनाई दिया? मैडम ने पूछा कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण क्या होता है? शी इज आस्किंग। आप कुछ दूसरा ही बता रहे हैं। सर राजनीति का अपराधीकरण जैसे ना, राजनीति जब भी वोटिंग होती है तो वोटिंग के अंतर्गत जैसे अपने जान पहचान के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जो है इलेक्शन में शामिल किया जाता है, उनको कार्ड दिए जाते हैं इलेक्शन के लिए। तो वो अरे आपने लिखा तो कुछ और है, तो कौन सा सही है? बोल रही हो जो सही है, जो लिखा है वो सही है? सर मैम लिखा है जो सही है। तो फिर चलो ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। मैम आगे बोलूं? नहीं बस हो गया आपका प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। देन जीवन दान, पीएचडी स्कॉलर जीवन दान। जी सर। यस, स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। यू आर इन सभी पर साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं सर, पॉलिटिकल साइंस। चलिए ठीक है। सभी को नमस्कार, मेरा नाम जीवन दान, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से पॉलिटिकल साइंस विषय में। मेरा जो टॉपिक है वो वर्तमान भारतीय चुनाव प्रणाली में दोष एवं उनका समाधान है। बोलो। ठीक है, सारांश एब्स्ट्रैक्ट में है, मुख्य पॉइंट में बोल रहा हूँ मैम। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में 17 लोकसभा के आम चुनाव और अनेक राज्यों के चुनावों का सफलतापूर्वक आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा चुका है।
संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की नींव अनुच्छेद 324 से 329 तक में रखी, जो चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का काम करता है। चुनाव सुधारों के बारे में पहले भी बहुत सी समितियां और आयोगों ने सिफारिशें की है, हालांकि उनका क्रियान्वयन बहुत ही कम हुआ है, जो कि निराशाजनक है। राजनीतिक दलों, सरकारों की राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव के कारण अभी भी बहुत से चुनाव सुधारों की आवश्यकता बनी हुई है, जिनका निराकरण स्वार्थ से परे रह करके किया जा सकता है, जिससे कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का श्रेष्ठ लोकतंत्र बन सके। इसमें जो मुख्य शब्द है वो है लोकतंत्र, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, वीवीपैट, ई-इपिक, मतदान, निष्पक्षता, संसदीय कोटा इत्यादि। अब प्रस्तावना इंट्रोडक्शन के बाद मुख्य पॉइंट है कि 2019 के आम चुनाव की समाप्ति के बाद जहां दुनिया भारतीय निर्वाचन प्रणाली की सराहना कर रही है। जीवनदान जी, आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, आप क्या कहना चाहते हो? चुनाव प्रणाली में क्या दोष है और क्या समाधान है, ये बताओ आप। जी मैम, मैं इसके पहले उद्देश्य बता दूं। किसके उद्देश्य? जी मैम, उद्देश्य वर्तमान भारतीय चुनाव प्रणाली में पाए जाने वाले दोषों पर विचार विमर्श करना, वर्तमान चुनावों के दौरान आने वाली समस्याओं का पता लगाना, चुनावों में आने वाली समस्याओं का निराकरण करना, चुनाव सुधारों की आवश्यकता महत्वता को समाज के समक्ष प्रस्तुत करना, लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली के मूल्यों को स्थापित करना। अब मैम, चुनाव व्यवस्था में जो दोष पाए जाते हैं, मैं उनके मुख्य पॉइंटों पर बात करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है धनबल की बहुलता। भारतीय चुनाव व्यवस्था में ऐसे संबंधित स्पष्ट नियम न होने के कारण उम्मीदवार इसका प्रयोग वोटरों को खरीदने, उनको शराब इत्यादि का लालच देकर के वोटों को अपने पक्ष में करने का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट है जाति और धर्म आधारित राजनीति होना। आजकल भारत में जाति के नाम पर कहीं भी क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है तथा उन्होंने कई राज्यों में सरकारें भी बनाई है। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन में जाति देखकर टिकट देना सामान्य बात है, ताकि उन्हें उस क्षेत्र में जातियों के लोगों का समर्थन मिलता है। चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, प्रत्याशियों की बहुलता होना, जैसे कि 1986 की लोकसभा के आम चुनाव में उम्मीदवारों का आंकड़ा चरम पर था। उस समय लोकसभा की नलगोंडा सीट आंध्र प्रदेश पर 480 और बेलगाम सीट कर्नाटक की 456 उम्मीदवार मैदान में थे। भ्रामक समाचारों का प्रकाशन करना, ईवीएम संबंधी शिकायत भी हमें प्राय देखने को मिलती है। मतदान पर्चियों की अपूर्णताएं पाई जाती है और मतदाता शिक्षा को लेकर भी मतदाताओं में अभाव होना भी पाया जाता है। बाद में मैंने इन सुधारों से संबंधित सरकार के प्रयासों की बात की, जिसमें अनेक समितियां बनाई गई थी, जिनमें पहली समिति तारकुंडे समिति, दूसरी थी दिनेश गोस्वामी समिति, तीसरी थी इंद्रजीत गुप्ता समिति, फिर एक विधि आयोग की रिपोर्ट भी आई थी। उसके बाद निर्वाचन आयोग के द्वारा भी जो प्रयास किए गए, उसके अंतर्गत सबसे पहले जो प्रथम चुनाव था 1952 का, उसमें मतदाता पहचान पत्र जारी करना, फिर वीवीपैट अर्थात वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट जारी करना, जिसके अंतर्गत जो मतदाता मत देता है उसका नाम व चुनाव मत डालने के बाद मशीन में पोस्ट पर दिखाई देता है। फिर नोटा के विकल्प को भी सरकार द्वारा पीपल्स फॉर सिविल लिबर्टी याचिका पर 2013 में विकल्प देने को कहा गया। 25 जनवरी 2021 को मतदाता दिवस पर मतदाताओं को ई-इपिक की भी सुविधा दी गई, जिससे मतदाता मतदान पहचान पत्र को मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से डाउनलोड कर उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता हेतु वेब रेडियो हेलो वोटर्स भी शुरू किया, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में निर्वाचन संबंधित जानकारी देता है। तीसरे सुधारों में न्यायालय के भी सुधार आते हैं, जिनमें इंदिरा नेहरू गांधी बनाम भारत संघ 1975 मामले में उच्चतम न्यायालय ने विधायिका के द्वारा सरकारी मशीनरी, सरकारी अधिकारियों का चुनावी प्रचार व प्रत्यक्ष भागीदारी पर रोक लगाई। एक अलग मामले मोहिंदर सिंह दिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त 1978 में न्यायालय ने कहा कि संविधान में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और निहित अधीक्षण निर्देशन करने की चुनाव आयोग की शक्तियां व्यापक है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ 2013 मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए बताया कि दागी सांसद या विधायक अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाएगी और सीट रिक्त मान ली जाएगी। इसके सिवा संसद ने भी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बनाए, जिसमें अनेक संशोधन किए गए। राजीव गांधी सरकार के दौरान 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, ताकि युवा वर्ग को राजनीतिक प्रक्रिया में अंग बनने का मौका मिल सके। और मैं निष्कर्ष पे मैं बात करूं तो भारत में निर्वाचन आयोग अब तक 17 आम चुनाव संपन्न करा चुका है। चुनाव सुधार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। भारत में कमियों को दूर करने के लिए सदैव प्रयत्न होते रहे। हमें इस बात की महत्वता को समझना होगा कि केवल वैधानिक प्रावधानों और निर्वाचन प्रणाली में सुधार से स्वतंत्र और मुक्त चुनाव तथा स्वतंत्र राजनीतिक वातावरण की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके लिए मताधिकार ही लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है।
हम स्वयं भी परिवर्तन ला सकते हैं। जो लोग धर्म, संप्रदाय, जाति के नाम पर वर्षों से मूर्ख बनाकर सत्ता की मलाई चाट रहे, उन्हें नकार कर अच्छे पढ़े लिखे लोगों को चुनकर भेज सकते हैं, जो आगे चलकर विधायिका में उचित कानून बनाकर संशोधन करके सुदृढ़ लोकतंत्र की नींव रख सकते हैं। वृंदावन जी, आपका अच्छा जी पेपर है, लेकिन ये जो जी मैम। शब्दों का प्रयोग कर रहे हो ना, मलाई चाटना, ये शब्द शोध में प्रयोग नहीं किया। जी मैम, मैं इसको काट दूंगा। हाँ, और स्थानीय जो चुनाव हैं स्थानीय संस्थाओं के, वो कौन कराता है? जी मैम, वो तो मतलब निर्वाचन आयोग था, वो करवाते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू जी, थैंक यू मैम। नेक्स्ट स्कॉलर प्लीज, अपना नाम बताइए और प्रेजेंटेशन दीजिए। नेक्स्ट स्कॉलर, अनम्यूट गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या नाम है? सर मेरा नाम परवीन कुमार है, पीएचडी हाँ, पॉलिटिकल साइंस में, और मेरे सुपरवाइजर सर का नाम है LK शर्मा सर। हाँ, ठीक है सर। मैंने जो टॉपिक बनाया है, बेसिकली मैं पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में हूँ, पर जो थीम है उससे रिलेटेड टॉपिक बनाया है सर। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन दीजिए प्लीज। जी, टेक्निकल टीम प्लीज प्रेजेंट। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस NEP-2020 आ रहा है ना, तो आई एम अनेबल टू रीड योर नेम देयर, और जिसको जो लिस्ट है उसमें बुलाने वाले पर वो दिखता नहीं है। इट इज व्हाई आई हैव टोल्ड कि जो परवीन कुमार है सर, मेरा नाम परवीन कुमार सर। यस, चलिए प्रेजेंटेशन दीजिए प्लीज। सर मेरा जो टॉपिक है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एम्फेसिस ऑन आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज, ए क्रिटिकल एनालिसिस। सर इंट्रोडक्शन प्लीज, टेक्निकल टीम इंट्रोडक्शन में सर जो मेन पॉइंट है वो है एम्फेसिस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट इन गुरुकुल एजुकेशन। यू हैव शेयर्ड द PPT टू द टेक्निकल टीम? जी सर, सेंड की है सर मैंने। ओके जी सर, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है सर। Yes. India has a long history of education system. When the education system was prevalent in India, the students were given full education so that they could do their work according to their needs, which means that along with the education, they were taught many skills that could lead to their overall development. The new education policy is a crucial document for India's development as a nation, and it is equally crucial to impart knowledge to the following generation to preserve civilization. India, one of the most diverse country contain a whole globe, it is the most crucial part of India's strength and unity. The sophisticated language of India is more than just a word. It is the foundation upon which the building of integrity is built. What constitutes a community is created by its culture, traditions, and integration with its whole history. Every aspects of its linguistically ingrained, they reflect our lifestyle and tradition. It would be wise on our part to understand the importance of languages in context of our fraternity, which has shaped our society since time immemorial. The three-language approach will involve the welcome step of promoting multilingualism, although it does not enforce any language as the official language of the country. The government acknowledges the value of indigenous languages by emphasizing the use of mother tongues as a medium of instruction whenever possible. Sir, introduction के main points है emphasis on development in Gurukul education. Sir, am I audible to all? Yeah. Continue. जी सर. Second point is education to do jobs by their needs. Third one is taught variety of skills. Fourth one is as a result of external invasion in India, Indian education suffered a lot. Fourth one is during British rule, the level of education fell because education was not for all. Fifth point is after India's independence, many committees were formed to improve education and education system. Sixth point is purpose of new education policy 2020 is to reconnect India's education that is important with Indian value. Now sir, जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया, वो 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, एनिशेंट, मेडिवल और मॉडर्न में. तो एनिशेंट एजुकेशन सिस्टम जो था इंडिया में, उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या है. एनिशेंट एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज देयर. Vedas first to maintain the aim of education.
गोल जो एनिशिएंट एजुकेशन सिस्टम में था, गोल ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑल पीपल. Vedas, Upanishads, Dharmsutras, these were the main source of education in ancient education system, and the focus of education was all around development of a student. और जो विद्यार्थी थे वो गुरुकुल में जाकर जो है physical, mental, moral, every type of education, whether that is spiritual, that is moral, that is mental, that used to be taught over there. Education system in medieval time, invasion of Mughal disrupted education system. Persian language became very prevalent. Muslim period madrasa were founded in every city. Besides Sanskrit speaking and pathshalas were also working. School were not organized in this time. Now, sir, education system in British India, they organized education in school, Western aesthetic curriculum, enslaved India, and implementation of British Western culture. Now, sir, new education policy 2020, we established to new education 2020. It was established to promote India's arts, literature, and culture, sought to rebuild India's education system, focus on revival of languages. Promotion of multilingualism was a welcome step. It intends to introduce suitable education program across the nation. Higher education institution will be encouraged to offer multilingual instruction, to use mother tongue or vernacular as a medium of instruction. Most influential focus to mainstream Sanskrit, focus on Indian language, arts, culture with local master or higher education institution. Sir, conclusion के जो main point है, with the continuous demand for industrial sector, our existing education system also need to be upgraded. In university, students were learning to come only first to complete, and they were not being given any practical knowledge. Our education helped us to discover lasting value, so that we do not merely cling to the formulas or repeat slogan. It should help us to break down our national and social barrier instead of emphasizing them, for they breed antagonism between men and men. Unfortunately, the present system of education making subservient, mechanically and deeply thoughtless. Thought it awakens us intellectually, inwardly. It leaves us incomplete, stratified, and uncreative. Next point is the present education system need to learn from ancient and medieval education system about practical knowledge. So the government has to provide an education system which will make all-around development of the students and prepare them for future and teach them to live in any delicate situation. NEP 2020 testified that there was a need for significant change in the Indian education system, because education was not in terms of Indian languages, arts, and culture. Therefore, a new education policy introduced to make India a world guru once again, while implementing education in terms of Indian value. Thank you, sir. Madam, we should allow next one. Inakshi ma'am. Yes, next one, Rekha Chaudhary. Rekha Chaudhary, you start your presentation. She's there. Inakshi Chaturvedi ma'am, we are unable to listen you. Technical team, what is the issue? मेरी आवाज जा रही है सबको? हाँ, आ रही सर आवाज। रेखा को बोलने दीजिए सर। हाँ जी, आ रही सर, आपकी आवाज तो आ रही है। इनाक्षी चतुर्वेदी मैम इज अनएबल टू लिसन। अरे तो रेखा को बोलने दीजिए सर। हाँ हाँ रेखा, यस प्लीज स्पीक। प्लीज। रेखा अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट कीजिए। रेखा अनम्यूट करके बोलिए। शी इज नॉट लिसनिंग। माइक अनम्यूट करो रेखा।
अब वो छोड़ चुकी, मीटिंग छोड़ दी। Rekha left, the paper is there, right? Another election reform. All of them are bothering for election reforms. Wonderful. Good. रितु अत्री और रितु रानी। रितु अत्री आप किस सब्जेक्ट के हैं? आपको माइक कीजिए मैडम, अनम्यूट करिए रितु। रितु आप किस सब्जेक्ट की हैं? अनम्यूट करिए, अनम्यूट हो गया योरसेल्फ। सर, हो गया सर। हाँ, क्या बोलो किस बोलो, सब्जेक्ट? शुरू करो बोलना, सब्जेक्ट बताओ। कौन सब्जेक्ट है आपका? सर क्या सर? आपका सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है सर। इंग्लिश है? यस सर। तो अभी तो इंग्लिश का सेशन चल नहीं रहा है। NEP is there, sir. Everybody. No. This is for political science and public administration. अभी तो उसी में स्कॉलर बचे हुए हैं। अभी आप अपना रोक दीजिए प्लीज। नेक्स्ट को बढ़ाइए सर। ममता चौधरी, रेखा चौधरी, रितु रानी, मोनिका सरन, निधि शर्मा, आरती, yes Aarti, yes, what is your subject Aarti? sir, political science. हाँ, प्रेजेंटेशन दीजिए प्लीज। हाँ जी, good afternoon respected teachers. I am Aarti, research scholar of political science at Jyoti Vidyapeeth Women's University. My research guide is Dr. Sapna Gehlot ma'am. My topic is good governance, आवश्यकता एवं अनिवार्यता। पीपीटी आ गया एंड कैंडिडेट चली गई। दिस इज हैपनिंग। Our technical team is sharing the PPT. Aarti, this is your PPT. हाँ सर। Yes sir. आपका वीडियो ऑन नहीं हो सकता है? Yes sir, करती हूँ सर। एक साथ दोनों ऑन करके बोलो बेटे, ऑडियो वीडियो। Yes. हाँ जी सर। अब बताइए। हाँ जी सर, मेरा टॉपिक है गुड गवर्नेंस की आवश्यकता एवं अनिवार्यता। सुशासन निर्णय लेने की एवं जिसके द्वारा निर्णय लागू किया जाता है वह है सुशासन। सुशासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जाता है, जैसे कॉर्पोरेट शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन आदि। 1992 में शासन और विकास नामक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन को विकास के लिए देश को आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का उपयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है। सुशासन सूचकांक 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। सुशासन के घटक है सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध में क्षमता, जवाबदेही, विकास के लिए कानूनी ढांचा, पारदर्शिता। सुशासन की विशेषता आएगी भागीदारी, पारदर्शिता, कानून का शासन, जवाबदेही, समानता एवं समावेशिता, प्रभावशीलता। सुशासन के लिए आवश्यक शर्तें आएगी सर, सूचना का अधिकार, प्रभावी कानूनी ढांचा, प्रभावी कानूनों के सही कार्यान्वयन के लिए मजबूत एवं प्रभावी संस्थागत तंत्र। सरकार को सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास के आदर्श पर कार्य करते रहना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ जी, आरती मैडम जी, आरती मैडम, क्या लगता है कि भारत में आज सुशासन की अवस्था है? सॉरी सर। अगर विश्व की बात करें तो भारत में सुशासन संपूर्ण रूप में संभव है क्या, लागू हो पा रहा है? जो आपने 8 बताए हैं विशेषताएं, क्या वो सभी के मापन पे भारत खरा उतर रहा है उसमें, अगर बात करें सुशासन की? नहीं सर, इसमें काफी कमियां भी है सर।
उसको हमें दूर करने की जरूरत है सर। गुड। ये जो 8 में से कौन से में अपन को ज्यादा समस्या है, कुछ आइडिया है आपको? हाँ जी सर। 8 विशेषताएं हैं सुशासन की, उसमें हाँ जी सबसे ज्यादा सर। चैलेंज किसमें है, सबसे ज्यादा समस्या किसमें है? सर कहा जाए तो देखो, सबके सामने समानता का व्यवहार नहीं किया जा रहा है। पर एक इसके अलावा सबसे ज्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, उसको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी भी, जो अपन बात करें यहाँ हाँ पे जी। दक्षता, हाँ जी। कार्यकुशलता, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कोई भी हाँ सर्टिफिकेट जी। गवर्नमेंट से कुछ लेना हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेना हो, 3 दिन की जगह 5 दिन 10 दिन में मिलेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक है मैडम, ओके सर, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट प्रेजेंट। हाँ जी, थैंक यू सर। This is the last presentation of this session, and due to जी shortage सर। of जी time, सर। it is not be possible for जी all सर। the scholars to take जी their सर। presentation. Yes, जल्दी करिए, 3:30 में ये सेशन ओवर होगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सर मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ पॉलिटिकल साइंस से। मैंने भारतीय चुनाव पर एक समीक्षा डाली है आर्टिकल। हम पहले इसकी प्रस्तावना पर चलते हैं। उसमें हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर जनता के लिए शासन होता है, जनता ही जनता का शासन सुनती है। इसके लिए हमें खुद में से ही एक प्रतिनिधि का चुनाव करना पड़ता है। तो चुनाव इसीलिए हमारे यहाँ अनिवार्य है और इसमें बहुत सी खामियां है और उस खामियों को दूर करने के लिए कुछ समितियां भी बनाई गई है और कुछ सुधार भी हुए, लेकिन आपकी फिर भी पीपीटी कहाँ है? कुछ ना कुछ कमी इसमें रही गई। इसके ऊपर मैं चले 2 मिनट और बचे हैं, मैडम शुरू करो, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो। इनके हम उद्देश्य पे चलते हैं। चुनाव सुधार की हमें आवश्यकता हुई, इसका हम अध्ययन करेंगे और चुनाव सुधार की विभिन्न समितियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है और 1950 से लेकर के अब तक के जो चुनाव सुधार हुआ उसका अध्ययन किया है और चुनाव सुधार में जो कमियां रही है उसका आलोचनात्मक हमने अध्ययन किया है। चुनाव सुधार में कहीं से बहुत सी आप क्या क्या सुधार चाहती हैं बता के खत्म कीजिए, टाइम खत्म हो रहा है। चौधरी फिर खामोश हो गई आप। क्या हो रहा है यार? रेखा जी, आपको क्या बताना है? सर बोल रहे हैं कि आप बता के फिनिश करिए, टाइम नहीं है, टाइम ओवर हो गया है। और कुछ बताना है आपको? फिर माइक म्यूट कर लिया। So over to Inakshi ma'am for your concluding remarks of the session, and it is time to listen the summary of the session by the session the chair. मीनाक्षी जी नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार। आप सुन पा रही हैं? नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मीनाक्षी जी हमारे यूनिवर्सिटी से ही हैं, नमस्कार करना है मुझे। वो सुन नहीं पा रही है, उनकी दूसरी प्रॉब्लम है। हाँ। चलिए गोपाल कृष्ण सर, यू प्लीज गिव द कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑफ द सेशन। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है सर कि बच्चों ने अपनी तरफ से कोशिश की है कई टेक्निकल व्यवधानों के बाद भी, और मैडम ने मूल विषय पर बात की, मैंने फॉरेन इंडियन डेमोक्रेसी पे बात की, सोडी जी ने पब्लिक रिलेशन की तमाम इश्यूज डिस्कस किए, हाउ NEP कैन प्ले रोल इन इट। अच्छा है सेशन सर, बच्चों को एनकरेज करने की दृष्टि से बड़ा अच्छा है। थैंक यू।
टाइम अब खत्म। So thank you everyone on behalf of the whole fraternity. Thank you, sir. आपकी ओर से बाय बाय। We are मेरा thankful to all. लगाता हूँ And मोबाइल पर। Meenakshi is saying that she is not listening, but still we are giving thanks to all the panelists, all the professors who joined our session, and blessed to our participants. A special thanks to our chair professor, Professor Aswani Kumar, who has joined the post session also. Sir, it is truly multidisciplinary. I am very happy to be here. Okay, thank you. And now I request all the guests and all the scholars. Rekha, you leave the session. And now our next session is for botany, zoology and others. So thank you very much. We are going to start that session. Thank you, Professor Indrajit Singh ji and all others. Rekha, आप अब मीटिंग ओवर हो गया आपका, छोड़ दीजिए आप. Technical team, please. Time of Rekha is over. रेखा चतुर्वेदी को हटा दीजिए. चौधरी. रेखा चौधरी. Yes, Meenakshi ma'am. The session is over. Yes, Hello. over. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you a lot. We will see you again in future. Okay. Thank you. Thank you. And now this is the time to see our session number 7. And this session is for zoology, botany, and life sciences. And we have session chair Dr. Charu Lata. Yes, madam is before us, and Madam Charu Lata is the principal scientist at CSIR, National Institute of Science, Communication and Policy Research, New Delhi. Our another professor is Professor C.H.A. Ramulu, who is about to join. Then G.S. Solanki is here. And Dr. M. Mamta is about to join this session. So, on behalf of the whole fraternity of Jyoti Vidyapeeth Women's University, organizing team of this international conference, please mute yourself, Manju ma'am. Manju ma'am, please mute yourself. We welcome all the esteemed guests, all the participants of this plenary session. We are happy and we are feeling proud to see such a legendary academicians attached, associated with us in this session. So, C.H. Ramulu is from Bhubaneswar, and he is Professor of Regional Institute of Education. And welcome, Professor C.H. Ramulu. So, first of all, welcome, sir. Welcome. I would like to give a brief introduction to Dr. Charu Lata. And just give me 1 minute. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, sir. Shall I begin with the... So, no. Just wait. 1 minute. 1 minute, please. Just give me 1 minute maximum. Okay, sir. Okay, please. Technical problem. Yes.
Yes, you can hear. Suggest karo. Come close. I'm trying to say something to inspire our participants. You know, this is Women's University, and this university is working. The mission of this university is education for community development, leading to women's empowerment. And there are some ladies in India and even in abroad who are shining in the sky, and they are giving inspiration to the nation, to the Indian girls, and to all the scholars. So one of them is Dr. Charu Lata, who is principal scientist and HOD, Department of Inclusive Health and Traditional Knowledge Study Division. And let us listen in a very short about Charu Lata. She is the editor of Indian Journal of Traditional Knowledge and Indian Science Abstract. Dr. Lata is leading the national initiative Swastik on communication, India's scientifically validated traditional knowledge to the society. She is also an honorary faculty at ACSIR. Her research interest has been in the field of crop improvements, specifically abiotic stress tolerance in crop plants and beneficial plant microbe interactions. Currently, she is working in the field of communication and policy research in the traditional knowledge. And so far, some other credentials and allocates are concerned. And Dr. Lata is the recipient of some of the prestigious awards in yearly Meet Career Scientist in India, including Young Scientist Award by INSA in 2024, NASI 2012. She also has received Inspire Faculty Award in 2011, Jawaharlal Nehru Award for Outstanding Doctoral Thesis Research, Serve Women Excellence Award, Indo-Australia Fellowship 2017, and Charulata, it seems that all the awards you have taken. Thank you all very much. that is mean for female or women, you have achieved all. So it is since I have gone through your profile yesterday in the night. Yes. So it is why I decided to say all these things to our participants, specifically to women researchers, so that they may be inspired. So over to Charulata for her keywords remarks for this session. Over to Charulata, who is sharing this session. Okay. So thank you very much, sir, for such a nice introduction. In fact, the exaggerated one actually, but it's okay. And first, and I'd like to extend my heartfelt thanks to Jayati Vidyapeeth Women's University for giving me this opportunity and calling me here to chair the session and also like present my work very shortly. I'll be doing that. And yeah, and for and I also want to congratulate all the organizers for organizing this very contemporary and relevant international conference on NEP 2020. So since I was told that all the session chairs should also be speaking about the contemporary research work or anything that they're doing, so since I am like associated with traditional knowledge studies these days for the last like 2-3 years, so I thought to present the views of NEP 2020 on Indian knowledge systems, because NEP 2020 also focuses on holistic development of children, and they want that Indian like the children should have like roots in their traditional wisdom also. So now I'll start presenting my slide. So now my screen is visible? No. Just wait. It is not coming. It's not coming? Not coming. No. I have to share the entire screen, right?
Yeah. Now it is coming. Okay. No, So it's coming? Yes, it is coming. Press F5. Hello, sir. Good evening, sir. My slide is visible. Mamta, good evening. Just wait. We shall be coming to you back very soon. Thank you for joining us. Yeah, so my PPT is visible or not? I just want to... Yes. Hello? It is Yes. visible? Please. Okay. So basically, I'll be talking about imparting education on Indian knowledge systems in view of NEP 2020, and why I have chosen this topic. I've already told, but then it's also important to understand the importance of education. Since yesterday, other stalwarts in this area, in the field of education and research, must have talked a lot on NEP 2020. But I thought to just give a brief background about like why education is important and why NEP 2020 is so relevant in today's context. So education is fundamental to achieve national development, and a better education system actually also develops good human resources that in turn brings prosperity and equity and transform society by utilizing their potential. And that's why most of the government across the world actually focuses more on reforming education or bringing new changes in education to have more academic outputs in terms of capacity building also, and skill development and innovation, which ultimately leads to nation's development. So in India, since independence, actually three national education policies have been implemented. So one was in 1968, another was in 1986, which was then revised in 1992, and the new one is the National Education Policy 2020. So this NEP 2020 actually follows 5 plus 3 plus 6 plus 4 structure, and it basically aims to bring the gross enrollment ratio to 100% from primary to secondary school, because it has been seen that most of the children, they do not go to complete their schooling. So this is there, and to facilitate education for socio-economically disadvantaged groups. So these are all the different aspects of NEP 2020. But the most important thing on which I'll be discussing is that NEP 2020 also focuses on building upon India's traditions and value systems. So, the rich heritage of ancient and eternal Indian knowledge and thought has been a guiding light for this policy. So these rich legacy that India has herited, we want to give it out to the world, and it must not only be nurtured and preserved for posterity, but also researched, enhanced, and put to new uses through our education system. So this has been the guiding light. A rootedness and pride in India and its rich, diverse, ancient, and modern culture and knowledge systems and traditions. So this is very important focus point of NEP 2020. And another important point of NEP 2020 is also the language policy, where the children are encouraged to take their mother, they should be learning through their mother tongue or through the local language. So that is also a very important part. And then the like imparting education through Sanskrit language is also important. So this is about NEP 2020. So in view of the like the focus of NEP 2020, the major aspirations is to achieve full human potential, to develop an equitable and just society, and to promote national development. And all these three aspirations can be fulfilled if we have a holistic education system. Now, holistic education system actually deals with like we can understand fully through this flowchart, which suggests that education sanskar should the human education or manvi shiksha sanskar is important. Then a human world view should be there, that you should be like आपकी दृष्टि में भी मानवीय दृष्टि रहे, और ह्यूमन कल्चर मानवीय मूल्य. तो इन तीनों से, और ये स्किल्स फॉर लिविंग इन हार्मनी विद जॉय, तो इनसे आपका फुल ह्यूमन पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं. एंड ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन कल्चर और ह्यूमन सिविलाइजेशंस. सो ये अगर हमारा एजुकेशन इस तरीके से है, सो वी विल बी लाइक
achieving equitable and just society, and ultimately national development. So education at early childhood or through schooling is very important, and is a part and parcel of holistic education system. So if we talk about ki holistic and human knowledge system kya hai, so we must remember that a knowledge system which ensures right understanding and clarity of living in harmony at all levels of human existence is called a holistic and human knowledge system. Madam Charulata, you have to show some sacrifice because there is a panel with you and everyone Okay, is. ठीक है. तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि okay, so IKS is very important. Okay, मैं ज़्यादा नहीं फिर बताऊंगी. यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की बेसिकली 2 रिपोजिटरी है, सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, जो हमारे ओरल एंड क्लासिकल टेक्स्ट में होते हैं या जो फोकलोज या ओरल ट्रेडिशंस के थ्रू जाते हैं. तो IKS जो है इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, ये डेवलप हुआ है थ्रू थ्रू टाइम टेस्टेड, ये हमारा नॉलेज सिस्टम है, और it has survived several migrations and invasions and everything. So in traditional knowledge ka definition I'm not going to give, but it's very important to study Indian knowledge systems as well as traditional knowledge, because people and children nowadays, they do not have much confidence in our old heritage. So in view of this, so this all I'm skipping like what we have our heritage here, but it's very important to protect and perpetuate our glorious legacy of traditional knowledge that has been used over the centuries, and also to prevent any misappropriation, misuse and piracy and other things. And it's very important, therefore it's very important to identify and validate the traditional knowledge and practices and effectively communicate it to the society. So in view of this, basically our Honorable Prime Minister, who also happens to be the president of CSIR Society, is a Council of Scientific and Industrial Research. So he exhorted that there is a need to combine Indian traditional knowledge and modern science to develop world-class products, and also there is a need to, communicate it to the citizens, clarify to the citizens wherever scientific basis is available. And in view of this, a national mission called Swastik was actually launched. The responsibility was given to CSIR NESPA. So this mission is supported by Steering Committee of National Experts and also guided by a monitoring committee. So the main mission objective of this mission is to conserve Indian traditional knowledge and practices and inculcate R&D tamper or verifying tradition. तो इस नेशनल मिशन को हमने स्वस्तिक नाम दिया, और निस्पर जो है ये ऑलरेडी हमारे लेगेसी है साइंस कम्युनिकेशन का लास्ट 70 years से, एंड वी पब्लिश 16 रिसर्च जर्नल्स, आउट ऑफ विच इंडियन जर्नल ट्रेडिशनल नॉलेज इज वन ऑफ देम विच आई एम एडिटिंग, एंड इट इज द ओनली यूनिक जर्नल हियर. तो ये जो मिशन है, इट एक्चुअली एम्स टू आइडेंटिफाई टीके प्रैक्टिसेस, उसको वैलिडेट करना, डॉक्यूमेंट करना और कम्युनिकेट करना. सो कम्युनिकेशन इज थ्रू अ सोशल मीडिया कैंपेन दैट वी आर रनिंग ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम and YouTube. And इसको मैं एक छोटे से वीडियो से आपको दिखाना चाह रही हूँ कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं स्वस्तिक में. So so I hope the audio was you're able to listen to the music, but anyways, so this is the video. तो इसमें हम लोगों ने अभी तक 33 वेरीफाइड कंटेंट जो है हमने डिसेमिनेट किया हुआ है इंग्लिश एंड 16 इंडियन लैंग्वेजेस में. और जस्ट एक स्टोरी, मैं बस छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपको, क्योंकि ये बॉटनी और जुओलॉजी का जो है सेशन है, तो मैंने एक सोचा कि कुछ वीडियोस छोटे से मैं दिखाऊं. जैसे टर्मरिक है.
So I'm not showing other videos due to paucity of time. Otherwise, like I have 1 minute videos on like honey, which is a product of honey. One day we are going to invite to Dr. Charu Lata ji for 2 हाँ जी, hours. ठीक है। तो ये है, और हमने एक रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करी थी कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ट्रेडिशनल नॉलेज पर, और एक नेशनल वर्कशॉप भी मेडिसिनल प्लान्स पे किया यहाँ पे निस्पर में। और हमने जो जितने भी टीके स्टोरीज जो है ट्रेडिशनल नॉलेज स्टोरीज, तो उसकी एक बुक भी पब्लिश जितेंद्र सिंह जी ने जो है उस बुक को हाँ जी, तो मैंने मेरा प्रेजेंटेशन खत्म कर लिया है। अभी कीनोट स्पीकर्स और अदर प्रेजेंटर्स। Yes, you are staying with us. I request all the our experts who are connected with us that मैं थोड़ा आप लोगों का टाइम लूंगा, because you have to listen some PhD scholars also, and they are waiting to give their presentation as the outcome of their very long research before you to give the authentication that what they have actually done. So we have Ghansam Solanki ji, which retired professor and dean. So first of all, I request him for very few words by his side. After that, we have Professor Dr. C.H.A. Ramulu and others. So, Ghanisam sir, please. Unmute yourself firstly. आप अपने को अनम्यूट करिए पहले। Unmute yourself. He is unable to unmute. I request Dr. C.H.A. Ramulu, sir, please, for your kind words for the participants. Good afternoon, sir. First of all, I would like to congratulate Professor Mithilesh Madam, Mithilesh Garguchi, Chairperson and CEO Garguchi, for inviting me to participate in your program, which is International Conference for Women. And I must congratulate you to having collaboration with the North Illinois University at Chicago to inspire the women and participate in this program. So I have been given a small area of topic is historical and traditional Indian research in ethnobotany. Basically, I am a botanist working in the regional institute with the educational component. I am very happy to go to the what is called ethnobotanical aspect of, or it is a multidisciplinary approach which is linked with the NEP-2020. Actually, these ethnobotanical aspects are connected with the especially the cultural food and related to their food, medicine, and religion and other ceremonies which are related to the especially the people of the tribal people are located to the different areas, and their intellectual necessities and cultural ethos can be
studied. Then I just want to connect the work of ethnobotanical with multidisciplinary activity with NEP 2020. In that context, the approach of different anthropology, political science, geography, and environmental studies, psychology, and then linguistics also having a relevance with this multidisciplinary approach of the subject. And in this area, the NGO, international agencies, and other government agencies can also be able to work out in the traditional system of botany. And this subject, ethnobotany, reflects the compatibility with the human efforts to understand the global view of this. I just want to emphasize one important point during this period. These ethnobotanical studies with taxonomy, nutrition, pharmacognosy, and phytochemistry, all other areas of the subjects, because the many people are interested in the latest or the advanced studies of biotechnology, molecular biology, and crop improvement. As earlier speaker is also associated with the crop improvement program. But our after NEP, okay, but then we have developed a Indian botanical, especially a botanical garden in our campus, to study the area of skill enhancement course under the CBCS pattern, which enhance the collection, preservation, and then biodiversity of the various culturally related and then endangered medicinal plants in the Orissa and the northeastern India. Then the subject is the plants with regard to the identification and other things was about the ethnobotany was mentioned in the Rig Veda and Atharvana Veda. And in Indian context, the Roxburgh is first developed the herbarium studies, which were well documented in the plant systems. And then when as a madam told about the traditional knowledge and then NEP 2020, I'm not going to emphasize much on this area because this is actually the NEP emphasizes on the global leadership of the knowledge on the Indian traditional systems, which can have the knowledge based, which gives the high quality of holistic development of a citizen. Then I just want to give it is NEPT traditional knowledge and then multidisciplinary approach is concerned. It is a safeguard against the because the emphasis is being given to safeguard the misappropriation and then miscarriage, or we can say the misuse of the traditional knowledge in other aspects of the things. And other aspect is concerned the preservation of the genetic resources, the wild resources, which is to be conserved in the cultural goods of diversity. Then the protection of unfair means of the competition which is being among the cultivated and then traditional plant system. To learn about the customs and then traditions of the plant species. Then RI Bhubaneswar campus is established a good medicinal garden, and then for pre-service and then in-service programs we are conducted through the outdoor science education since 2016, and an enormous response is being inculcated in this area. So more than 60 plant species were cultivating in the endangered plants of the medicinal garden, which were well preserved. And recently, Honorable Minister of MHRD inaugurated the botanical garden and then planted many medicinal plants. And the idea of this ex situ conservation is being participated, especially with the skill-based students' participation is well documented. And we are also giving the
skill-oriented support or the knowledge for the pre-service B.Ed students, and also teacher training programs, which is having enormous response from the participants. And one of the subject is skill-based medicinal garden is also being emphasized. So anyway, this multidisciplinary approach used for NEP-20 to preservation, collection, and then biodiversity of the medicinal plants is well established in the Regional Institute of Education, Bhubaneswar. And finally, I am thankful to the organizers for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Professor C.H.A. Ramulu, for your very informative talk with the participants, and really this will be a lamp lighting for the young researchers. Now, I request Dr. M. Mamtha, she is from Department of Forest College and Research Institute, Hyderabad, for your kind words. Sir, good evening to all the dignitaries and organizers and my dear research scholars and MSc and BSc students. First of all, I wanted to introduce myself. I'm the professor of botany, Forest College and Research Institute. Here, this main motto of this NEP 2020 is the climate science and studies. This is the major I wanted to emphasize on that. Here, one thing I wanted to tell about the education system, the national education system. The National Education Policy 2020 reveals to the climate change and studies. And here the climate change increases the increasing the pollution and depleting the natural resources, and there will be a feasible shift to how we meet the world's energy, water, food and sanitation needs, and again resulting in the need of the few skilled labor, and particularly biology, chemistry, physics and agricultural climate sciences. And here one thing I wanted to emphasize on especially the education system. Till now we have the 4 national educational policies in India. Out of this, but no policy is mentioned about the studies on climate change and forest except in the NEP 2020. This importance is majority due to the after COVID change. Due to the COVID-19 pandemic on human race majority. Here the national education policy, one thing, yes, just I'm sharing here. Sorry, one thing I wanted to share this thing. For changing the screen, sir, myself I have to change. Screen sharing, sir. You want to share the screen? Yeah, I want to share the screen, sir, based on my talk. You are handling that one. Yeah, that's very simple. Click, open your slide and click on the present. There is a, you see in the bottom there is a term present. Click on that, and then after that, click on the entire screen, and then click on the slide. Yeah, you see, this is visible. Yeah. This is visible. Yeah, just a minute, sir. Sir, okay, sir, that yeah, sir. Here, sir. Okay, sir. Yeah, here, sir, the main motto of this in past 4 national education policies, the only that here the climate change and forest, except in the NEP 2020, only given the importance in that. Here, if you see that 20. Again, sir, here I wanted to tell about the after the pandemic, only we have got the very good exposure on the what is the importance of the climate and forest education. Meanwhile, the
endemic species and health issues and whatever be the thing, then only we have realized what is the importance of the natural resources on the earth. Here I wanted to tell, sir, the main thing is now the educational system is a multidisciplinary and holistic education across all the science, arts, humanities, and sports, and multidisciplinary world in order to ensure the unity and integrity of all the knowledge. Here, sir, another thing that why we need the forest is very, very important. Nowadays, no one is knowing that what is the plant, what is the importance of particular plant, and what are the things we have to use, and what is the importance of the wood, minor products, and medicinal plants, and all the things in the school education they are not knowing. Here, sir, one thing I wanted to tell this: all these products from the forest. For example, wood is there, medicinal plants are there, honey is there, and a lot of microbial organisms. All these are much important in the day-to-day life utilization. But in the school, from the school education, we have to learn the all these things from the school education. But here in our Telangana government is giving the Telangana Ku Haritaharam. This is a massive big program in the Telangana government. Here we have we have to improve the 24% of the forest coverage to 33% of the total geographical area of the state. Interest area of the achieve the above two folds. One, initiatives are noticed in the forest areas. The main in the 2015 and 3rd July, our Honorable CM Chandrasekhar Rao Garu has started the massive program that's Telangana Ku Haritaharam. With this, lot of changes has happened in the all over Telangana. They have developed the lot of plantation programs in all over Telangana, and this initiation with these results we have covered almost Telangana to 20. Here you can see in the slide that is the 19 to 21 lot of increase is there in the forest development. Here in the slide you can see that Telangana, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh all over within 2019 to 2021 lot of increase is there. Meanwhile, we have developed a lot of parks and different steering committees also we have developed. And here this the Harita Raksha committees are developed in the Gram Panchayat level onwards. This has with this lot of development is there in the from village to the city levels. Here we can see the avenue plantations, institutional plantations, barren hill plantations, and tank houses and river banks, farmlands, homesteads, industrial areas, and housing colonies, and memory gardens, and other lot of different types of the plantations we have done. But for example, with this the connection of this with the Haritaharam, the Patashala Harita Patashala program has developed. This in the school programs, from the school programs only, we have inculcated the importance of the plants and what is the environment. With this, what is the avenue plantations have done in the national highways and state high roads and streets and villages like that. And again, the black plantation, wherever the barren lands are there, wetlands are there also we have planted so much of plantation, and institutional plantations, and tank for shores plantations, and all these, the main role is from the school areas only, school studies only. Here we have from especially this plant sciences, which is not in the taught in the not in the labs. It has to be go to we have to take the students to the field. Then only they can learn what is the importance of the plant system and how they are. We have to inculcate the importance, because with this the Green Telangana and Green School programs have initiated in the Harita Patashala. Here
Thus, in the school education, DEOs, DPDDOs, MUOs, and headmasters, and HMs, and teachers, and students' role and responsibilities in the implementation of the Telanganaku Haritaharam program. With this, lot of again the role of students also very important to participate in the plantation drive conducted in the schools and motivate the fellow students to participate in the activity of the plantation drives, and every student shall adopt the one plant and take care of the watering and proper growth. If the students are oriented with the environmental issue at a young age, they can become the responsible and eco-friendly citizens. This is very important. And meanwhile, this is the activities when the school children has to participate in the plantation programs. Then onwards, they learn the important of the development of the plant, what are the care we have to take from the plantation programmers. Again, these are the photos I'm sharing here. The school children, the recreations are very important because Madam Mamta, I request on behalf of the chair of the session that actually we are running some shortage of timing, so please conclude. Okay, sir. Okay, these are the actually the practicals also. For example, for the especially this the botany program like that, we have to take them into the field. Then only they can learn the more. The main conclusion is here the education contributes directly to sustainability, and this is because of sustainable and the people in the sense of the communities to themselves, to other, and the whole planet. The observations and the recommendations of the NEP 2020 are the indeed progressive in nature. It gives the fresh look to the educational system, which is inbuilt with the flexible and mark of the quality, and that is capable of molding the India to vibrant society which matches to our rich cultural heritage. It also makes a great aware of the climate change and environmental and forest and related to the information and their importance from the grassroots level onwards to the students, which in turn helps in the comfort with the pandemic in the future, and also to the achieve the environmental sustainability is the very important. Again here the suggestions to the new courses is especially the forest and people, landscape, architecture, basic science and humanities, environment impact and assessment, forest resource and analysis, and floriculture, forest cycles and ecosystem, and health management of flora and fauna, conservation of education, endangered species management, habitat ecology, and animal behavior and animal ecology conservation are very important in further education of NEP 2020. This is the my side of the inputs to the this conference, sir. And my perspective is, apart from the theoretical view of the ecosystem, and it's the functional practical view in the ecosystem should be followed within the nature tours of the elementary school levels, and celebrating the environmental days, and active learning should be the connected with the local program solving, allowing the more budget, and regular training should be conducted the upgrading the pedagogy of the teachers, and use of technology is very important for the climate change aspects, sir. And again here sir here thank you, madam. Thank you. Very informative and very nice presentation for the new generation, young generation, and the inspiring and aspiring scholars who are planning to work in your field. This is very much intuitive for them. So thank you very much on behalf of the whole panel. And now it is time to request. Yeah, Professor Asuni sir is trying to say who is the chair. 1 minute time. Yes, sir. We had a very nice presentation by Mamta Mamidi, and before that we had a presentation by Charulata. So what I would like to point out that there is a biodiversity register being made for all over country,
And if Sir. you can name the plant in botanical names, as you are a botanist, and Madam Sir. Charulata is also in the field of traditional knowledge, because in Indian traditional knowledge, lot of plants are available and their botanical names are variable. And if you go to traditional medicine fellow, he said this, you take kadi patta or something, then unless this correct identification is there, it is very difficult. And I would add that in USA, haldi is being made in capsule and is being sold at a high rate. So it Yes, is sir. very important for us to make a traditional register of traditional plants of all over India and all the states, and with botanical names. This is my only suggestion. Madam Yes, will sir. Yes, agree, sir. and you will follow me. Yes, sir. These things are very important because for the future generation, we have to be taught from the school education the importance of the native species and the development of the forest as well the climate change, sir. Thank you, sir. With botanical I'm names, madam, only. With botanical names only. okay, Thank sir. you. Okay, sir. Thank you, sir. Very Thank you. nice remarks and very good positive discussion for the scholars for the sake of convenience of the research. And now it is time to request Professor G.S. Solanki. Sir, it is possible for you to say something? Professor G.S. Solanki. Actually, yes, sir, your voice is not coming. New technologies are, very uncomfortable for senior people. We are unable to listen you. Sound is not coming. This is the second time we have given him chance to say something, but we are unable to. So say, Madam Charulata. Madam Charulata. हाँ जी, नमस्कार सर. What we should do? We are unable to listen to Dr. Ghanshyam Solanki. Second time we have given him chance to say something, but voice is not coming. Okay, so we can like move ahead with another speaker and Another. So R.V. Sharma sir, Professor R.V. Sharma. Yeah. Mr. Sharma. Yes, okay. Can you listen to me? Yes, sir. Please. Okay. So, first of all, I would like to thank the organizers for inviting me to this conference, wonderful conference on new education, National Education Policy 2020. I'm audible here. Can you listen? Yes, Can yes, you hear me? yes. Can you Yes, hear me? yes. Okay. Yes, sir. Yes. So this is basically my idea directed towards the students, community, because basically I'm working in the area of nano materials and nanotechnology. So this is a group on biology. So basically biological materials. Hello. Okay. So you can now proceed loud. Hello. Should I continue? Yes, sir. Please continue. So in short, I will try to speak something about materials, the importance of materials to our everyday life. As we know that every civilization is known by the materials used by the people. As the necessity is the invention of mother. Hello. As the necessity is the invention of mother of invention. Yes. So the newer and better materials are being developed constantly. Can you hear me now? I think there is a cross talk. Hello. Yes, we can hear now. So I said there are a lot of echo actually, overlapping sounds are coming. So who should continue? Because I'm seeing. I'm not able to listen properly. As technical team, please see what is the problem we are facing.
We stop. Yes. Yes. Yeah, Rishi Sharma ji, please start. Okay, so I just want to tell the students that whatever subject they are studying in the subjects, so I would like to request them that they should actually learn the subject in a deeper way, in a better, so that they can understand the underlying concepts of physics, chemistry, biology, because the new technologies are coming based on their understanding. They will develop the new materials if they understand the basic concepts of these scientific subjects better. As we know, in modern times, we have witnessed rapid progress in the development of new and advanced materials every day, ranging from semiconductors to superconductors to composite structures, and more recently the nanomaterials, nanocomposites, and things like that, and biomaterials, because with the advent of new technological tools or nanoscale tools, we are able to design the material and bring the desired properties to the new system. And that manipulation of matter is done at very small scale, that is nanoscale. Nanoscale means billionth of a meter. That's very important to understand, that we should be able to handle the material at such a small scale. So as far as the physics is concerned, there's no problem that if you can control the material at atomic level, whether it is a chemical substance or anything useful for our biological systems, if we can handle the material at that scale, nanoscale or atomic scale, we can actually design various systems, various sensors. So in this direction, nature is the very good example that we should be able to devise new sensors. A smart sense, we call that smart sensors, like smart nose, smart smart eyes, or smart sensors like smart tongues, because these are the property we need in this modern day. So in the defense technologies, we are actually working in various because this hazardous gases, how to detect them, because all chemical warfare, biological warfare, we should be able to detect them. We should be able to sense them, and for that you need to develop different materials. So the idea is that these students, they should learn the basics of physics or chemistry or biology in their classes, respective classes, and apply that knowledge to build new systems in their research careers in future. Rishi sir, please complete your remarks. So with this, I just want to say that, okay, please go ahead, learn whatever you are doing, learn the subjects well, and do well. That's all. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Now, Madam Charulata, it is time to invite some scholars for their presentations. Faculty members also, they are interested. So first of all, I invite Dr. Y. Chandrakala. She is the assistant professor here in botany, and she is going to give her presentation. Yes, start. It is visible. Sound is not coming. Unmute yourself. Unmute yourself firstly. Yes. Okay, you need to share your screen. Okay, wait.
Yes. Okay. Namaste to all. I am Dr. Vaichandrakala, Assistant Professor working in Jyoti Vidyapeeth, Women's University. Namaste to all the delegates present in the session. My topic of the session is effect of Gayatri Mantra on the seed germination and seedling growth on the tomato, and I am taking here eggplant and the chili. As we have seen during the session, it is the pilot projects we have started here to find out what are the alternative methods which we can go through while facing the problems which we are coming through germination problem during the as a farmer phase. So mostly we have seen the lack of germination has by the dormancy is the major problem which a farmer face mainly with the vegetable crops here. So based on the principle of the Jagdish Chandra Bose, who is a pioneer scientist on the who is worked on the based on the principles of the how a plant responds to certain stimulus. So taking it as a principle base of the work, I have started this work as which gives has a going through the certain reviews also have find out there is a certain positive impacts on the germination aspects as the metabolic rate of or the growth and development aspects enhance with this. So musical or a sound always has a certain positive aspects on the growth and of a plant. So my objective of the present study is seedling growth in a how a seedling and germination percentage what varies in the particular I have taken the 3 plants with the Solanaceae families. So the present experiment was done in the Jyoti Vidyapeeth Women's University. So first I have taken the in a greenhouse experiment which was under the treatment. So the control was under the normal condition and the treated was given in a under the Gayatri Mantra was given for 3 sessions like 6 a.m., 12 p.m. and evening 6 p.m. And with the variation, the temperature we have ambient temperature was maintained with 28 degrees centigrade. In a closed chamber where a soundproof chamber was maintained and the seeds were kept in a petri plate of 6 centimeter in diameter. So here specifically the treatment which I have taken of the Gayatri Mantra was 400 hertz. The results which I have find out in the tomato, the blue one is the here the blue one is the controlled one in all the 3 plants, and that which was treated was almost it was the percentage difference of 15, 30, and 71% difference was seen. So you can see here the germination on the 7th day of the control versus the treated one, which was higher than the normal one. Same was seen with the chili seeds. With that, this was the C1 is the controlled one, and the D1 is the treated one. Then this is the eggplant seeds which I have taken, and the germination percent again here varies to the 71%. So this was the graphical presentation of the same thing. Here you can see the difference in the plant growth also. This is the first one I have taken the chili plant, chili seedlings. The difference in the percentage was almost 15%. And here this is the here the brinjal one. This is the eggplant, which was around 71%. I have found it was varies. And here in the tomato it was around 30%. So here the percentage varies. Mostly there is a significant change I can find out there in the eggplant germination percentage was 71, and in the chili that is the 30%, and the tomato it was 15%. So I can conclude that this strategy can be very useful, especially in the Solanaceae family, which can be used as an alternative source for germination purpose to our farmers, which is eco-friendly, and where the farmer don't have to again go to different aspects like chemical or chemical based. So it is a trial we have done, and I think this is a running project. So many things I have to do. So I would like to welcome the suggestions from the experts.
Thank you, Dr. Chandrakala, for very nice presentation. And any comment by the panel? What is the explanation for your experiment? Sir, as I have seen during the germination process, the control was under the normal condition, the control which was at a low germination rate as compared to when we are giving the Gayatri Mantra for the 3 times. I have already tried with 1 time and 2 times also, but I have not shown here. But the comparative when I have seen first and second time was lower than the third time. So I have selected the third No, as a. I'm Yes, asking what is the possible reason for this effect of Gayatri Mantra? sir, there is Scientifically. I think there is a sound has certain effects which have been seen, and maybe there is a change in the metabolic activities in the tissue. So maybe the apical meristems have certain changes in the hormonal conditions that may be affecting. What I think so, and it is an ongoing research. So I think we have to go in a certain more aspects of the developmental aspect where we have to see. Epigenetic changes, do you think? Maybe, sir, there is a change, but I have not gone through up to that. Okay, thank you. Yes. Thank you, sir. Nice presentation. I have a query. Yes, sir. Basically, like how you have selected that particular frequency range that you are Actually, going through the review, ma'am, I have I have seen that 400 giving the 400 many reviewers has seen in different plants, like already has done. So I think I have selected on that basis only. Okay, and how many biological replicates have you done? Like, because there is no significance or statistical analysis in your graphs that you have shown. So Yeah, it is just. it was. I have taken 3 replica, ma'am. But you have not shown any error bar or anything on your Yeah, graphs. I have not added, but it was like 3 replica I have taken. But without that, without any statistical analysis, like your data will not be, authenticated. Like nobody will consider your data to be authenticated and true. So you You should are try to telling about error bars. You are saying no? Error bar. statistical analysis I also. have not added here the error bar, but we have taken the 3 replica for that, and it was not one set actually. Before standardizing, also 1 time, 2 time, 3 time, all the 3 sessions we have taken. I have taken, sir, ma'am. These replicas should be actually biological replicates. I mean, like at different Yeah. points of time, you should be doing. Yeah, different. I do understand. And and for future, I would be suggesting an epigenome as well as metabolomics of the plants, the control. Epigenome. Actually, Yeah. can I mention one thing? That most recently, now the science is advancing that the DNA is not involved in the response. It is RNA to RNA regulation, siRNA to mRNA, and this mRNA alteration can also alter and this epigenetic changes can be because of several factors. They may include nutrition, they may include food. So the old Vedantic system कि जो हम अन्न खाते हैं वैसे ही मन हो जाता है is going to be true in some way or the other, and this epigenetic record, what I feel that this is because of epigenetic changes, and this needs more further study and more scientific basis involving the physics people also. Thank you. So, Madam Charulata, thank you very much for your very kind observation. And let us allow this Dr. Ghanshyam Solanki is again try to say something. So, Ghanshyam Solanki. So one query, like how much time you're giving to the presenters? Because maximum 4 to 5 minutes. Maximum 4 to 5 minutes. Okay. Maximum 4 to 5 minutes. We are under the process to finish this session very soon. So, Professor G.S. Solanki sir, is it possible for you to say something? Still, we are unable to listen you. Still, we are unable to. Yeah. Your voice is not coming. So we're not able to listen to you. Yeah. Unable. Not able to listen. Technical team, please. Now Dr. Avinash Parida. Dr. Avinash Parida. Yes. Yes, sir. Namaste, sir. Dr. Avinash Parida, who is the assistant professor in
zoology, and he has done some work on biodiversities, and he has moved, as per the information to us, he has covered long distances between forest to forest to study the biodiversities and different aspect of animals and living bodies. So he's here right now, and he's going to give his presentation. Thank you, sir. Unmute yourself. Start sharing, please. Please unmute yourself. Dr. Avinash, unmute yourself. And you have 4 minutes for your presentation. Dr. Avinash, please unmute yourself. Yes. Yes, sir. Now my PPT is visible, sir? No. No. You need to share present and share your screen. Already shares, ma'am. And now Now it is visible. Now it's visible, sir. Yes. Yes. You make it a slideshow, yeah. Okay, thank you. Namaste to all of you who is present over here and also who is watching this conference in virtual mode. And first, Honorable Chairperson Ma'am, Mrs. Mithras Garg Ma'am, Honorable Chairman and CEO, Mr. Vedant Garg sir, respected Chief Guest Charulata Ma'am, Dr. Rishi Babu Sharma, Ashini sir, my supervisor, my guide, my mentor, Professor Solanki sir, and respected Dean Professor Lal sir, and all higher dignity authorities of this university, my colleagues, my dear students, those who are watching this conference. So first of, I am Dr. Abhinash Parida, working as an assistant professor in zoology at the Department of Science Technology under Faculty of Education and Methodology, Jagati Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So thanks, first of all, thanks to this my working university to give such opportunity to talk about national education policy with biodiversity and climate change context. Now I'm going to present on the primates of Northeast India, conservation challenges and strategy in context to NEP 2020. So first of all, what are the primates? Primates are the mammals, arboreal mammals. They belongs to the tracheus, bush babies, monkeys, gibbons, orangutans, and there also occupies the order in mammals, and the great apes includes the bonobos, chimpanzees, gorillas, orangutans, and humans. And under lesser apes, gibbons, monkeys. Under the monkeys, the langurs and all monkeys skins. Then under the progemians, the all primitive order primate like galagos, bush babies, lemurs, all are coming. So first primate order primates are divided into two groups. One is progemian. Under the progemian, lemurs, lorises, tracheus, and bushwhaich, and under the simians, monkeys, apes, and males are coming. So monkeys are two types, and one is old world monkey, another is new world monkey. Old world monkeys are like bigger size and broader their body, and their so dentination 32. Where the new world monkey is a slender size, and it's distributed in South America and Latin America. Where old world monkeys are distributed in Africa and Asia. So it's primate order divided into three super family: Lemuridia, Trigeria, and Anthropoidea. So these are the difference between world. I'll skip this, and already I've discussed. So why we need to study primates? As we know, primates are facing extinction due to the climate change of global and You need to wind up in 2 minutes. okay. So then primate has great role in the seed dispersal.
and primate distributed in the tropical country, as you can see in the map. And now I'm going to. So in Asia, in Asian continent, it's about 13 genera with 176 species found. You can see here the Southeast Asia, where the primates countries like India, Vietnam, Laos, Cambodia, then China, Myanmar, and this Japan area, and also Indonesia and Sulawesi. So India's total as per like recent study, there are 23. Now it's like I have this old data, 24 species I have told, and there are 3 families belongs to the primates like Laricidae, Cercopithecidae, and Hylobatidae. So in Laricidae, there are 2 genus. One is Laris, which is distributed in Northeast India. Now recently it's range distributed to up to Darjeeling. So you can say up to West Bengal also. And another is NEP-2020 genus, which is distributed in the other parts of the country. Macaca, under the macaca groups, there are only 1 genus, and under langurs there are 2 genus, Semnopithecus, Trachypithecus. Semnopithecus is distributed in the all over the most of the India, like up to Bengal, but Trachypithecus is distributed in northeast. And in given only we have only 1 species. I'll skip these species which are distributed in India, excluding northeast. So why my focus in the northeast India? Because northeast is the biodiverse hotspot. Also, this is the confluence zone between the eastern Himalaya, Indo-Myanmar biodiverse and central Indian China landscapes. Then this is the map where the Brahmaputra dissects the 2 part we call the north bank of Brahmaputra and south. This is north states consist of 7 states, as we call 7 sister state. Recently Sikkim included, but I have excluded for this private study. So there are 12 species from the northeast India. First, you can see the western hooligan, the only lesser apes found in India. Then next is golden langur, is very rare, and globally it's found in Bhutan and Assam, in western Assam in pocket population. And this very slim also, which is also endemic to this Indomere biodiverse spot. Then another langur is Cape langur, and then recently discovered this is Macaca munjala, Arunachal macaque in 2004, and this is newly discovered in 2016 in Anjao district. This is Macaca leucogenes, white cheek macaque, and this is eastern Hulagivan. But there is in a recent study, one professor Anindya Sinha from IIS Bangalore, and another professor Umar Ramakrishnan from CCMB, they found their molecular study. There is no difference between eastern Hulagivan and western Hulagivan. Another, I've already discussed about the slow laris. The only 1 species is found in the northeast and which is distributed up to Darjeeling area. That is Nycticebus bengalensis, and this is your Macaca arcadides, your stump-tail macaque, then a stump-tail macaque, Assamese macaque, then last is rhesus macaque. So I'll skip this all, and I'll main focus what is the conservation challenges. First is hunting. Hunting, why the northeast people, the mostly are different tribes, very so many different varieties of tribes found, and their main culture is to hunt for the like their culture, like their when they're celebrating any festivals before harvesting and after harvesting, and for also bush meat, and the for as like their house decorative materials as their status symbol in their society. Also sometimes they are blindly they're using therapeutic use. Next is human induced fertilizer. Sometimes people also use electrocution and poisoning. Then the next is trading. Primate, you have seen sometimes people keeping as trading for like keeping as primate as pet, and also some like biomedical research. The next problem is habitat loss and fragmentation. Because of septic cultivation, the septic cultivation or Sweden cultivation or slash burst cultivation, which is very popular in northeast called June cultivation. Another is tea garden. When you look rushing through Kaziranga area, very good example, you'll find the opposite of Kaziranga, the Tata Milk Company tea garden, which is the monoculture plantation also, which is the You need to wind up things. next is development induced displacement. So this Dr. is Dr. Avinash, chair is instructing you to wind up your presentation. Please. Okay, okay. Sort of timing. Please. Okay, thank you. So, any query by anyone, by the panel, by the experts? Any query? Only Yes. I have one query. I mean, like, I'm not from the geology background as such, but like you have shown in the conservation issues, the hunting is the major one.
I'm not sure if it's still, because with all these rules and regulations and all the biodiversity acts and everything, is it still prevalent, or in which state is prevalent, which communities are involved in eating primate meat, or I'm not sure if that is the main reason. Yeah. Yes, ma'am. Yeah, though you are not from village background, but most of the time you have seen in Nagaland very frequently in Arunachal, people are every northeast state, excluding those belongs to the like Hindu communities in like Manipur, Meitei tribes, or some Buddhist tribe, Mun tribe in Arunachal and Assam state, Tripura. They don't do the hunting, but practices. Other communities, it's in their culture, in their blood, and they're no mostly non-vegetarians. So no one is following the Wildlife Protection Act 1972 still now, and most of the tribes, they are pride as they are using as therapeutic use also for bushmates, and it's their culture also. So during my field studies, I've seen here also my supervisor Professor J. Solang is here. He is also very famous primatologist. He has also witnessed and how this northeast tribe people are killing. So most of the state they're Dr. not following. Avinash, Dr. Avinash, but your supervisor is unable to, speak anything due to some network issue, or we don't know what is the technical problem. Yes, sir, due But, to but network. we are happy to see him here because you have been his student, and you are working here as our friend. So we are happy. Okay, thank you very much. So, madam, let us allow some UG students are very much curious to give their presentation before a very renowned scientist. So, our UG students, 2 or 3 students, they will be taking 2 and 3 minutes more. Sure. So, start your presentation. Firstly, Namaste. give your introduction and then. Namaste, Honorable Advisor and CEO, Sir, Registrar Ma'am, all higher dignitaries, faculty members, and my dear JVNs. I, JVN Jhilmil Kalwar, pursuing BSc B.Ed ZBC from the Faculty of Education and Methodology, want to represent my view on the topic effect of microplastic pollution on marine life. What is plastic pollution? Plastic pollution is the accumulation of plastic objects and particles in the earth environment that adversely affect humans, wildlife, and their habitat. As you seen in this picture, the plastic affect our oceans. What is microplastic? Microplastic are small particle pieces less than 5 millimeters long, which can be harmful to our ocean and aquatic life. For example, plastic microbeads, clothing fiber, cosmetics, etc. Effect of microplastic on marine animals. Plastic enter into an animal gut, can prevent food digestion, and can lead to a very slow and painful death. They also suffer from lacerations, infections, reduced ability to swim, and internal injuries in marine organisms. As plastic bags can take up 100 years to break down once an animal dies and decay after injection plastics. These are the photos of microplastics. How to overcome effect of plastic. First, boycott microbeads, plastic, use of biodegradable materials, plant-based for packaging for food materials. Plastic bags should be banned. Recycle the existing plastic and development of biodegradable bacteria for degradation. Banning plastic in hotel, food packaging, use alternative banana leaves, bamboo, jute, cottons, etc. There are very alternatives of plastic such as jute, cotton, glasses, etc. Thank you so much. Very nice presentation. Congratulations. Thank you so much, sir. Yes, Madam Charu, please. Yeah. No, the presentation was very nice, and she has quite good understanding on that. Okay. So I do not have any questions to ask. Next one. Okay, ma'am. Thank Next you. one is next student. Good afternoon, all the higher dignitaries. I, JVN Kavita, pursuing Bachelor's of Science integrated with Bachelor's of Education. Today I am here to talk to you about the importance of Tulsi in Ayurveda. As you all know, within Ayurveda, Tulsi is known as Have you any slide? Yes, sir, I am having just sharing, sir, for a few minutes.
Give me for a few minutes. As we all know that within Ayurveda, Tulsi is known as the incomparable one, mother of medicine of nature, and the queen of herbs. And it is the exile of life. It is also important in the medicinal and spiritual properties. As I am a botany student, the scientific name of Tulsi is Osmium tannifilarum. It's come from the family Lamiaceae. The kingdom is Plantae and the order is Lamiella. It is mostly grown in the Indian subcontinent, mostly in the South Asians, and the plant is widely used in Ayurveda and folk medicines. There are four types of Tulsi: Krishna Tulsi, Vana Tulsi, Rama Tulsi, and Amrita Tulsi. Rama Tulsi is a bright green color leaves. Krishna Tulsi have a purplish leaves, and Vana Tulsi is grown commonly in India. Amrita Tulsi is thoughtful and variety of environmental importance. Importance of Tulsi in ancient time. Tulsi is important in sacred plants in the Hindu traditions. Hindu regard it as an earthly manifestation of the goddess Tulsi. She is regarded the avatar of Lakshmi and the consort of god of Vishnu. There are some religious use of Tulsi. We use Tulsi leaves and the holy water in oath taking. Water and soil around the Tulsi become a sacred signful to break branches. Dead Tulsi plants are discarded in the rivers and ponds. Tulsi protect people from bad luck and lead towards the heaven. There are many benefits of Tulsi. As we know that the many diseases are cured from the Tulsi. Tulsi, first of all, the stress, anxiety, blood pressures, diabetes, cold, fever, headache, cancer, and many other diseases are cured from the Tulsi. There are some home remedies we mostly use Tulsi. And first of all, the Tulsi is used to cure the asthma, cough, and cold. We use Tulsi water to overcome the cold and asthma. In case of kidney stone, taking the juice of Tulsi leaves and honey regularly for 6 months, it will expel the stone via urinary tract. It cures the insect sting or a bite. Take a teaspoonful of fresh juice of tulsi leaves or a paste of the fresh root. Apply it and effective on skin. Take 12 leaves of tulsi twice a day to prevent from the stress and all purify the blood. In the case of sore throat, boil the water with the tulsi leaves and take a drink. This water can also used for a gargle. Next. The conclusion is tulsi is very important in our day-to-day life. We should protect the plants as well as, and many other plants are which is very importantly used in a medicinal field. So my conclusion is we should use it in an every regard, and it is also have many ancient values in reducing number of disorders, has been confirmed by the pharmacological screening and high range of plant parts. And the outcome is the tulsi is called the queen of all the herbs. It is used widely in the Ayurveda and naturopathic medicines, which help in the healing of human body in the natural manner. Not only do tulsi leaves benefit people, but their flowers too. Tulsi can help you get rid of many health problems ranging from fever to the kidney stone. Thank you everyone. Any queries, sir? Yes. Any query by any corner? Excellent presentation. Can I give one comment? Sir, with your permission, can I give one comment? Yes, sir. Definitely, sir. Tulsi has glandular hairs on its surface, and it can secrete certain compounds, and they are helpful for the health. You have seen that in the temple, if you put one tulsi leaf in water, the water becomes slightly yellow, and then they get charnamrat, and they are flavonoids, and those flavonoids are very good for health. Maybe Madam will tell more about it from traditional knowledge, but scientifically it has been proved that it is the flavonoids in tulsi are helpful for human health. And now, firstly, we are going to collect the collective remarks by the session chair of the session, Dr. Charulata ji. Then we will be moving to Professor Ashwini Kumar sir, who is the chair professor of Harvind Khurana chair of this faculty, for vote of thanks. And
in this way, the session will be taking its shape, and tomorrow will be entering into the next conference of engineering. So over to Madam Charulata, please. Okay, so thank you very much. So we have in this session we have two keynote speakers, Professor C.H.A. Ramulu ji and Dr. M. Mamta. So while Professor Ramulu talked about rare and endangered plant species and the traditional knowledge research on ethnobotanical uses of plants, so that was very insightful and quite informative. And then the presentation by Dr. Mamta on forest botany, especially on the studies on climate change and forest. So that was also very nice and insightful, and it was. It's important to maintain the biodiversity register and other things to benefit different sections of the society along with the researchers. And the presentation by two of the faculties of Jayati Vidyapeeth, Dr. Chandrakala and Dr. Avinash. So both the presentations were very nice. The suggestions I've already given to Dr. Chandrakala regarding the care she should take while doing the research, the statistical analysis and everything should be in place, because without that it's very difficult to get it through in good journals if you want to publish the data. And in future work, since I think that this sound actually uh, what to say, it's coinciding with the memory also, the transgenerational memory of the plant. So epigenomics you should be doing, and metabolomics also, like what kind of metabolites are changing, so that is important. And Dr. Avinash's presentation, so I've already given my comments on that, and it's very important aspect also, again, conservation of primates and studies on primates of India, especially the Northeast. Madam, it seems there is some network issue. Madam Charulata, just wait for a while. So that is important, and validation aspects of, she has jotted down a list of home remedies, you should be taking this decoctions and other things, and a lot of things will, night blindness and other things are getting cured. But what I would suggest is, this may lead to some kind of pseudoscience or something, so it's better if we propagate this idea through scientific validation. So if you can search literature or the researchers who have done some work on the scientific validation aspect, so that should be incorporated. And most the religious beliefs and other things, I think being a science student, that should be that I consider as a conflict. So basically that can, if it possible, please avoid in your presentations. Yeah. So in this way, it was an overall very nice session, and good presentations were there, and I really enjoyed all the talks. Thank you. Okay, thank you, madam. Thank you. First of all, on behalf of the whole fraternity of this conference organizing team and Jyoti Vidyapeeth Women's University, the management of the university, we are thankful to you for sparing some time and sharing the session. Also, to all the participants who participated in session, all the professors who connected with us and tried to give some insights to the students and the scholars as well as the young researchers. So over to Professor Ashwini Kumar for vote of thanks, and meanwhile I may add something if something is left. Over to Professor Ashwini Kumar. Thank you, Professor Lal, for giving me this opportunity. Respected Chairperson, Mrs. Mithlesh Garg, Advisor, Mr. Vedant Garg, President in charge, Dr. Pramod Raghav, Chief Guest Mamta Raniji Agrawal, Chief Guest Swami Nikhleshwaranand, and North Illinois University, Chicago. We have really enjoyed 2 days of this session, organized by Dr. Lal, Professor Lal,
and the director of this Education and Methodology Society department. I would like to congratulate everybody. And it's not possible to name all people here, but in all the sessions which I have attended, they were very distinguished scientists and people are involved, and they have taken pains to interact with the students. And I fully agree with Dr. Charulata that science validation has to be taken place. The topics covered included very important topic of climate change. And what I'm impressed very much is with the presentation by the students. I had a chance to acting as a chair for a long time, and I've seen their presentation in the physical manner also. And for that, the faculty is to be encouraged. And I agree with Dr. Lal that more time should be given to students. So my only recommendation and suggestion is that we should have at least monthly this such kind of conferences where a student alone will be given a chance, and we will be the listener and the observer, because communication skills are needed. So I propose a vote of thanks to this organizers, the Jyoti Vidyapit Women's University, and the entire faculty, and especially my friend Professor Lal and director. And Madam Charulata ji, we have learned a lot from you recently, and you have conducted session very nicely. Rishi Sharma ji, Avinash ji. So my thanks to everybody, and I hand over my mic to Dean Professor Lal. Yeah, Thank you very much. something, Thank you. Madam Charulata, something I would like to bring in your notice, because you have joined us just the last session. And this is a matter of pleasure for you to know that during 2 days, means we have started our journey on 15th of this month, means yesterday, and today we are going to end the session. In during this 2-day journey, we have scheduled 7 sessions, and under these 7 sessions, 25 experts like you joined this conference, international conference, and 75 technical papers presented. This is one of the record I can understand during my 27 years of teaching experience, and I have attended so many conferences. And globally, sir, globally from USA, from Canada, and from other countries also. Yeah. So, 27 papers, outcomes of the 27 papers, even the technical discussion is one of the history that Jyoti Vidyapit Women's University has written under the dynamic leadership of our Honorable Advisor and Chief Executive Officer of this university, Sir Vedant Garg, who is leading the team, our dynamic registrar of the university, Jyoti Vidyapit Women's University, Madam Dr. Hema Bapila ji, all the team members, and it is very tough to express my heartiest gratitude to the team who was working behind this conference. The lady whose name is Dr. Sapna Gahlaut, she is the professor in political science here. She was working day and night. It is an unbelievable event. She was working day and night to make this event successful, and there was a team of 7 ladies who are working with her. It is why we got this platform, or you can say we got this result. This is really unbelievable, and we are thankful to all the faculty members of Faculty of Education and Methodology, as well as the entire team of the administration, all the technical team members, specifically Shalvi, Dr. Shuman, and others who were coordinating with our guests. It was a regressive and very exhaustive exercise for them, because they are also a female, and they never mind that this is night and they should not talk to anyone, should not call to anyone. They have done a very wonderful job to
make us able to say that we have presented 75 research papers in a 2-day international conference virtually, and it is a matter of pleasure that scientists like Charulata, on a very small call, on a very simple request, she accepted our invitation, and some other legendaries, Swamiji, who is the Swami is the in charge of the Swami Ramakrishna Mission in India. This Swamiji also delivered yesterday 1 hour session, and the AICT advisor, Madam Dr. Antarani Agarwal ji, she also blessed us. So we all are thankful to all those who supported directly or indirectly. And overall, the blessings was by the university management, who make us proud and give us this platform to say something before all of us. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you very much. Yeah, the you, coordination was sir. really very nice. I really got every time, like every 2 hours, I was getting call from your team. So that is really Yes, nice. yes. They have done They've wonderful done job. commendable job. Yeah. Yeah, Yes. please share your email and we would like to correspond further. Mine? Your email. It I'll will be just nice write in if the we chat all box. correspond later on. I'm writing my Thank email you. in the chat box. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. Yeah. So it's charulata@NISPER. So if any one of you wish to connect me on traditional knowledge and communication and dissemination of it, please write to me. Yeah. Thank you. Thank you so very much. And I should Thank you, be Charulata ji. And we would like congratulations to once again to everyone. be connected. Definitely. This is India's largest women's university, India's first state private women's university. So you are iconic for our girls. So would like to invite you time to time to Sure, inspire definitely. our students. Thank you, madam. Thank you very Definitely. much. Thank you very much. Namaskar. Thank you. Namaskar. Thank you, And sir. now, Thank you. by the permission of all, we are switching this program. Thank you very much. Thank you. Thank you. We can. You can see your all the presentation on the YouTube channel and Facebook, LinkedIn, everywhere your presentation is available, because that was on all the virtual platform of the university. Thank you very much. Okay. Okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.